आप तमाम ख़वातीनो हजरात से मेरी गुजारिश है कि जैसे ही मेहमान खुसूसी गवर्नर साहब हॉल में तशरीफ़ लाएंगे तो उनके वेलकम के लिए हम सभी खड़े हो जाएं, और जब वो अपने चेयर पे बैठ जाएं उसके बाद आप ख़वातीनो हजरात भी अपनी सीट पे बैठ जाएं। तो हमने बोल दिया। प्लीज खड़े हो जाइए वेलकम के लिए। नहीं, यही रहने दो, एक दूसरा पेन हम तो लाओ जल्दी तो। नहीं नहीं, ये आपने ये जो क्या बोला है वो भी लिखवा के साइन कर रहे हैं, इसके ऊपर साइन करवाया मुझसे। अगर कोई गड़बड़ करिएगा तो ठीक है ना। मैं ठीक हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मेरा काम ही है बोलना। बस यही है कि मैं जो है वो शॉर्ट में बोलना मुझे नहीं आता है। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं 2 घंटे के बजाय 4 घंटा बोल सकता हूँ। लेकिन थोड़ा वक्त का है लेकिन 1 घंटे के बजाय कोई कहे कि आधे घंटे में बोलूँ तो मेरे लिए मुश्किल होता है।
हाँ, कोई बात नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे और हमने जो लिख के मैं लाया था वो सब आप आप तमाम ख़वातीनो हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर दीजिए। नेशनल एंथम के दौरान किसी के भी मोबाइल से कोई घंटी नहीं बजनी चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने मोबाइल को साइलेंस मोड में रखें। और एक बार फिर आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जैसे ही हॉल में कदम रखेंगे गवर्नर साहब, उनका वेलकम हम सब खड़े होकर करेंगे और जब वो अपनी सीट पे बैठ जाएं तो हम लोग भी बैठ जाएंगे अपनी सीट पे। फिर इसके बाद मैं दोबारा आप लोगों से कहूँगा कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम की ताज़ीम में खड़े हो जाएं, तो हम सबको खड़ा होना है और किसी तरह की कोई आवाज़ बातचीत किसी को नहीं करना है उस दरमियान। हेलो हेलो प्रधान आवाज नहीं आ रही है। जैमर का इशू नहीं आ रहा भाई, जैमर का इशू आ रहा भाई, जैमर का इशू आ रहा भाई।
गवर्नर साहब पहुंच चुके हैं। आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। जैसे ही हॉल में तशरीफ़ लाएंगे आप सब वेलकम के लिए खड़े हो जाएं। इंतहाई खुशी की बात है कि आज के मेहमान खुसूसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब हॉल में तशरीफ़ ला चुके हैं। आप तमाम ख़वातीनो हज़रात से गुजारिश है कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम की ताज़ीम में खड़े हो जाएं।
जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नाम गाये तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल भारत जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बी सीटेड। अब मैं आज के मेहमान खुसूसी ऑनरेबल गवर्नर साहब और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेहमानों से गुजारिश है कि लाइटिंग ऑफ लैंप के लिए आगे तशरीफ़ लाएं। अब मैं श्री गंगा कुमार, डायरेक्टर फेस्टिवल, से गुजारिश है कि मेहमान खुसूसी और डाइस पे बैठे हुए तमाम जी वकार मेहमानों का खैर मकदम बुके और शॉल उड़ाकर करें।
बहुत बहुत शुक्रिया गंगा साहब, ख्वातीनो हजरात, डल झील की लहरों, ज़बरवन की चोटियों और कश्मीर की खूबसूरत वादियों के दरमियान आप सबका श्रीनगर नालंदा डायलॉग 2026 में दिल से इस्तकबाल है। आज हम नालंदा और कश्मीर की दो अजीम इल्मी रवायतों के दरमियान एक नई गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। नालंदा अगर इल्म की पहचान है तो कश्मीर मोहब्बत, तसव्वुफ़, इंसान दोस्ती का घर है। यह तकरीब इस बात का सबूत है कि जहां आपस में बातचीत जिंदा रहती है वहां अमन भी कायम रहता है। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ गेस्ट हैं हमारे मनोज सिन्हा सर, एक मजबूत राजनेता जिन्होंने बहुत बड़े काम किए। इन्होंने संचार में, दूरसंचार में, रेलवे में और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ की हर चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाला है, एक मजबूत राजनेता की तरह। मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगी श्री सुमन बिल्ला जी को। सुमन बिल्ला जी एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं और इन्होंने केरला के टूरिज़्म पे बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने स्पाइस मार्क पे भी बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। मैं वेलकम करना चाहती हूँ दिल से स्वागत पद्मश्री MD शफ़ी शौक़। इससे पता चलता है कि आप लोग शफ़ी शौक़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इन्होंने 100 के आसपास बुक लिखी और इन्हें बहुत सारे सम्मान से नवाजा गया। साहित्य सम्मान, पद्मश्री सम्मान, तो ये बहुत बहुत उम्दा बात है कश्मीर के लिए। मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी हमारे प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी को, जो वाइस चांसलर हैं नव नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी के, और ये एक बहुत ही काबिल इंसान हैं और इन्होंने 70 के आसपास पेपर लिखे हैं, पेपर पब्लिश किया है। और इन्होंने जो जापान में अपने हिंदुस्तान के कल्चर को एक रिलेशन बिल्ड किया है, एक अच्छा कल्चर प्रमोट किया है, वो बहुत सराहनीय है। मैं दिल से स्वागत करना चाहूँगी हमारे श्री चितरंजन त्रिपाठी जी को, जो बहुत ही उम्दा एक्टर, राइटर, बहुत सारा ड्रामा स्कूल के संस्थापक हैं और बहुत ही अच्छे राइटर हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लगातार करते जा रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे इतने सारे डिग्नेटरी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, स्कॉलर, राइटर, प्रोफेसर, हमारी मीडिया, AI मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारी जितनी भी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं सबको तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। और हमारी सबसे अहम जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे यूथ हमारी जान है और हम जिसके लिए बहुत ये लिटरेचर फेस्टिवल करने जा रहे हैं, उनका हमें दिल से सहयोग चाहिए, हमें साथ चाहिए। तो आप लोग रेडी हैं इसे करने के लिए? और मैं आपसे
उम्मीद चाहूँगी कि जो हमारा ये 5 सेशन होगा और इसमें जो हमारे 30 से ज़्यादा स्पीकर हमारे प्रस्तुत करेंगे उसको आप बहुत पेशेंस से और सच्चे मन से सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको दिल से वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डी आलिया साहिबा, आपने बेहद खूबसूरत अंदाज में मेहमानों का वेलकम किया। डी आलिया साहिबा ही इस प्रोग्राम की रूह रवा हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अब इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स को से कि वीडियो प्रेजेंटेशन अबाउट NFL 2025 शुरू करें। Welcome to Nalanda Literature Festival 2025! And they are Kavya Amrit, the classics, the literature, and the second floor is company of the noble master. I'm still searching, I'm still working, I'm still practicing. It never came across our mind of having a festival like this one. The history of Nalanda, it literally was the world's leading university when it existed. राज्य बहुत मस्त है। यहाँ बगल में पहाड़ है, मिस्ट है। जब आप पूरी तरह से कथा को देखते हो तो कथा का अर्थ निकलने लगता है। There's so many other people, particularly youngsters who go through difficult times. I think they can also get inspired, motivated. रोबोट होता क्या है या एआई क्या है? And we would like that machine also to be as intelligent as I am. Traditional literature with modern science. Or about the beautiful city of Shillong where I live. अपन भाषा के दरवाजा खोल के रखा और जो दो शब्द सुने हमने, जॉय एंड हैप्पीनेस। सिनेमा और संवाद। शुक्रिया जी, आपने लिया। क्यों नहीं लूं तारीफ अपनी? तालियां बजाइए। We often confine Nalanda as an institution, but Nalanda was the tradition. The food is absolutely delicious. तो हर साल अगर 10 और किताबें, 6 और किताबें इसमें जुड़ते जाएं, so then at least the readers have an a la carte menu. नालंदा हमें इसी विरासत की याद दिलाता है। Hindi is one of those राष्ट्रभाषा. And it's such a pleasure to see so many young children here in this hall and such a dynamic, vibrant audience. Indigeneity that we had as a Mizo still lingers on. If you want to be a writer, you have to be a reader. It would be meaningful if we are going to reconnect with the traditions that Nalanda actually established. जिद, भूख और पागलपन का जो आकर बोलना कि ऐसा एक्सपीरियंस तो था ही नहीं कभी। तो आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। हुर्रे! नौ नालंदा महाविहारा यूनिवर्सिटी के मुअज़्ज़ज़
नया चिराग जलाएं। सर, द प्लेटफॉर्म इज ऑल फॉर यू। आप सभी को आदाब, नमस्ते। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि जम्मू एंड कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी, श्री सुमन बिल्ला जी, डीजी टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री चित्रंजन त्रिपाठी जी, डायरेक्टर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आज के विशिष्ट विद्वान पद्मश्री श्री शफी शौक साहब, इस आयोजन की फेस्टिवल चेयरपर्सन मिस डी आलिया जी, फेस्टिवल डायरेक्टर नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के श्री गंगा कुमार जी, इस समारोह में उपस्थित तमाम माननीय मानिंद विभूतियां, छात्र छात्राएं, नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में पिछले वर्ष शुरू हुआ नालंदा और राजगीर की धरती पे, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी विश्व में ज्ञान की बात होती है तो एक जो नाम सबसे पहले उभर के आता है वो नालंदा का आता है। समूचे एशिया में किसी देश में आप घूमें तो भारतीय ज्ञान का एक सिंबल है नालंदा। और हालांकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के समय नालंदा एक बहुत बड़ी ज्ञान की धरती थी, लेकिन उसके 1000 वर्ष बाद लगभग नालंदा जब विश्वविद्यालय स्थापित होता है, और आप इमेजिन करें कि जब विश्व के, यूरोप के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों की बात होती है तो वो बड़े गौरव से बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो 1098 में बना था। ये उनका क्लेम है, लेकिन उसके 700 साल पहले भारत की धरती पे लगभग 5 प्रॉपर, जिन्हें आज की डिफिनीशन में यूनिवर्सिटी बोलते हैं, 5 यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश थी, जिनमें नालंदा सबसे बड़ा नाम था। और जब आप 7वीं शताब्दी का जो चाइनीज यात्री आता है वैनसांग, और उसके बाद ईत सिंह, यदि यात्रा विवरण आप पढ़ें या फिर जब वो वापस जाते हैं तो उनके जीवन के बारे में जो लिखा है, तो प्राचीन भारत की ग्लोरी पूरी आभा मंडल की 10,000 छात्र थे, कैसी लाइब्रेरी हुआ करती थी, 90 लाख पांडुलिपियां थी, करीब 2000 आचार्य हुआ करते थे। और उसी भारत की धरती पे नालंदा के बगल में बिहार शरीफ जिसे बोलते हैं, वहां ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था जो आज का भागलपुर है। तो विश्व के किसी भी कोने में जहां विश्वविद्यालय बने थे उसके 500-700 साल पहले, यदि मोरक्को की बात की जाए कि अल करावीन यूनिवर्सिटी, जिसे विश्व की प्राचीन यूनिवर्सिटी अब तक माना जाता रहा था, उसके भी करीब 500 साल पहले नालंदा में ये विश्वविद्यालय एक बड़े ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के तौर पे काम कर रहा था जहां की पूरे विश्व से, यदि आप चीनी विवरण पढ़ें, श्रीलंका के पढ़ें तो पता लगता है, इंडोनेशिया के पढ़ें तो पता लगता है कि पूरे विश्व से छात्र आते थे। कोरिया के पढ़ें, जो कोरिया का फाउंडर था हाइचो, वो आया था। पूरे तमाम देशों के हॉस्टल बने हुए थे जिनमें कि उन देशों के छात्र आकर के भारतीय ज्ञान परंपरा का, ज्ञान संपदा का लाभ उठा सकें, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ सकें। ऐसे में श्री गंगा कुमार जी ने
जिनका ये आइडिया है और डी आलिया जी का, इन लोगों ने एक नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल शुरू करने की गुजारिश की, योजना बनाई, और नव नालंदा महाविहार जो उसी प्राचीन नालंदा में स्थापित भारत का संस्कृति मंत्रालय का एक विश्वविद्यालय है, एक इंस्टीट्यूशनल पार्टनर के तौर पे हम जुड़े उनसे, और एक नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ। उस नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल की कड़ियां जब तय हुई, जब 2025 में दिसंबर में आयोजन हुआ, जिसकी आपने झलकियां देखी, तो उसके बाद एक विजन डॉक्यूमेंट डेवलप हुआ, और ये भी योजना बनी कि आगे भविष्य में कई सारे अलग अलग शहरों में हम ये आयोजन करेंगे। उसमें ये बात हुई कि श्रीनगर या कश्मीर की संस्कृति नालंदा से बहुत मामलों में मेल खाती है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय एक बौद्ध विश्वविद्यालय के तौर पे हम जानते हैं, लेकिन नालंदा की पूरी जो पृष्ठभूमि रही है, पूरा उसका इतिहास रहा है, पूरी संस्कृति जो रही है, वो बहुलतावादी रही है। वहां वैदिक धर्म की परंपरा रही, जैन धर्म की परंपरा रही। महावीर स्वामी ने लगभग 13 वहां रेनी सीजन बिताए अपने, भगवान बुद्ध ने लंबा समय बिताया, सिख धर्म के गुरु नानक देव वहां गए थे, सूफिज्म की परंपरा वहां रही, इस्लाम की परंपरा रही, और सारी संस्कृतियां एक साथ मिल करके काम करती रही और अपने अपने ढंग से अपना योगदान देती रही। कश्मीर की संस्कृति यदि देखें तो कश्मीर की संस्कृति में भी वही प्रवाह रहा है। शिव की परंपरा रही है, शैविज्म की परंपरा बहुत समृद्ध रही है, जो वसुगुप्त, अभिनव गुप्त, ऐसे तमाम विद्वानों से, उत्पल देव जैसे विद्वानों से आती है। जहां पहली बौद्ध संगीत थी, जिससे पहली बार भगवान बुद्ध के सारे उपदेशों का कंपाइलेशन हुआ, जिससे बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला, तो चौथी बौद्ध संगीत ही कश्मीर की धरती पे हुई। जब प्रथम बौद्ध संगीति में जो पाली भाषा में पूरा साहित्य लिखा गया, तो साउथ ईस्ट एशिया के देशों में फैला, तो कश्मीर में जो महाविभाषा शास्त्र तय हुआ, तीसरी बौद्ध संगीति में संस्कृत में लिखा गया, वो उसने ईस्ट एशिया को, चीन, जापान, कोरिया के देशों का जो पूरी बौद्ध संरचना है, पूरी बौद्ध संस्कृति है, उनको प्रभावित किया। आज भी वो उन्हीं पे स्थापित है। तो इस तरीके से जहां नालंदा के तमाम आचार्य पूरी दुनिया में फैले, और जब नालंदा के 17 आचार्यों की एक पूरी लिस्ट तैयार होती है, तो उसमें कश्मीर के असंग और वसुबंधु जैसे आचार्य भी उसमें शामिल होते हैं। अश्वघोष जो कश्मीर, अयोध्या से कश्मीर आए, जिन्होंने पहला भगवान बुद्ध का जीवन बायोग्राफी लिखी, बुद्ध चरित, उनको कनिष्क ने मांग लिया था, जब उन्होंने विजय किया तो मांग लिया था कन्नौज से कि उन्हें हमें दे दीजिए कि ऐसा आचार्य यहां तक आए। और फिर उन्होंने अपनी पूरी संरचना, चाहे अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा हो या सौंदरलैंड जैसे महाकाव्य लिखे हो, सारे यहां की धरती पे लिखे गए। तो यह तय हुआ कि यदि नालंदा के डायलॉग की बात हो, तो ऐसी धरतियों पे हो जहां वैसी ही डायलॉग, वैसे ही संवाद परंपरा रही हो, जहां की कश्मीर शैविज्म भी था, इस्लाम की परंपरा, सूफी परंपरा, ऋषि परंपरा, बौद्ध धर्म की परंपराएं सारी रही। इस तरीके से एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। बहुत सारी स्लाइड्स हैं जिनको इतने संक्षिप्त समय में संभव नहीं होगा प्रस्तुत करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स यदि आप देखें तो ऑब्जेक्टिव्स में हमने रखा है कि नालंदा की संवाद परंपरा सारी की सारी रहे, और उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व हो। कैसे हम नालंदा की पूरी परंपरा या भारतीय ज्ञान परंपरा में जो आज की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी, विज्ञान से संवाद, दर्शन का, साहित्य का, कैसे हो। और कुड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि मुझे स्लाइड यहां दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन आप जैसा देख सकते हैं कि फ्रेमवर्क यहां पे, कि इसमें लिटरेचर की बात है, भाषाओं, भारत का पूरा जो साहित्य है, पूरा दर्शन जो है, वो भाषाओं पे निर्भर है। कश्मीरी भाषा का बहुत समृद्ध साहित्य है, डोगरी भाषा का बहुत समृद्ध साहित्य है, इसी तरीके से बिहार की और अलग अलग लोक भाषाएं हैं। उस पे जो पहला लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, उसमें संथाली की, वजिका की, मागधी की
जैसा कि आप जानते हैं कि पाली भाषा, पाली शब्द बहुत बाद में पड़ा, वास्तव में भगवान बुद्ध ने स्थानीय भाषा को चुना लोगों से संवाद करने के लिए। तो लोक परंपराओं का योगदान हो, और जैसा नालंदा की मुख्य फेस्टिवल में दक्षता की बात, कि कैसे हम युवाओं को दक्ष करें, दक्षता पे मुझे ये बात आपसे जरूर करनी है कि भारत सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की है, ज्ञान भारतम मिशन, जिसमें कि भारत की भूमि पे जितनी भी पांडुलिपियां हैं अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में, उनको न सिर्फ उनका सर्वे करके कलेक्शन करना, उनको डिजिटाइज करना, और डिजिटाइज करके उनका ट्रांसलेशन करना, और फिर रिसर्च पैदा करना। सौभाग्य से आपके कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो हमारी पार्टनर है इस आयोजन में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में पर्शियन डिपार्टमेंट को एक इंडिपेंडेंट सेंटर का दर्जा मिला है ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत, और वो बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर जहांगीर इकबाल साहब भी बैठे हुए हैं, वो उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये बहुत चुनिंदा भारत के जो विश्वविद्यालय हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है। हमारे विश्वविद्यालय नव नालंदा महाविहार, उसका क्लस्टर सेंटर, उसमें 2 किस्म के कॉन्सेप्ट हैं, क्लस्टर सेंटर और इंडिपेंडेंट सेंटर। तो क्लस्टर सेंटर के तौर पे हम भी हैं, हमें चुना गया है, और आपके विश्वविद्यालय को, कश्मीर यूनिवर्सिटी को इंडिपेंडेंट सेंटर के तौर पे चुना गया है। तो आज के युग में भी ऐसे तमाम विश्वविद्यालय जिनके कॉमन सरोकार हैं, उनमें संवाद की आवश्यकता है, उन्हें बात करने की आवश्यकता है। और इस तरह से, चूंकि स्लाइड्स कई सारी हैं, मैं आप लोगों के साथ आप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे आप देख सकेंगे कि दुनिया के जाने माने विश्वविद्यालय, विद्वान इससे जुड़ रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम आपके बीच में आए और इस बात को, इस विजन डॉक्यूमेंट को रखा। इस विजन डॉक्यूमेंट को पूरे विश्व से हम जोड़ रहे हैं, जिससे कि नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल अलग अलग धरती पे भारत के जुड़े और एक विराट रूप ले, जिसमें आप सभी की भागीदारी बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। ख़वातीनो हजरात, थिएटर वो ज़बान है जो लफ्ज़ों से पहले दिलों तक पहुंचती है। हमारे अगले मुकर्रिर हिंदुस्तान के मुमताज़ थिएटर आर्टिस्ट और सकाफती रहनुमा हैं, जिन्होंने अपनी दूर अंदेश क़यादत से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को एक नई पहचान दी। मैं निहायत एहतराम के साथ डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जनाब चितरंजन त्रिपाठी साहब को दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि वो एक लफ्ज़ के जिसका कोई वजूद न था, हमें मिला तो इबादत का रूप धार गया। सर, महामहिम मनोज सिन्हा जी, सिद्धार्थ सिंह जी, पद्मश्री शफी शौक जी, सुमन बिल्ला जी, गंगा कुमार जी, आलिया जी, सभागृह में उपस्थित सारे गुणीजन, सबको नमस्कार। ये जो नालंदा लिट फेस्टिवल का ये जो विस्तार है, इसको जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। जहाँ जहाँ ज्ञान का भंडार रहा, जहाँ जहाँ ज्ञान पीठ रहा, वहाँ ये लिट फेस्ट को लेके गंगा कुमार जी और आलिया जी लेके जा रहे हैं बातचीत के लिए, एक्सचेंज के लिए। जहाँ तक नाटक का सवाल है, हमारा एक बहुत गहरा रिश्ता है कश्मीर से, सबको पता है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नाट्यशास्त्र, फिर अभिनव गुप्त, फिर कालिदास, फिर पाणिनि, न जाने और कितने सारे गुणी जन यहाँ पर आए और काम करके चले गए। और महामहिम की कृपा से यहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक सेंटर भी कुछ साल पहले ओपन हुआ था। और आज यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक शाखा का शुरुआत जिन्होंने किया, वो भी आज मंच पर हैं। उनके आशीर्वाद से और आप सबके
आशीर्वाद से, सहयोग से हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को धीरे धीरे और प्रसारित करेंगे। और अभी बहुत सारे वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा है कि नाटक जो है, नाट्य विद्या जो है, जिसको पंचम वेद कहा जाता था, उसमें ऐसा कोई विद्या, ऐसा कोई कला कौशल, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होगा जो नाटक में नहीं हो। तो नाटक के माध्यम से हम लोग फिर कश्मीर में ज्ञान का प्रसारण करेंगे, कला का प्रसारण करेंगे, और जो एक शेयरिंग है, कल्चरल शेयरिंग, उसको और बढ़ावा देंगे। अभी आपको जान के खुशी होगी कि अब समय समय पर हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप्स की है। कल ही प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जो बच्चों को यहाँ पर फिर से बसाया गया है, जिन परिवारों को, उनके बच्चों के साथ कल ही हमने एक वर्कशॉप ख़त्म की है। नाटक भी हुआ था कल, और अभी समर वेकेशन में बहुत सारे वर्कशॉप्स होने वाले हैं। सो नाटक के माध्यम से स्वस्थ मस्तिष्क हो और मस्तिष्क का विकास हो, और फिर विकसित भारत की ओर हम सब मिलकर बढ़ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीनो हजरात, कश्मीर की मिट्टी का खमीर ही इल्म और तहकीक से उठा है, जहाँ लफ्ज़ों में वादी की खुशबू और दरियाओं की रवानी है। हमारे अगले मुकर्रिर मिट्टी के एक ऐसे ही दरख्शा सितारे हैं जिन्होंने अदब में उनकी बेमिसाल खिदमात पर पद्मश्री के आला एजाज़ से नवाजा गया है। मैं इंतहाई एहतराम और पूरे वक़ार के साथ प्रोफेसर शफी शौक साहब को माइक पर दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती ख्यालात से नवाजें। सर, स्टेज योर। ऑनरेबल गवर्नर साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर्स और बहुत सारे डिग्निटरीज मेरे सामने बैठे हैं। मैं उन सबको गुड मॉर्निंग के साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए खुश नसीबी है, खुशकिस्मती है कि अकील साहब की नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका मिला। ये दूसरा ओकेजन है कि इस मंच पर मैं गवर्नर साहब को तकलीफ दे रहा हूँ और एक अवार्ड मुझे देने के लिए, तो इस सिलसिले में यहाँ हूँ। बहरहाल दो एक लफ्ज़, क्योंकि वक्त बहुत कम है आप सबके पास और मेरे पास भी, मैं इतना ही कहूँगा कि नालंदा से, यानी फ्रॉम नालंदा टू माय बर्थ प्लेस अहरबल, द प्लेस ऑफ ईयर्स, अहरबल से यहाँ गोपादरी, जिसको हम शंकराचार्य अब कहते हैं, कभी हम को ही सुलेमान भी कहते हैं, इधर परी महल तक, जिसको हम कोंतलुन कहा करते थे, कोंतलुन, द प्लेजेंट स्पॉट, जहाँ गवर्नर साहब बैठते हैं वहीं पर, और वहाँ से हारवन, जहाँ ह्यून सांग जी आए थे और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके गए थे। ये पूरा बेल्ट यहाँ से, यानी टक्सिला तक, बाकी ये जो गंधारा कल्चर तक, वहाँ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक एक पूरा बेल्ट था, ह्यूज वाटरशेड ऑफ आइडियाज़। तो इतना एसिमुलेट करके नए आइडियाज़ पैदा किए कि पूरी दुनिया नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ तवज्जो कर गई। मैं जहाँ भी गया मैंने इनके नालंदा यूनिवर्सिटी के आसार देखे, चाहे ब्रिटिश म्यूज़ियम में मेरे हारमन की टक्सिला टाइल्स हों, या हुनान प्रोविंस में चाइना में मैंने देखा कि यहाँ कुमारा जीवा के बस्ट मौजूद हैं और बहुत ही ग्लोरियस ट्रिब्यूट के साथ उनको याद किया जाता है। ये पूरा बेल्ट एक बड़ा वाटरशेड था, आइडियाज़ एसिमुलेट होते थे, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन चलता रहा, और यही डायनामिक्स ऑफ नॉलेज है। और मैं चाहूँगा एक अदना आदमी की हैसियत से कि ये डायलॉग जो पूरे इस बेल्ट में सबसे नुमाया रहा, नॉर्थ ईस्ट से गंधारा तक, यानी गंधारा कल्चर जिसके हम खुद आज भी अपने आप को गंधर्व कहते हैं, और कल ने हमको गंधर्वा ही कहा है, गंधर्वाज,
हम गंदर कहते हैं, गंदर समसर कम कम गंदर कहते हैं, हम गंदर हैं। तो खानदर वगैरह वो भी गंदर है, वाजवान भी वहीं से आया। ये पूरा ये जो हमारे कल्चर की बुनियाद है। तो कश्मीर को चुना गया नालंदा फेस्टिवल के लिए हमारे लिए बहुत ऑनर की, बहुत इज्जत की बात है। हम चाहेंगे कि हमारे ज़माने में भी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कुन फाया कुन का अमल जारी रहे, बनते रहें आइडियाज़, ताकि इंसानियत आगे बढ़े। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़ी साहब। ख़वातीनो हजरात, सियाहत सिर्फ एक मुआशी सरगर्मी नहीं बल्कि दिलों, तहजीबों और सकाफती हम आहंग को जोड़ने वाला एक खूबसूरत पुल है। मैं नहायत एहतराम के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ टूरिज़्म हुकूमत हिंद जनाब सुमन बिल्ला साहब को स्टेज पर दावत कलाम देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात पेश करें। Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, respected Sri Manoj Sinha, Padma Shri Sri Shafi Shauk, Mr. Professor Siddharth Singh, Vice Chancellor of Nalanda University, Sri Chittaranjan Tripathi, our hosts and the organizers today, Madam Alia and Mr. Ganga Kumar, ladies and gentlemen. We all know of Nalanda as an iconic center for learning the world over. And as Professor Siddharth Singh has told us, Nalanda precedes the formal world of learning elsewhere in the world by centuries, if not millennia. And I think what Nalanda stands for is a confluence of ideas, where scholars have traveled from all across the world to bring their learning, their understanding, challenge them. And what Padma Shri Shafi Sahab has just said is about challenging ideas, is about plurality of thought, is about testing ideas. And Nalanda is one such center which is renowned the world over, and it is a matter of pride for all of us in India. And this land where we are today, Kashmir has also been, as also eloquently stated by Shafi Sahab, stands for a land that was again a confluence of ideas, that was a fertile bed for discussion of thought, that was something where free flow of ideas happened, and it forwarded, advanced the ideas of the intellect. And I think what both of these learning systems tell us is that plurality of thought is essential for advancing the human intellect and human understanding. And I think which is where this great connection between Nalanda and where we are today in Kashmir, in Srinagar, I think it makes eminent sense for all of us to be here to think about our heritage, our intellectual heritage, and see as to where we want to go. All of us know that literature endures. Political systems change, economies evolve, technologies advance, but the human stories remain because human emotions are the same. And even today, we hark back to our literature, which is millennia old. We still talk about Ramayana, we still talk about Mahabharata. And in this land of Kashmir, Raj Tarangini, which is considered to be the oldest historical record, was born here. And even today, if you look at Raj Tarangini, it gives you the context and it gives you the perspective on how to understand this land where we are in today. And I think that is very vital for us to contextualize. Literature, in many ways, enables us to experience places that we have not visited, to be in situations where we were not present,
But what it does is that it enables us to emotionally experience what it conveys, even in places which we have not personally seen and first-hand experienced. And travel and tourism, in a way, is also something similar. But with a book, you sit in the same place and then you're transported to places which are far away. But when you travel, you go to a different place and then you experience, you understand what that society is all about, what that culture is all about. And which is why our father of the nation, Mahatma Gandhi, has said that travel is the language of peace. Because inherent in that statement is the understanding that when we travel from one place to the other and we interact with the people there and we experience their culture, our horizons broaden and we are able to understand which context they are in, and it enables us as human beings to grow, to evolve, to understand the human condition, and it enhances our understanding of humanity. And which is why I think both literature and travel are very essential for mankind to progress and to build those bridges of understanding between people around the world. All of us know that the past century has been built on the back of industrial prowess. It was the Industrial Revolution which pushed the colonial powers forward, and it is that advancement which has held them to go forward. But today we stand at an inflection point. I think the next century will no longer be about industrial prowess, but it is going to be about creativity. It's going to be about culture. It is going to be about ideas. It's going to be about knowledge. And I think it is very essential for us to understand that context. Today we live in a world of artificial intelligence. We live where knowledge is getting democratized rapidly. And I think the importance for us is that how does India position itself in this global, place, as it were. And I think the key to that is for us to understand that India can stand tall on the shoulders of the intellectual heritage that it has, and on the shoulders of great iconic institutions like the Nalanda University, like the place we are in, like the Kashmir schools of thought, and all across the country we have rich civilizational heritage. And I think we need to stand upon that, and we need to build upon that cultural and intellectual heritage that India is rightfully home to. And I think if we are able to do that, India will rightfully lead the world, and the next century would belong to India. And the reason why this dialogue is very important is that it tries to bring together the connections between different streams of thought, between different schools and different ideas and different things which make India into a great intellectual power. And as our colleague Professor Siddharth Singh has shown us as to how well they have comprehensively put all of these elements together to bring some cogency. It is not that India lacks several things. India has everything. I think what we need to have is a cogent and a lucid way where we are able to connect all the dots and be able to build those intellectual and knowledge systems into things that matter in this world. And I have no doubt that the coming years will belong to India, and under the leadership of our tall leaders like our Lieutenant Governor, Mr. Sri Manoj Sinha ji, I am sure that India will claim its rightful place in the world. I thank you all. Jai Hind. बहुत बहुत शुक्रिया सर। तकारीर के इस खूबसूरत सिलसिले के बाद अब हम इस इजलास के एक नहायत अहम और यादगार मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली नालंदा डायलॉग रिपोर्ट 2026 की रूनुमाई। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि उन ख्यालात, मुबाहिस और ख्वाबों की दास्तावेज़ है जो मुस्तकबिल के हिंदुस्तान और एक बेहतरीन दुनिया की तश्कील में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने स्टेज से गुजारिश करता हूं कि वह इस तारीख़ी लम्हे का हिस्सा बने।
बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, हर मुआशरा अपनी क़यादत से पहचाना जाता है, हर दौर अपनी बसीरत से और हर मुस्तकबिल अपने फ़ैसलों से। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में तरक्की, अमन, शफाफ हुक्मरानी, अवामी शमूलियत को एक नई समत अता की है। आपकी क़यादत में जम्मू और कश्मीर न सिर्फ तरक्की के नए मरहले तय कर रहा है, बल्कि इल्म, सकाफत, सियाहत और नौजवानों के लिए भी नए दरवाजे खुल रहे हैं। वह हाथ जो चिरागे उम्मीद जलाते हैं, वही ज़माने में रोशनी बांटते हैं। क़यादत वही मोतबर होती है जो कौम के ख्वाबों को हकीकत बना दे। मुझे निहायत अदब और एहतराम के साथ दावत देने की सआदत हासिल हो रही है जनाब मनोज सिन्हा जी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर।
Thank you very much, sir, for your inspiring and visionary address. ख़वातीनो हजरात, हर कामयाब तकरीब के अख्ताम पर चंद अल्फाज तशक्कुर दरअसल दिलों का शुक्रिया होते हैं। यह शानदार प्रोग्राम जिनकी अनथक मेहनत, बेहतरीन क़यादत और विज़न की वजह से मुमकिन हो सका है, वह फेस्टिवल डायरेक्टर जनाब गंगा कुमार जी हैं। मैं नहायत ही एहतराम के साथ श्री गंगा कुमार जी को दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और रस्म शुक्रिया अदा करें। उनकी अनथक मेहनत और तशरीफ़ आवरी के लिए यह खूबसूरत शेर पेश करता हूं। हमने तो सिर्फ शमा जलाई थी राह में, कारवां आपकी बदौलत यह मुमकिन हो सका। महोदय प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने विश्वविद्यालय, सर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ सर, तो मैं आपका अनुज हूँ, तो इस वजह से कुछ अगर सर कार्यक्रम के आयोजन में कुछ अगर कमी रह गई होगा तो माफ़ी चाहूँगा सर। मैं विश्वविद्यालय में जब आप थे सर, मुझे पता है जब मैं ज्वाइन किया था तो छात्र संघ के अध्यक्ष थे और IIT से पढ़े हुए, तो मतलब सर हम लोग का वो एक ड्रीम था कि इस तरह के इंस्टीट्यूट से पढ़ें और इस तरह के लेवल पे जाएं। कुछ भी हो सर, मतलब आप हमारे अग्रज एवं गुरु रहे हैं सर। मैं आपका मतलब नालंदा विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और नालंदा टोटल जितने ऑर्गेनाइजिंग टीम है हमारी सर, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है हमारी सर, उसके अलावा मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IGNCA, कश्मीर यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, नव नालंदा यूनिवर्सिटी, नव नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग सर ये नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसकी एक कड़ी है सर। मैं आपका हमेशा आभार चाहूँगा और हमेशा चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे सर। मैं 2-3 शब्दों में केवल बताना चाहता हूँ कि सर इस इंडिया में बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल होता है। 3 चीज़ों के लिए हम लोगों ने लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया था। एक कि रीजनल कल्चर और लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए। आज जितने 5 सत्र है, 70% से ज़्यादा स्पीकर जम्मू कश्मीर के हैं सर इसमें, पहली चीज़ सर। दूसरा चीज़ सर, हम लोकल आर्टिशंस, राइटर्स, बिलो 50 ईयर्स वाले को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसको कि सर फाइनेंशियल सपोर्ट, एडिटिंग, ट्रांसलेशंस, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस में हम ग्लोबल लेवल पे हम इनको सर सपोर्ट सिस्टम में क्रिएट कर रहे हैं सर, ताकि हम सर साहित्य को केवल हम इतिहास की तरह नहीं प्रस्तुत करना चाहते, हम चाहते हैं साहित्य को साइंस की तरह प्रस्तुत करें, ताकि हम इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस करें सर। इसमें दुनिया के अलग अलग तरह के स्पीकर्स, AI, रोबोट और इस तरह के तमाम सर लोग आते हैं सर। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं खासतौर पर सुमन बिल्ला सर, दिल्ली से आए हैं सर बहुत समय लेकर। सिद्धार्थ जी हैं, चितरंजन जी हैं, हमारे प्रोफेसर सफ़ी शौक साहब हैं, यहाँ नीलोफर जी हैं, हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महेश जी हैं सर, आपके गृह क्षेत्र के अनुराग भदौरिया जी आज यहाँ हैं, आए हैं सर। और उसके अलावा मेरे रजिस्ट्रार साहब हैं, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, और इस तरह के तमाम जितने लोग हैं, रियाज जी हैं, शहबाज जी हैं, मतलब मैं सभी का बहुत बहुत आभार
प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप एक कनेक्ट हो हमारे एक जनरेशन जो हमें क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि हम आपके साहित्य को आपके एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट कर पाए। यही हमारा उद्देश्य है। और एक कड़ी है सर, अभी दिल्ली में हुआ है, दिल्ली नालंदा डायलॉग के श्रीनगर में है, इसके बाद में कैलीकट में है सर, मुंबई में है, कलकत्ता में है, गुवाहाटी में है, और फिर नागालैंड में है, और फिर नेक्स्ट ईयर सर पूरी दुनिया के 100 स्पीकर्स 17 से 20 अक्टूबर 2027 में सब राजगीर में आएंगे। अगला साल, अगले 1600 साल हमारा पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा हो रहा है। सर जय हिंद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। ख्वातीनो हजरात, आज का ये इजलास इस हकीकत का मजहर है कि जब इल्म, तहजीब और मकालमा एक साथ जमा होते हैं तो नई राहें जन्म लेती हैं। नालंदा की इल्मी रिवायत और कश्मीर की तहजीबी रूह का ये इम्तिजाज आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद, अमन और फिक्री रोशनी का पैगाम है। चिराग बुझते नहीं, सफ़र जारी रहते हैं। जहाँ इल्म हो वहाँ नए शहर आबाद होते हैं। अब मैं एक बार फिर आप सब से गुजारिश करता हूँ कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम की ताज़ीम में खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु
गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधुतरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद, जय जम्मू, जय जम्मू एंड कश्मीर. Long live the spirit of dialogue, knowledge and peace. Thank you very much. सबसे बड़ी बात है आपका जोशीला जो क्या है नहीं अभी नहीं, ये सुबह से शाम तक रहेगा ये. हाँ. ख़वातीनो हजरात, आप कहीं नहीं जाएं, बराए करम हॉल में मौजूद रहें. अब इसके बाद इनॉग्रल डायलॉग शुरू होने वाला है. सेशन 1 जिसका उन्वान है AI नॉलेज सिस्टम एंड फ्यूचर लर्निंग इन प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म. इस सेशन के जो मेहमान हैं वो हैं श्री सुमन बिल्ला जी, डीजी टूरिज्म. मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं. हाँ. Check. Calma-se. Check. Mic check. बढ़ाओ. बढ़ाओ. Check. सोचना पानी. नहीं क्या इशना वो करा. हेलो. Check. Check. वो जाए. ये कोई मैम इनॉग्रल डायलॉग के जो स्पीकर्स हैं उनमें श्री सुमन बिल्ला जी, डीजी टूरिज्म, प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ जी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, मिसेज मेरू गोखले जी,
प्रोफेसर आसिफ अली बंका जी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, और मिस्टर महेश जी, राइटर एंड सिविल सर्वेंट, वो आज के मॉडरेटर हैं। मैं तमाम स्पीकर से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज के मॉडरेटर डॉक्टर महेश जी, राइटर एंड सिविल सर्वेंट, महेश जी, अब आप इस प्रोग्राम को संभालेंगे, आप ही इस प्रोग्राम के मॉडरेटर हैं। माइक महेश जी को दिया जाए। इधर आ जाइए, वो लोग, उन लोगों को माइक दिया जाएगा अभी। हाँ, आप इन लोगों का इंट्रोडक्शन कराइए और इनके बारे में जो भी हाँ हाँ volunteers. Good morning, ladies and gentlemen. It gives me a great pleasure, and it's also my privilege to moderate this discussion. Friends, as you know, there are two ways of being great. One is being great yourself, and the other way of being great is to stand and sit by the side of great men. So I have my Honorable Director General of Tourism, then we have a couple of scholars. But before we begin, I would like to say that Nalanda and Srinagar, they represent civilization and culture. And it is this convergence of Srinagar and Nalanda as centers of civilization and culture makes it very unique, very different. And we had our one scholar talking about plurality of ideas. Gangaji said it's literature and science, it's dialogue, debates, discussion, trying to discover the truth. Ladies and gentlemen, you know, there's something unique about Nalanda. It is the resilience. And you know, few days ago, do you know there is one sari called the 52 Byavan Buti Sari of Nalanda, which has got the GI tag. It has got the GI tag. So we salute the weavers for thousands of years who kept this tradition alive. And this is the right time that we are having this dialogue, this discussion, when we have got this GI tag in Nalanda, ladies and gentlemen. And cheers to Gangaji for this great initiative. But before I begin, you know the topic is artificial intelligence, knowledge system, and future learning in promotion of culture and tourism. Friends, it is said that civil servants are good in action and the academic world is good in reflection. But we have Sri Suman Billa, IS 1996 Kerala Khada,
who combines both action and reflection. He is just not an Indian civil servant, but is an internationally acclaimed civil servant in the field of tourism. He has held all assignments with aplomb and distinction. I don't want to take much time because we have other speakers. Professor A. Ravindranath, Vice Chancellor, Central University of Kashmir, great scholar, distinguished scholar in chemistry, pharmacy and biotechnology and environment sciences, published more than 100 research papers. He's a great educational administrator, teacher, and a researcher as Vice Chancellor of this university. Professor Asif Ali Banka, I had a long conversation with him. He is from the Department of Computer Science and Engineering, a professor with a lot of out-of-box thinking and with his original ideas. He is from Islamic University of Science and Technology. And we have Meeru Gokhale. I must congratulate her for making all the efforts to reach here, as she had to take her flight in the morning. And she's a distinguished book editor, founder editor of Artificial Intelligence Delhi. And Madam Meeru has worked with writers such as Salman Rushdie, Amitabh Ghosh, Ramachandra Guha, Dr. Siddharth Mukherjee, among others. So please give them a very big hand. Friends, the word is, in this particular discussion, the topic is knowledge systems. It is not knowledge. It's not approaches to knowledge, as you all know. We know about positivism, interpretationism, then we have our social theory, critical social theory, postmodernism. What we are talking is knowledge system. Knowledge system has its holistic architecture. That's very important. Justification, right? It not only produces knowledge, but also institutionalizes the norms to evaluate knowledge. So we talk about the knowledge system. So my first question is, what is the role of knowledge system to understand Indian culture? So may I request Mr. Suman Miller to set the ball rolling. I think you take it, sir. No, one for the speaker and one for the moderator. Oh, thank you. Thank you, Mahesh. I think you've raised a very, very important, and in a sense, it's a very it's a root question kind of a thing. What is the importance of a knowledge system in understanding Indian culture? And I think to understand any civilization, to understand any culture, there is a body of knowledge that it has built and that it has grown upon. And I think for us to able to contextualize where we are today, one needs to look at how it has evolved. And I think the body of knowledge that has been developed through various strands that are there will be very vital. And it is not just that it is the philosophy, it is the literature, it is everything. It is science, it is technology, it is engineering, everything that goes on to represent what that society, what that civilization stands for, what it achieves, what are the highest values that it cherishes, and what are the values by which it lives and breathes. And I think in a country like India, that becomes magnified so much more, because we are really a tapestry of many, many cultures, many, many civilizational influences, and which is why I think it is important for us to understand. And as I said in my opening remarks in the earlier session, the key really to looking at the future is to look back, is how do you build constructively upon what already exists, and how do you project yourself for the future. And therefore I think the bridge is important, and that bridge can only happen when that bridge is essentially the knowledge system that we have today. Thank you. Let me take this forward. May I request Professor Ravindra Kumar, sir? So no problem. He's also our Vice Chancellor of the Central University. Sir, do you think we really have an Indian knowledge system?
Yeah, actually, when we speak about the knowledge, knowing of the facts, normally we say, but in the morning address, even Honorable LG also mentioned. So how the Raj Taranini written by Kalhana, okay, that there are many kavis and poets who has made much to disseminate to the people. Because earlier we know the communication system is only in the oral form. Slowly it has started in the script form, when first writing on the stones, then and the manuscripts of leaves, and subsequently the paper. And this transformation is today in the form of digital system we have come up. So this knowledge which is going into the people, they are enabled to think, analyze. Now the artificial intelligence is helping in the digital form of knowledge, what is there, how to analyze whatever the repository or we provide resources is providing to the system, any electronic system, and people are able to take it effectively, and they are able to, it is supplementing in other way. And when this particular, without a knowledge system, we are not able to advance ourselves in the terms of civilization, culture, whatever the things. It is people are able to understand in a different way, and thereby the things, whatever the advancement is happening, it's only. But first and foremost, whenever the knowledge is there, we always think about a teacher. So in the teacher, we look into the three forms normally in the physical. One is mother, and other father, then guru. But there is a nature also given a lot of things by observation. And similarly, society also by exposure and experience. Well, I can understand. You flag the issue. I want Miru and Professor Asif to take this question. Can we, now this is an important issue, can we develop our Indian knowledge system? I don't know how far we have decolonized our Indian knowledge system, but there's another issue. Can we develop Indian knowledge system excluding the others? What do you mean by excluding the others? Excluding the other communities in the country, not the dominant, but our Indian knowledge system the way it is. You see, we have a marginalized sections of the society, right? And we have people from the socially and economically marginalized, and their voices are not incorporated. Let's be very honest. It's very status quo. Power. It represents the power, the status of the power. So in that context, I'm asking. Would you like religion. to take that first, or shall I? Please. Okay, that's a really important question, and thank you for asking it. I think in the context of artificial intelligence and culture, which is the sort of the context in which you're, I presume, asking this question, I think in history, it has been the dominant pattern for marginalized communities and cultures to not be able to tell their stories. One big thing which I see with artificial intelligence is by bringing the power of narrative storytelling to more and more people, it allows people who otherwise might not have had the means to express themselves or even the confidence or the platforms to express themselves, to do it without intermediators. And I think that is an extremely powerful thing. So rather than thinking only about artificial intelligence, which a lot of people do, as something which is going to deny creativity, I think of it as something which will allow marginalized people who might not have had access to be able to express their creativity, to do it more freely. Miru, that's fine. You see, when we talk about artificial intelligence, that is dependent on the data. Okay? And the credibility of data is very important. That question we will take up later. I'm saying the Indian knowledge system, can you develop? Have we decolonized it? Number two, exclusion.
That's these are issues. Professor Pankaj, do you like to take this topic, this issue, by the way? Yeah, see, when we talk of addressing the marginalized people, when I look at it from, say, for example, as an AI person, the basic thing is we need the data. So the collection of data from the marginalized people, that is the basic problem we are facing. I can convert any system into an AI-based system, and like my Miru was saying, then we can bring the stories or the folk tales from the marginalized people to the mainstream. But the thing is, first we need to connect them. We need to develop the corpus. We need to, different places have different dialects. We have to take care of those things before we can think of building a system. We have to remove that bias and inconsistency. We are talking about culture, we are talking about heritage. These are intangible things. No, that's true, Professor Banka. You see, the issues that let's accept the fact that this cultural recognition is dependent on cultural capital, social capital, political capital, economic capital. These people don't have these capital. So it's we people who have to take the initiative. But how many of us with our own thoughts, with our own outlook do that? That's important. Now that's also connected to tourism. Let's look at tourism. It's a great way to kind of know about our Indian culture. And to know about our Indian culture, sir is here. We have our own policies, programs of the government. But how much, sir, how much are these policies promoting the tribal art, the folklore, their stories, their narratives? I can understand there's an economic dimension to it. Do you like to take this question, sir? Yeah, sure. Or you want to take this? Okay, so I think if I may, let me just step back into the earlier question that you spoke about, the power asymmetry in knowledge systems. That exists. And that is not only unique to India, it's all over the world. You know, this whole colonial narrative, this whole Orientalism, all of them speak about the power narrative, because in any society at any point of time, there are those who are powerful and their narrative therefore gets carried forward in the way that things are recorded. And I think that's not going to go away because we decide today that we are going to, Can somebody correct the sound system, please? Anyone here? And I think it's not going to go away because somebody decides that we need to remove this power asymmetry and then make this truly representative. But one of the things that we see today is that, especially social media, it has really democratized the narrative. It is not, it's really made it easy for people to express themselves, and it is not really the highbrow art. There's something, if we speak about Rajatarangini, and about 20 years ago when we said what is there in the Rajatarangini, you had to go to the library to find out what that book is and to read the scholarly articles. So I think 10 years ago, with the onset of the internet, it was easy for you to have, queried if there is, to see if there are any texts of Rajatarangini which are available online, which you could sit in the comfort of with your laptop at home and access. But I think what artificial intelligence makes it possible today is that sitting here, you can actually,
diversity that we have is enormous. And I think that is really the calling card. Because you could probably, if you were a foreign traveler, you could visit India 100 times and still not be able to, say that I have experienced what India is all about. And I think which is why what we do is that we have these great assets. We also know that there is this great opportunity. I think what we need to do is to create this bridge by which we are able to make these experiences worthwhile for international tourists and the high-spending tourists to come. And there are some examples, like for example in Kerala, and I think going 20 years back, they did something extraordinary because when people went to a small village, other than the hotel, so they started something called village life experience. So people, they go take a tour of the village. There's somebody who's a toddy tapper who goes up and he shows how he does that. He gives everybody a little glass of toddy. There's a fisherman who does fishing using a bow and arrow. So everybody partakes in organic farming. So the idea is it enriches the experience of the tourist manifold. And I think India has the potential to enrich, lifetimes of experiences for people. Thank you, sir. No, I just want this, I want Professor Banka and Miro to take up this question on artificial intelligence. That what are the limitations, what are the challenges you face when you apply artificial intelligence to, say, our culture, to our knowledge system? What are the challenges? Of course, originality is one of them, we all know that. And do you like to expand on this? Okay. So when I look, like I said earlier as well, the issue is the data, the authenticity of data. Like when we talk of, like we are talking about Indian knowledge system or knowledge system that existed maybe 500 years ago, 1000 years ago, and we want to bring that authenticity into AI models, which is extremely difficult because all we have is folk-based. We have oral stories. We have people telling us about those knowledge systems. So the difficulty is, when I see it from my point of view, the difficulty is, one is the acceptance of developing such systems by the people. Say, for example, I am a person from computer science background, and I want to jump into tourism and say, okay, this is how it should function. Wherein, there may be another person who is actually from the tourism, culture, architecture, who knows the different nuances about how it is to be built. So that gap has to be bridged. That gap has not been bridged as of now. We need to take all the stakeholders on the same platform and have an open dialogue about how we should proceed further. It cannot be individualistic. It has to be nationwide, maybe a consortium kind of a thing, which I believe that's how we should proceed. Yeah. Professor, Madam Miro. Then Professor Ravindranath can take up. Would you like to go? Yeah. No problem. Actually, I agree on the things which he is mentioning. You can take the other mic. So now India has brought out the new repository of all the manuscript in the form of Jnana Bharatam mission. So that is going to give a lot of the things what has happened. When we speak about Rajatarangini from oral communication, Kalhana has translated 5,000 years of the historical regime. So that itself is giving certainly a different dimension. When people try to know the history, then there is a lot of change in their perception also will come. How to be in the culturally, how we are there and how we want it to be. And with the changing trends, the society, whatever the advances of technology is there, how to continue with our preservation of the culture is also another important thing it is going on. When we speak about the artificial intelligence, now the advances which is taking place in the artificial intelligences, earlier it is only just whatever the data is available, that only it used to present it. Now it is able to analyze the data and give certain interpretations. So it is the human intelligence who has to take care of whether whatever the data which is drawing is a genuine data
or the false data also, which should be there. So that's we wanted to. Other day, just I noticed if Trump is mentioning about India surrender or India spoke about continuously, if more or more that is there, tomorrow the people will feel that so Trump was true, but India what has done is it is not reflected much in the media. So that's the reason now the data. As you said, there are a lot of very, what are the problems is what you asked. And of course, the problems are many, which are there for all to see. Anything which is as powerful as artificial intelligence coming into human civilization, which so far has not had something like that, will create problems. And as you said, obviously preserving the authenticity of the data is of supreme importance to all cultures, civilizations, and nations. Having said that, there's one thing I want to draw your attention to from a tourism perspective, which I think is very encouraging. I want to give you one specific example, which is of the Notre Dame Cathedral, which, as you all know, was burnt down or it burned down 2 years ago. It was a terrible tragedy of an extreme monument of such importance to the French nation and to their culture and, of course, to their tourism industry. When it burned down, and it was recently reopened. Okay. So basically, when the Notre Dame burned down and they started rebuilding it, this was one of the first monuments rebuilt after artificial intelligence. And they used AI to decode the old drawings where they had the data. They had the old artifacts, which were still there, and we were able to reinterpret the restoration of that cultural monument in a way that would not have been possible if it was just humans doing it. So I see if artificial intelligence is correctly applied by governments, and this is a great case of that, it's extremely powerful for cultural restoration if used in the right way. So tell me, madam, this is for Banka. Please be there. No, tell me. See, to me, the most important point is the development of the Indian knowledge system. Then AI shall kick in. So, to make it effective, to make AI effective, please tell me how we should develop our Indian knowledge system. And after that, Mr. Billa, you please respond to this question. Thank you. So I would say, and I'm sure you continue from where I'm saying, the first thing that as a country we should be doing to develop our knowledge system in the age of AI is first taking a really good look at preserving the data. Without that, then this cannot happen. So the first step, which across the sort of cultural history of India, which the government should be looking at, is not only how you preserve it, how do you preserve it in a way that can be used in AI systems? So the first question I think is identification and classification and preservation above all. Once you do that, I think then the next step of that is how you translate that, and as a computer scientist you'll be able to say that better, but I don't think there's an easy way to skip that step, is what I would say. So tell us, Professor Banka, you being a computer science specialist professor, how would you respond to this? It's you. See, like Ms. Biru was saying, the first fundamental thing for any AI system is data. The correctness of data, the unbiased data. And so for example, we are talking about restoration of artificial places, so for example, sun temples that exist in Kashmir. Now, they are currently in use, and if I want to recreate how it looked some years before, any number of years before, the first and foremost thing is I need an architect with me who will basically, from the existing ruins, give me a drawing how it might have looked, what given the current
explorations on how I can analyze this data and how it must have looked. And once I have that data, I can think of techniques like indenting and other things to recreate the 2D image of that structure. And based on that, then we can think of building 3D models. We can think of AR and VR, all the state of art or flashy things of building structures to preserve the culture. Yes, Professor Banka, you have given that architecture. Now the point is, you said about the credibility of the data. That's very, very important and critical. Now, who will say that this data has credibility? Who will certify? Should I certify? Or there should be a body like the National Commission of Statistics, which we have not kind of established it, to verify the data. So see, like he said, the data cannot be validated by me. It has to be validated by some consortium that exists. Yes. We have to establish such centers. Like I talked about collecting data from marginalized languages. We have OB, we have Shina, and so many languages. Mhm. The manuscripts are in bad shape. And I'm talking about digitalization of manuscripts. But who is going to verify that? Maybe some old age person who has lived in that era, who has heard from his parents that it existed in this form. But there needs to be a body which will actually validate, is the data correct? And then only if we have the correct data, we are building the correct system. It's not about building the system. We have to validate if we are building the correct system. Okay, thank you. Thank you very much. Now, this is a question which I am raising it to all the panelists. Like, the topic is artificial intelligence, knowledge system. The word is system. And promotion of promotion of culture and tourism. So how would you prioritize, if I have to ask you, that should we prioritize with X, Y, Z out of these three? Can I start with Sir? Our Sir Suman Billa, sir? Yeah, you can take this mic, by the way. So I think I would tend to look at it in this way. I think the knowledge system is the subject and AI is the tool. So it is not going to replace the subject itself. AI can enhance it, enable it, it can do several things. And Meru just spoke about how the Notre Dame Cathedral was done. Today I know that most of the monuments around the world which have heritage value, they're all creating digital twins. In the sense that you go and map the material, the dimensions, everything into an AI model, so that in case should something wrong go, you will be able to recreate it in exactly the same way that it has been done. There's a second advantage of it, is you don't have to physically visit the monument, but you can be within that digital twin and still experience, what is that the monument holds. But the issue of sanitized data is the issue that, that is, I don't think that our colleagues here will be able to do, because they are working with the tool. What goes into it is what will be reflected as an outcome. But I think we need to understand that the tool is an enormous enabler. And, if you look at just culture and tourism alone, and if you have to look at the applications, they are enormous. Today, people are doing the smart glasses. You stand, like Ray-Ban Meta has launched it, which is linked to Google AI now. So you stand in front of a monument, you don't need to say anything. It looks at the picture and then it starts telling you what is it that you're looking at, what is the context. And you can ask it, what is it that you want? You could be speaking to somebody in Kashmir and he's probably speaking in the language that he's native to. But I don't understand it. But when I speak, it's able to actually translate it for me in real time. So I think the applications are enormous. And I think what it can do to culture and tourism is phenomenal. It can democratize it. And today, the real truth of democratization is, look at all these influencers. These are not people who have come with great education, great credentials through large, format organizations with the
the World Cup match with Cabo Verde. The goalkeeper had, I think, 1.5 lakh followers on Instagram. By the time the match ended, his followers had crossed 5 million mark. So I think today it's really, the world is moving really fast. And what is making that possible is this explosion of AI. But I think the knowledge system is the core, and that is something that AI will not solve. AI will basically amplify that. Yeah, go ahead. Okay, so from my point of view, I like to add to sir's comment. We should be thinking of building, like we talk of Viksit Bharat or Viksit 2047. We should be thinking of building knowledge tourism. When we look at Kashmir, we look at it as a landscape, beautiful places. People come with they want to experience the authenticity, maybe the spirituality and other things associated with Kashmir. But we can think of Kashmir as a knowledge tourism where people can come, where the Nalanda basically gives us the context of interdisciplinarity. AI can serve as a tool, and we have all the ministries who can basically come together to build such systems where people will come not only to explore the landscape of Kashmir, but to have lifelong learning experiences. Okay, Meeru, madam? Yes. What's your take on this? Be brief, short and sweet. So, short and sweet, I would prioritize in terms of time. That's how I would do it. Things you can do now and things that take longer. Building a knowledge system is, it will cost billions and billions of dollars and will take a minimum of 3 to 5 years. So yes, that doesn't mean it shouldn't start now. But there are things in the tourism and culture sector that you can start doing now. For example, upskilling people who are, like small hoteliers, for example, people who are running homestays, the people who are outside the reach of the formal industry, to upskill them to better market their hotels, better market their property, better market whatever it is that they makes their thing special. Right now, I don't think that's something that happens. Professor Ravindranath. That's true. When you think about the knowledge system, my experience with America, people, when we fly one city to another city, we are not able to see. So my question is, I'm sorry. That's all. Knowledge systems only I'm concerned. What is your priority out of these three? So normally knowledge system is available, then the priority tourism and culture, it is easier. Because when I come to know about my niece has asked her, she wanted to visit Ladakh. Okay, Leh. When in some places in Leh, but they don't have much of time. So this, I told you, only you can specifically this place only you can go, other places you cannot go. So these are things which other Google search I gave to her because they came from Australia. They have very limited time. Her husband is a medical doctor and they wanted to have these particular places to go. But only one place you can have it. Other place it is by travel. Connectivity is another important thing and how it is helping. And when you experience that nature, then you are able to understand what are the local historical, cultural significance are there. Thereby you analyze with your own culture what you are practicing. In this way it will go on. That's only I feel. Thank you. No, Professor Sum, I'll start with Sir. Sir, do you think our Indian knowledge regarding culture is scientific? Because if you look at the ragas, they are sung in different seasons. What are the other things you think? Do you think it's scientific? Our Indian culture is based on science? Okay. I think it's largely scientific, but you cannot put it in these black and white boxes. But I think the whole basis of knowledge is on the basis of verification, is on the basis of cross-questioning. So it has gone through a lot of refinement. So I think if you look at the body of knowledge in India, and these are the typical things that people attack, Ayurveda, for example, they will say it does not have the same rigor of allopathic medicine. Does that mean that Ayurveda does not exist, or does that mean that Ayurveda does not deliver? No, that's not true. So probably the way in which the system of knowledge has been captured may not have been as rigorous. But I think to debunk that it does not have a scientific basis is probably not
correct. So I think what we need to do is to see how to bring the rigor into some of those things. You mentioned ragas. I'm sure they have their own sound logic on why ragas are in such in the way that they are. But I think we need to do some work to bring that rigor and to also explain to the other person why they work. So thank you so much. Now I have presented the theory of the talk, and I have been directed that we got to end this. But before we end, let's invite a few questions. And this is my fifth visit to Kashmir, Srinagar. I have come earlier twice to attend the International Conference on Federalism, and I must say the students here, they are so sharp. They ask intelligent questions and they give you tough time. So let's have a kind of a question answer session. We can just have 3 questions by row to any of the panelists before we close. Yes, sir. Go ahead. Please identify yourself and ask the question. Somebody can give the mic, the rolling mic, please. Yeah, go ahead. I'm Dexter and I'm from College. So my question is to Srinagar. So my question is like this: like if we are working on literature or history, and we are diversifying it, and we are making it like we are spreading the information, not just information, but for the world, so that we are Nalanda University, by our prime minister, sir. And the use of AI. Now, the core point of my question is like that: how can we make it interesting for our new generation? Because like the archaeology, these subjects, for nowadays students don't often these kind of things. Like in India, we have seen that. So just ask your question. Yeah. So my question is how the outcome image was going to be more interesting for students. I think I fully agree with you. Experience is the new currency. And if you look at one of the weaknesses of Indian tourism sector, we're still an attraction and a hotel destination. So you go to a place, you go to Agra, you stay in a nice hotel, see the Taj Mahal, come back, and then you're twiddling your thumbs. But today for the youngsters, it's all about experiences. When you go there, you want to do something, you want to participate in things, adventure sport, culinary tours, cultural immersion. All of those are important, but those are missing. So there is also big opportunity for us. If we have to invite the world and we have to make tourism work better and harder for us, we will have to create those. Those are also, fortunately, places with less barriers to entry. So the youth can actually go create these experiences, draw sustenance, livelihood. So I think it's a tremendous opportunity for us. But I fully get your point. That is a place where we are lacking, and that is a place where the opportunity lies. Thank you. Just please answer the question because time is running. Dr. Anil from University of Nalanda. Yeah, so my question is, everyone is talking about authenticity of data, but my question is about accessibility of data. Like when we jump into research and I want to work on a specific topic, right? Let's say it is on tourism. So you flagged your question very well. Yeah. Sensitivity of data is very important, not only the credibility. I'm talking about accessibility because most of the time, essentially, you don't accessibility. Yes. Yeah. The access of data. Sure. Anybody would like to take this question? Okay, in general, obviously, the more accessible the data is to as many researchers as possible, that's always a good thing. You're right, we have to make data more accessible so that students all across the country can access and work on it. That's always going to help the scholarship on any issue. Thank you. The last question. This is the last question. No, well, that probably lies with the chairman here. We can do it offline. So thank you. Thanks for yeah. Please ask the question. I would like to know why we are lacking, despite having so much to offer in this country. And we're actually only 90th point. Is it because of lack of IT or lack of what is modern technology? Because we're not able. In 1982, I
Okay. So I think tourism it's a little bit of a mixed picture, and you need to understand how it is going. We receive 20 million tourists. We send out 30 million tourists. We earn $32 billion by way of foreign exchange earnings. We spend $37 billion. So typically today, tourism has become a net forex loser. But the one way to understand it is, where is the domestic market going? 10 years ago, it was 1.4 billion tourists. Today, that number has moved to 4 billion. So the domestic market is exploding. But so I think if you look at the demand side, it is exploding rapidly. Supply side is not keeping up. And you're from the Chamber of Commerce, you know what the reasons are. That the lending and, there are capital structural issues which need to be addressed, but we are hopeful of doing it. Because if India has to catch the bus on tourism and make it work for the economy, we will have to make those changes now, and we will have to open the doors. Thank you, sir. I must say this particular discussion which we had, a number of issues were flagged, and the issues have been well responded. We need to take it forward, and it has been extremely intellectually stimulating, thought-provocative, informative. So I would like to thank Shri Suman Villaji, Mr. Professor Banka, Miru Madam, and Professor Ravindranath. So please give them a round of applause. So I want to thank all the panelists and also thank myself for having all. अब मैं गंगा कुमार जी से मेरी गुजारिश है कि आज के तमाम मेहमानों को बुके से इनका खैर मकदम किया जाए। हम लास्ट में रखा है। इसको ले लो तो इनका सब हमारे बीच सर को सर का किया नहीं अरे कोई जॉब थैंक यू center, Baba. Take chance. Madam, आइए please. एक मिनट. अभी आइए ना. फोटो में आइए. आइए. अरे. थैंक यू सर। ख़वातीनो हज़रात, अब अगला सेशन ठीक 2 बजे शुरू होगा और 2 से 3 बजे तक चलेगा, जिसकी हेडिंग है वेरियस फैक्ट्स ऑफ कश्मीरी कल्चर सच एज बुद्धिज्म, शिवा एंड सूफी, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके बाद लंच आवर है और एजाज साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। यूनिवर्सिटी हमारे जो आए तो वर्गीय रजिस्ट्रार के हुक्म के मुताबिक 1-2 चीज़ें कहनी है। वन की जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं एंड अकम्पनिंग फैकल्टी, दे शुड इंश्योर कि उनके रेस्पेक्टिव जो स्टूडेंट्स अकम्पनिंग स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी इन द हॉल, नंबर 1। नंबर 2, लंच के बारे में कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो यहाँ साइड में जो काउंटर है तो वहाँ बच्चों का लंच है पैक सेट,
काइंडली इंश्योर कि अपने बच्चे वहाँ जाएं एंड दे आइडेंटिफाई देम, क्योंकि आज 3-4 जगह फंक्शंस हो रही हैं, तो देयर शुड नॉट बी समबडी हु विल कम फ्रॉम आउटसाइड और दूसरी फंक्शन का. प्लीज इंश्योर दैट. थैंक यू वेरी मच. Return to the hall at 2 sharp. Incredible adventures. Incredible India. Incredible adventures. Incredible India. हर कण में इतिहास की झलक, हर कोने में परंपरा की सुगंध, हर गोशे में अदब की अदा. यही शहर है बिहार का नालंदा. और इसी शहर नालंदा में 21 से 25 दिसंबर हम मना रहे हैं साहित्य, विचार, इतिहास और परंपराओं का उत्सव, नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल. Incredible adventures. जहां देश के कोने
Shall we start or we're waiting for someone else? We can start? Okay. Assalamu alaikum. A very good afternoon to all the dignitaries present on the dais and eminent fellow panelists. Myself is Risa Kadri, and I'm going to be the moderator for this very session. So let me introduce, as you're already introduced with Professor Siddharth Singh, Vice Chancellor, Nava Nalanda Mahavihara University, Shri Shahbaz Hakbari, writer, Kashmiri, and he has been +2 principal and being awarded with 0 Man of India in Gujarat, as being well versed with Sufi poetry, which he tried to link with mathematical science. And Padma Shri Mohan Singh, writer, Jammu, Professor Ghulam Mustafa Khwaja, a well-renowned writer. He's not. Okay, we have 3 panelist members here, and we're going to have a discussion on various facets of Kashmiri culture, such as Buddhism, Shaivism, and Sufism, development, democracy, and sustainability. So I would like, first of all, let me extend my sincere gratitude to the event organizers who gave me an opportunity to be the moderator of this very program, of this very session in particular, in front of an eminent galaxy of intellectuals here. So let us start with the session, and I'll like to ask, or I'd like to request Professor Ghulam Mustafa Khwaja to, okay, fine, sorry, Padma Shri Mohan Singh, writer, Jammu, to throw some light or highlight certain aspects related to global gateway about the isms, Buddhism, Shaivism, and Sufism as the global gateway in Kashmir, and how it linked the knowledge with Nalanda University. Please, sir. थैंक यू मिस चौधरी। सबसे पहले तो मैं श्रीनगर नालंदा डायलॉग 2026 जो हो रहा है यहाँ, इनके ऑर्गेनाइजर जो हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया जम्मू से। अच्छा लगा सब जो अब तक की डिस्कशंस हो रही थी, अब तक जो बातें मैंने सुनी हैं। तो जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू को छोड़ के कश्मीर की बात नहीं की जा सकती, मेरा यह मानना है। और अगर करेंगे तो आधी अधूरी बात होगी। वो बहुत कुछ सिर्फ भाषा को लेके, भाषा या थोड़ी और भी बातें हैं जो आपस में हमारी नहीं मिलती हैं, लेकिन बाकी बहुत कुछ पॉलिटिकली साझा है, दूसरी तरफ तारीखी तौर पे साझा है, बहुत कुछ साझा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शैविज्म की बात अगर करते हैं तो शैविज्म, बुद्धिज्म जो है वो कश्मीर में, कश्मीर घाटी में पनपा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन अगर आप ये कहें कि जम्मू में उसका कुछ नहीं है, डुग्गर में, तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी होगी। वहां भी बुद्धिज्म के का आपको मिलता है, वहां भी शैविज्म मिलता है। और इवन जब हम डोगरी के हवाले से बात करते हैं, मैं क्योंकि डोगरी का लेखक हूं और डोगरी के हवाले से बात करना चाहूंगा कि डोगरी में जब 9वीं 10वीं सदी में नाथ साहित्य मिलता है, नाथ साहित्य डोगरी में मिलता है,
जिसमें नाथवानियाँ मिली हैं, चिरंगी नाथ की नाथवानियाँ मिली हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी बातों में वो पीछे रहा हो? बात रिसर्च की है, कितनी हम कर पाए हैं, कितनी अभी बाकी है, ये दूसरी बात है। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से जब बात करते हैं तो मैं यहाँ आपके समक्ष बैठ के ये बात कहना चाहता हूँ कि जितना हाईलाइट कश्मीर को मिला है, जम्मू उसके साए में दब गया है। मेरी बात का आपको हो सकता है बुरी लगे, अच्छी ना लगे, लेकिन सच यही है कि उसको जो उसका लिटरेचर, उसकी सहाफत, उसकी संस्कृति, उसका बाकी जो सारा सिलसिला है, वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाया। इसमें हमारी भी नालायकी है, हम भी उसमें कसूरवार हैं। लेकिन फिर भी जब हम शैविज्म की बात करते हैं और जो जैसे है सूफीज़म की बात है, ललेश्वरी से बड़ा नाम हमें यहाँ नहीं मिलता है, और पूरे इस एरिया में बहुत बड़ा नाम है लालेश्वरी का, बड़ा। और उसे आपको हैरानी होगी कि डोगरी में उसका ट्रांसलेट हुआ है, पूरा वेदपाल दीप जी ने किया है। और इतना अच्छा काम जो ललेश्वरी ने किया है, उसे आप लला आरिफा कहें, उसे और कुछ भी कहें, लेकिन बहुत बढ़िया। और सिर्फ यही नहीं, डोगरी में बेदराही जी ने उन पे नावल लिखा है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन नावल लिखा है जी। हाँ जी। तो सूफीज्म की बात जब आती है तो पूरे जब भारत में जो हमें आसपास इतने जो मिलते हैं, और खास करके जब हम बात करते हैं, जैसे नालंदा से जोड़ के अगर बात की जाए, नालंदा यूनिवर्सिटी से जोड़ के बात की जाए, तो नालंदा यूनिवर्सिटी तो मतलब आज भी हम उसे सारे सब लोग इसको जानते हैं कि पहली जो दुनिया की रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा है, अगर मैं सही हूं तो। और सिर्फ यही नहीं, अभी पिछले इनॉग्रल सेशन में प्रोफेसर सिद्धार्थ जी ने पूरा डाटा बताया कि कितने लाख वहाँ मैन्युस्क्रिप्ट थे, और जिनको 12वीं सदी में वो खिलजी थे ना जी, जो उन्होंने हमला किया, तो वो आग, मतलब सवाल यह है कि जो 3 महीने तक किताबें जलती रही हैं, कितना बड़ा खजाना रहा होगा वो, कितना बड़ा खजाना। वैसा तो और कश्मीर में जब कश्मीर की बात करते हैं, अभिनव गुप्त निकले, उनकी बात है, और दूसरे कितने स्कॉलर यहाँ पढ़ने आते थे संस्कृत के हवाले से, और ये सारा का सारा उससे जुड़ा हुआ है हमारी ज्ञान परंपरा से। भारतीय ज्ञान परंपरा हम तक कभी ना पहुंचती अगर कुछ लोग, कुछ विद्वान, कुछ हमारे जो ऋषि मुनि जो भी कह लें, अगर वो इस सारी जो हमारे ग्रंथ हैं उनको कंठस्थ ना करके रख लेते, क्योंकि हमले हो रहे थे बार बार और किताबें जलाई जा रही थी। जब ये एक बात साफ है कि किसी भी कौम को गुलाम बनाने के लिए उसकी बुद्धि जो है उस पर कब्जा किया जाता है, नॉलेज पे कब्जा किया जाता है, उसे बिल्कुल 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 ऐसे बना दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं हो, हमारे बगैर कुछ नहीं हो। तो जब किताबें रहेंगी, वो पढ़ेंगे, नॉलेज उसमें होगी, वो बात करेंगे। तो ये हमले जो हुए हैं, इनसे उभरने के लिए हमारे कुछ लोगों ने जो कंटेस्ट किया और हम तक वो पहुंचाया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पहुंचाया। वो कश्मीर के भी थे, नालंदा में जो काम कर रहे थे, जो स्कॉलर थे वो भी थे, और उनकी परंपरा लगातार पहुंची है, यहाँ तक पहुंची है, और जिसे हम आज भूल चुके हैं। आज अभी पिछले सेशन में बात हो रही थी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और उससे लेके दूसरी आज की समस्याओं की बात हो रही थी, आज इसे कैसे किया जा सकता है। सवाल यह है कि जो किताब है, किताब का कोई बदल नहीं है, किताब का साहित्य का कोई बदल नहीं है, मैं समझता हूं। उस कंप्यूटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किताब रहेगी। किताब रहेगी तो हम रहेंगे, और नॉलेज उसमें जो रहेगी तो हम रहेंगे। इसमें हमारा दोनों का पूरी जो ज्ञान परंपरा है, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसका अनुसरण विदेशों में भी किया जा रहा है, और बहुत से हवाले हैं जिनके हवाले से अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, जापान की बात कर रहे थे कि एक सांझी विरासत है, वो बातें हो रही थी। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं हमारी ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई हैं। ज्ञान परंपरा जरूरी नहीं है कि ज्ञान परंपरा सिर्फ उसी को कहा जाए जो हम सारे के सारे अनुष्ठान करते हैं। और भी बातें हैं जिनमें हमारी ज्ञान परंपरा जुड़ी हुई है, हमारी रोजमर्रा का काम है, हमारी डेवलपमेंट उससे जुड़ी हुई है, और ये सारी की सारी बातें हमें कहीं ना कहीं हमारे इन दोनों चीज़ों से जोड़ती हैं, कश्मीर से और नालंदा जो पुराना स्ट्रक्चर वो रहा है उससे जोड़ती हैं। और हमें मुझे लगता है कि इसका रिवाइवल जो है, जब अब हो रहा है, इसका रिवाइवल जो है, हमें बहुत कुछ उससे बहुत परतें खुलेंगी, और हम बहुत कुछ जान पाएंगे कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, हम असल में कर क्या रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं, लंबा भाषण तो नहीं हो गया तो ये बातें मैं और दूसरी बात, हमारे जो भारतीय स्ट्रक्चर है पूरा, जो इसमें अगर हम जो लोकल जो खित्ते की भाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं हैं, उनको छोड़ के बात करेंगे तब भी नहीं कर सकते। उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बराबर है, बराबर बनी हुई है। पंजाबी से आप अगर बुल्ले शाह को निकाल देंगे तो बात नहीं बन पाएगी। बुल्ले शाह है, पंजाबी है, तो वो बुल्ले शाह सिर्फ पंजाब का नहीं है, सिर्फ पंजाबी का नहीं है, वो हमारा भी है, वो आपका भी है, पूरे हिंदुस्तान का है। इसी तरह से ललेश्वरी सिर्फ आपकी नहीं है, वो आपकी भी है, हमारी भी है, और सारे पूरे हिंदुस्तान की है। इसी तरह हमारे जो चरंगीनाथ डोगरी के मैं कह रहा हूं, जिनको अभी तक जाना नहीं गया, वो सिर्फ हमारे नहीं हैं, वो आपके भी हैं और सभी लोग हैं। कबीर सांझे हैं, तुलसी सांझे हैं। ये सारी की सारी बातें हैं, और जो ये सारे के सारे क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई साहित्य है, सारा का सारा। मान के चलते हैं कि संस्कृत जननी है, संस्कृत के से सारा जुड़ा हुआ है, लेकिन इन भाषाओं को छोड़ के, इन भाषाओं को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके भी हम अपनी जो मंजिल जो है वो तय नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। Professor Siddharth, sir, please let's know from your expert insights about the spiritual lineage, again, like Buddhism, Shaivism, and Sufism, particularly Shaivism and Buddhism, as being considered as historical relics in terms of contemporary development. But when we talk about revitalizing the traditional knowledge system, how Nalanda University has been or is in presently doing its work with regard to the same? Thanks a lot, Rishaji, for raising a very pregnant question, which includes various dimensions of the culture of Kashmir and its relation with the Nalanda, ancient Nalanda University and modern culture of Nalanda. First of all, I would like to share with you, because youngsters are here, and in the common perception of the world, unfortunately, Kashmir has created a kind of monolithic impression. And when we observe that kind of impression, so unfortunately, several dimensions of its ancient glory is missed. You see, when King Ashoka adopted
the teachings of the Buddha. And it was not a kind of formal conversion, but it was a kind of admitting the teachings of the compassion, friendliness, and belief in the interdependence of the human beings was enshrined in the mind of King Ashoka. And when he decided to send the different kind of dharmadutas to the different directions of the world, and then he created 8 kind of groups of the dharmadutas, and one of those, generally we often know about only King Mahendra and Sanghamitra and so on about Sri Lanka, but a Buddhist monk of Banaras was given this responsibility to bring the teachings of the Buddha to Kashmir and Gandhar Pradesh. It is clearly mentioned in the ancient Pali literature, so it's not a kind of hearsay. And many times it is described in the several Pali literature, even in the Chronicle of Sri Lanka. If you read Deepvansa, the Chronicle of Sri Lanka, Singhal Dweep, and then Mahavansa, so it is many times it is mentioned. And it was King Ashoka who gave this Srinagari, as Honorable Lieutenant Governor also mentioned, that Srinagari name was given by King Ashoka. And the journey of Buddhism starts with Rajgir in the form of the formal compilation of the Buddha's teachings into the form of Tipitaka in Pali language. And the 4th Buddhist Council in the history of Buddhism on the land of India was held in Kashmir, where Mahavibhasha Shastra in Sanskrit during the time of Kushana dynasty King Kanishk, it was compiled. And from there onwards, Kashmir has proved as a gateway of India to Central Asia, where the teachings of Buddhism was spread. Similarly, we cannot ignore the rich tradition. And if I'm talking of, like I mentioned in my inaugural session speech, that in Tibetan literature, there is a list of the 17 masters, Indian masters of Nalanda. And in 17 Indian masters of Nalanda, Asang and Vasubandhu have direct connection with Kashmir. And if we are talking of the Asang and Vasubandhu, so Asang and Vasubandhu were follower of especially Asang was the follower of Mahayana. And Vasubandhu gave his magnum opus, which he produced in Kashmir, and that text is called Abhidharma Kosh. Abhidharma Kosh is called Encyclopedia of Buddhism. And from there onwards, the entire debate, entire discussion on the mind only, like from there, mind only schools were developed. If you go to China, you must have heard about Zen Buddhism. Zen is actually Japanization of Jhan or Dhyan. Dhyan became Chan in Chinese, Tan in Korean, and Zen in Japanese. And from there onwards, in Indian tradition, in Kashmir, culture of Kashmir, it was realized and it was emphasized that purifying from within is more important than performing external rituals, external means of purification are the lesser way of life, but the internal purification is most important. Training your mind to purify your mind from the evil thoughts or sinful thoughts. And that also is reflected in the Shaivism tradition. That is why Abhinav Gupta Tantra Lok or Vigyan Bhairav Tantra of Abhinav Gupta has a lot of influence when Shiva is talking to Parvati in Vigyan Bhairav Tantra. So it clearly reflects the impression. Lot of shlokas you can find that it has very clearly resemblance with the Buddhist teachings. So here Shaivism, Kashmir Shaivism and Buddhism are reflected in certain texts without having any conflict with each other. Similarly, in Sufism tradition, if you read the magnum opus novel of
Mahapandit Rahul Sankritya and Volga se Ganga. So in Volga se Ganga, the last chapter is dedicated to Baba Nuruddin. So Nanda Rishi. And in Baba Nuruddin, Mahapandit Rahul Sankritya, who was one of the finest scholars of the world in Buddhism, he has claimed that the earlier Sufi saints used to wear the similar kind of chivar, kashai color, which were used by the Buddhist monks. So with the arrival of the Islam, they incorporated the concept of creator God, which was not existing in the early form of Buddhism. But with the creator God of or the Allah concept, they incorporated the Buddhist philosophy of the mind purification and finding inner solace, and the texts, the external means of purification, those were not as important was purifying your mind, the one-pointedness of the mind, getting integrated or assimilated with the ultimate almighty God. So it was the confluence of Buddhism, Shaivism, and Islamic ideals, and that the Sufism it gives the impression of the all. It incorporates all the philosophies. So in that way, I think as Nalanda has produced one of the finest, and as I mentioned that in Tibetan tradition, 17 masters, you will find the masters of Nalanda, you will find the masters of Kashmir also. You will also find certain acharyas, like I mentioned about Ashwaghosh. Interesting story with Ashwaghosh is that the king Kanishk, Kushan dynasty, when they invaded Ayodhya, Saket, and that earlier Koshal dynasty, and when they defeated the king of the central kingdom, and this question before, like, and Kanishk demanded 3 lakh Swarna Mudra, the golden coins from him, and king was unable to give 3 lakh golden coins. So then Kanishk said that, okay, you give me only 1 lakh. For rest of 1 lakh, you give me the arms bowl of Lord Buddha. And for another 1 lakh golden coins, you give me Ashwaghosh. Ashwaghosh, you know, the first Sanskrit poet of the world, who left a lasting impression on Kalidas also. And that Ashwaghosh came to Kashmir, and king was very hesitant about his safety and security. And Ashwaghosh said that, no, let me go to Kashmir so that I could spread my ideas, my philosophy to that land also. And then he created Buddha Charit and Saundarananda, these 2 great epics written in Sanskrit. So it's Kashmir, the people, especially youngsters of Kashmir and Jammu, they need to understand the heritage of them. They need to understand the plurality of their culture. They need to understand that the way Xuanzang studied in Nalanda, similarly he studied in Kashmir. And he depicted in his travel account, Siyuki, he depicted about the culture of Kashmir also. So it's lot of commonalities, lot of convergences are there, and we should highlight those convergences. We should highlight the multifacets of Kashmir culture, and that would convey a real message of peace, harmony, and coexistence to the world. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. So my next question is to Shri Shahbaz Akbari Saab. So in defining Kashmir's cultural metrics, how is Sufism correlated with science and technology? Can you throw some light on it? Thank you, Ms. Qadri. Bismillahir Rahmanir Rahim. I will start with an Arabic sentence. Noon wal kalam wama yastarun. It in English means that whatever is written, that is written and elaborated
from and through your minds. This Nalanda and Srinagar, for me, have an concurrence of three L's: legacy, language, and literature. For me, language and literature are the two carriers of a certain legacy. While terming the Sufism and Kashmir, I call it not Sufism, I call it Tasawwuf. Because Sufism for me means, ism means, for me means something else. And Buddhism is Buddhism, and Kashmiri Sufism is not Sufism, it is Sufiyat or Tasawwuf. तसव्वुफ में जो सबसे अहम लर्निंग है, तालीम है, जो लर्निंग हमें बुद्धिस्ट या नालंदा से मिलती है, तसव्वुफ की सबसे बड़ी तालीम यह है कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो. फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सेल्फ. एंड सेकंड पार्ट ऑफ तसव्वुफ इज स्टार्ट फ्रॉम नथिंगनेस, स्टार्ट फ्रॉम शून्य. Surrender before some supreme authority. When you surrender, that means the supreme authority gets connected with you and it delivers so much of it towards you. And this nothingness is in Persian called nesti or nadamat, or very simplicity or sincerity. So Kashmiri Tasawwuf trains a person that I myself am subordinate to something. My life, my death, and my all is subordinate to something. That something means in other language, Sampurna and Shonya. Shonya for zero or nothingness, and Sampurna for ultimate truth. This ultimate truth is depicted in Kashmiri Sufiyat. Kashmiri Sufiyat says that when you know yourself, you will know your God or Allah or your Creator. So the basic learning, basic knowledge and basic information which connects us, which connects Kashmir with Nalanda. Nalanda is very dominant in learning through Buddhism, because Buddhists or Buddhism means that one must know thyself. And Shaivism prominently says that Shiv is everywhere. This everywhere is already depicted in Kashmiri Sufi poetry. Shiv Shui Thale Thale Rozan, the famous verse of Kashmiri Shiv poetry. So when you say Shiv Shi Thal Thal Rozan, our Kashmiri Sufi poetry, just Mr. Siddharji said after the Islamization of this region, the Sufi poets of Kashmir, they said that why are you searching that supernatural power here and there? It is within you. It is within you, Panas Nishri. It is within you, so go through yourself. You will find that supreme authority which has created you. And the next concept of Kashmiri Sufiyat is Kehna, Shonya. The famous Sufi poet of Kashmir has said that, in Kashmir he has said, Kehna lavak ticha kamai. Yet sui shumai, that's sui shumai. In Urdu or Hindi it means that if you are valued as zero, if you are valued as Kehna, if you are valued as Shonya, if you are valued as nothing, that means that is the very much higher value for yourself. And that Kehna, that Shonya is depicted in the modern sciences, especially in mathematical sciences. Kehna is the, nothingness is the symbol of that supreme power which has hidden powers. Hidden means that we are here, my younger students are here, my scholars are here, and very elites are here. We see one another. But
What is within us, what is inner us, we can't see. What is beyond this wall, we can't see. That is the invisible thing. Invisible part of our existence is 99% as per my calculation. Only 1% is visible, 99% is invisible, which is called in gab in Arabic, or which is called in other words that it is batin. Batin, not batil, it is batin. So batin controls us. Batin controls the zahir. Invisible controls the visible. This visibility and invisibility of zero, when we teach mathematics in lower classes, we just introduce zero as this, it is nothing. It is for nothing, and it depicts nothing. It has no values. But when the same grade, the same boy or girl comes to 6th and 7th grade, the teacher or the instructor asks him or her, multiply the heaviest number, the largest number by zero, that number vanishes. That means this zero has some power which was not open to the lower KG student. But this hidden power has been exposed to the higher level students. Same is the case with we people. The hidden power is not open to us, but when we cross some stages, that stages are called in Sufiyat maqam. When we cross some maqams, when we cross some stages, the batin, the invisible, exposes bit by bit and grade by grade. So then, the saints and the Sufis are able to see what after 10 days, what after 10 months, what after 2 years. Just like the science says what after the next week, what is the weather or what is the other conditions of the. This is the science which has translated the hidden things. And science is the epitome of these mathematical sciences. Second example. How this, just this Ms. Qadri asked, how is this mathematical sciences linked with Sufiyat? In Sufiyat, law and illallah, Sampurna and Shunya, they are the two brackets, two extremes in which everybody lies, every entity lies between 0 and 1. If it is less than 0, so you are negative. And negative being is not treated as a being. And if you are more than 1, that means just challenging the supreme power. 0 and 1 symbolize these two. 1 for second grade learner, 2 is 2, 3 is 3. For a 10th class student, 2 is 2 into 1. 1 was there but was not visible in second grade. 2 is 2 raised to power 1. This 1 was there but was not open at the earlier stages. And 2 is 2 divided by 1. That means 1, if symbolizes the supreme power 1, 1 is everywhere. Omnipresence and omnipotence of the Almighty Allah is depicted in this law and illallah. This is how the mathematical sciences and is not the physics principle, the law of motion, they are totally depicted in the Kashmiri tasawwuf. When you are in mobility, when you are dynamic, you are a being. When you are not in mobility, you are not a being, you are dead. So all these principles lying in sciences, they are somewhat and somewhere depicted in Shaivism, in Sufiyat or Tasawwuf, and in other things. I may quote another thing, that is Trukai Shuk. Trukai Shuk Pan Prasna. Truk means clever. Truk means witful. If you are witful, if you have the guts, you have the route, you have the path to go to the higher levels. If you are not witful, that means the wit, the intelligence, the cleverness is the learning or teaching of Shaivism, Trukai Shuk, as Lalvari Shri said. And then she has said that Amipana Sadras Navichaslama. This total life before our this worldly life and life we are living
and life we are to live after this death. These three stages of life. We are living second stage of life. She says that I'm a Panasudras Navishaslama. In all the stages, we are with the very febrile and fragile cotton, which is very just closed cut. When I was in the first life, I was not asked. When I came to this life, I was not asked what your name should be. Nobody asked or sought my permission. When I am going to shift to next world, nobody asks me, nobody allows me, and nobody seeks my permission. That means everywhere and every stage, I am dependent and I am subservient, and these things are the scientific principles. When you have the rational density theorem says that between 0 and 1 is 1 by 2, half. And between 0 and 1 by 2 is 1/4. Between 0 and 1/4 is again 1/8. You go on dividing. You will find indefinite numbers, uncountable numbers between 0 and 0.1 even. That means you have unlimited in the limited set. You have unlimited in the limited set. You have la mahdud, the concept of tasawwuf. You have la mahdud in the set of mahdud. These mahdud and la mahdud are generally taught by these physics principles and mathematical sciences. Thank you. Thank you so much, sir. So my question is again to Professor Siddharth. How Buddhist middle way of teachings aligns with development, democracy and sustainability, particularly with regard to ecological instability and social fragmentation? Well, thanks, Idrisha, for the question, which is not directly related with all the dimensions of this session, but because it has democracy and sustainability issues, so I would be happy to respond to that question. And before that, I would like to congratulate the distinguished audience, because I have never seen such a kind of awake audience after lunch. Generally, post-lunch sessions happens to be very sleepy kind of sessions. Generally, most of the people sleep and speakers keep on speaking whatever they want, but nobody bothers to pay any attention. But I found that the audience is extremely vigilant and they are very much aware of what is happening in this session. So, well, Buddhism, you see, if you see the history of Buddhism, it has traveled to the whole world and it has never imposed its own philosophical ideas or doctrines, replacing the local belief system or local customs and rituals. In China, when it arrived, it got integrated. The Chinese Buddhism is a kind of confluence of Taoism, Buddhism, and Confucianism. Japanese Buddhism is a kind of confluence of their native religion, which was existing before Buddhism arrived, which is called Shintoism. So Japanese Buddhism is a confluence of Shintoism and Buddhism. Similarly, Tibetan Buddhism is born religion. They had their animistic beliefs, animistic religion, and Buddhism. So why it happened? Because the central philosophy of Buddhism, when we talk of the central philosophy of Buddhism, so it's not like Four Noble Truths and all. Its central philosophy of Buddhism is called Paticca which is, the Pali term is Paticca, then Sanskrit term is Pratitya Samutpad, and in common English it is theory of interdependence. So, because Buddhism believes that every entity of this cosmos is dependent, interdependent, and every entity's existence is essential for the existence of others. And when Professor Shahbaz was talking of the nothingness, so from that philosophy of interdependence, Pratitya Samutpad, because they say that because of this exists, therefore that exists. And this philosophy gave this ethics
what to say, like metaphysics to the world, that you don't need the eradication of any philosophy or any existence in order to establish yourself. Each existence is important, and that contributes to each other. And from that philosophy of interdependence, the theory of nothingness emerged, which was philosophized by Acharya Nagarjuna into the philosophy of zero. And in zero, they say that nothing exists permanently, but as zero, when you see that it is swollen from outside but hollow from inside. So everything is interdependent. Therefore, if you start believing everything is ultimately essenceless, and therefore do not have the theory, the doctrine of I, the ego, remove your ego, believe in the importance of every entity, and that is the core of the environmental philosophy, environmental ethics in the modern world. If we would understand that existence of every entity is important, you see that in 1970s, 69, when this Mao in China, great leap forward, to encourage, to build his economy, he gave order to kill the pigeon and rats. And after that, what happened? That the great famine happened, and millions of the people in China were killed. It was the greatest famine, and the great leap forward failed miserably. And then they realized that no, rat, quechua, this and earthworm and this pigeon, all entities are important for this biological order, cosmic order. So that is why if we add Buddhism in the Buddhist Sangha, let's talk about democracy. The concept of commune, the concept of Sangha was given by Buddhism to the whole world. When property doesn't belong to any individual, there's no private property concept. Whatever property would be there, it would be the property of the commune. It would be the property of the Sangha. And the punishment theory was that you have to in the commune, in the Sangha, every fortnight, you are expected to come forth to admit your mistake if you have done it. And the greatest punishment was expulsion from the Sangha. And every decision, like I remember that there's very interesting in the peace and conflict studies, there's a very interesting story that when Ajatashatru, the son of Bimbisar, the very powerful king of Magadha dynasty, he had controlled all the republics of that time, 16 Mahajanpads, 16 Janpadas, but the Vaishali was a big challenge for him. He couldn't conquer Vaishali. So he sent his minister, Valshakal, to the Buddha to ask that, tell me, because Buddha was political advisor also in some way, like the mediator, and he resolved many conflicts also. So Valshakal went to the Buddha and asked that, my king asked that, how can we conquer Vaishali? And Buddha answered to Valshakal that, let your king know that he could never conquer Vaishali as long as Vaishali is practicing 7 indeclinable practices. What are those 7? I would not go into the detail, but 2 are very important. One, he said that because they take all the decisions democratically because there is a Gana. The concept of Gana is there is no king. King is also elected. So all the decisions are taken by the consensus of the common people. Number 2, they respect their women in the society, and so many other factors. So democracy was inbuilt in the concept of Buddhist Sangha. Sustainability is erected over the principle of interdependence. And when you have democracy, when you have sustainability, then you will certainly have development. Thank you very much.
Thank you, sir. Thank you very much. Sir, my next question is to Shri Mohan Singh. So, as we know Shaivism as being the most metaphysical framework, how is it recognized with regard to the sustainability of human civilization as being in the metaphysical framework? मैं अपनी बात कहने से पहले मुझे जब बात चल रही थी डेमोक्रेसी की तो मुझे डॉक्टर इलामा इकबाल का कहा हुआ कुछ याद आ रहा था, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो उन्होंने कहा है कि इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत इस तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदे को गिना करते हैं तोला नहीं करते। तो क्या हम आज की तारीख में इन अल्फाज को लेके चल रहे हैं कि या इससे थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है? जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमें तो इस तरह जो है होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं क्या सोचता हूं और मैं क्या करता हूं, ये भी दो अलग अलग बातें हैं। मैं सोचता कुछ हूं, करता कुछ हूं, तो जो मैं करता हूं वो सामने वो आता है। मैं सोचता क्या हूं वो मेरे तक सीमित है, मेरे तक महदूद है। तो जो हो रहा है अगर उस पर चर्चा की जाए तो बात कहीं ना कहीं जाके डॉक्टर इलामा इकबाल की कही हुई बातों के पास चली जाती है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सोच, हमारी कथनी और करनी में अभी वो जैसे समानता आनी चाहिए वो आ नहीं रही है। कैसे आएगी? उसी से तय होगा सारा ये मामला, कि उसी से सारे मेटाफर भी तय होंगे। क्या किस तरह हम सोचते हैं, क्या हम लागू करते हैं। बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन अब भी हमारे जो जहन है उनमें कहीं ना कहीं वो बदलाव की बात लगती नहीं है। मैं एक हवाला देना चाहता हूं आपको। प्री पार्टीशन जब यहाँ शख्सी हुकूमत थी तो कश्मीर के बहुत से लोग, आपके भी बुजुर्ग, हो सकता है आपको भी मालूम हो कि यहाँ एक दौर चला था जिसे जबरी तालीम के नाम से जाना जाता था। जबरी तालीम, जबरी तालीम ये थी कि उन दिनों महाराजा हरि सिंह ने एक सोचा कि हर एक को पढ़ना चाहिए, हर एक बच्चे का शिक्षा का उसका अधिकार है, वो स्कूल क्यों ना जाए, स्कूल उसको जाना चाहिए। तो वो चलन था नहीं, जम्मू में नहीं था, यहाँ में नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि जिसका जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उसके माँ बाप को थाने बुला के बैठा दिया जाएगा। तो क्यों भाई, अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजते? उसको जबरी तालीम का नाम दिया गया। तो क्या आज भी हम जबरी तालीम के तहत नहीं चल रहे हैं? आज भी हम सारी की सारी बातें अपने आप क्या कर रहे हैं? क्या हमें जब तक हुक्म और वो पूरी तरह से जैसे कहते हैं कि सख्त हुक्म नहीं होता और उसे लागू करने की बात नहीं होती, तो क्या हम वो अपने आप कही हुई बातों को करते हैं, अपने आप पे लागू करते हैं? मैं समझता हूं नहीं करते हैं आज भी। तो फिर जो डेमोक्रेसी या जमहूरियत की बात हम देश की करते हैं, क्या हम अपने घरों में अपनी जो छोटी छोटी इकाइयां हैं हम उनमें हम उसका पालन करते हैं? क्या हम अपनी बीवी को, बच्चों को पूरा अधिकार देते हैं कि वो जो चाहे कर सकें? मुझे लगता है कि
ऐसा अभी तक हो नहीं पा रहा है। और हालांकि उसमें भी सीमाएं हैं, उसमें भी एक बंदिश है कि बच्चे भी क्या करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो असूल या एथिक्स जो है उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। वो एथिक्स क्या है वो कौन तय करेगा, वो अच्छा क्या है बुरा क्या है वो कौन तय करेगा, वो सोसाइटी तय करेगी। और सोसाइटी जो है वो किसकी है, सोसाइटी बना कौन रहा है, क्या हम बना रहे हैं या हम पे थोपी जा रही है। अगर हम बना रहे हैं तो वो कैसी है, और अगर हम पे थोपी जा रही है तो वो कैसी है। ये सारी की सारी बातें जो हैं उन्हीं से तय होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, हम किस तरह से सोचना चाह रहे हैं, और उस पे कितना अमल करना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि हम कोई भी बात जैसे मिसाल के तौर पे आज हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया की तरफ जा नहीं रहे हैं, सही मानों में देखा जाए तो हम ऑफिशियली जा चुके हैं। ऑफिशियली इसलिए जा चुके हैं, मैं आपको अपना हवाला देता हूं। मैं इस्तेमाल तो करता हूं, मैं भी नेट करते सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूं थोड़ा बहुत, और जो नहीं आता है पूछ लेते हैं भाई ये क्या है, इसे क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने वो जो जैसे कहते हैं यूपीआई पे पेमेंट का हिसाब इस पे रखा नहीं, मोबाइल पे कार्ड शार्ट से पेमेंट करते थे। तो मैं पोस्ट ऑफिस पे गया, कुछ जो स्पीड पोस्ट करनी थी, गया, उन्होंने बोर्ड लगा के रख दिया है कि ऑनलाइन पेमेंट, कैश नहीं लेंगे। कैश नहीं लेंगे तो मुझे मतलब ये हुआ कि मुझे अब जबरन उस पे जाना है। मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे सीखना है। और क्या हम जो लोग आपस में सभा सोसाइटियों में जा रहे हैं, कभी हमें ज़रूरत पड़ रही है, अगर हमें वो पूरी तरह से नहीं आता है तो जो फार फ्लंग एरिया में रह रहा है, पहाड़ में रह रहा है, 400 किलोमीटर दूर रह रहा है, वो कैसे इसको फॉलो करेगा। और दूसरी बात, जहां मैं रहता हूं वो जम्मू शहर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और हाईवे से 4 किलोमीटर दूर है। नेट सर्विस वहां नहीं है। मतलब प्रोफेसर साहब से भी मेरी बात हो रही थी, जब तो मैंने इनको कहा कि वो बीच में कट के बात हो रही थी, तो मैंने कहा यहाँ नेट की प्रॉब्लम है थोड़ा। तो अंदाजा लगाइए कि हम जब तक पूरी तरह से जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड नहीं कर देते, पूरी तरह से जो रोड कनेक्टिविटी है वो ठीक नहीं है, कहीं खड्डे हैं, ये है। जैसे अभी बात कर रहे थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए 2 घंटे का रन है। रास्ते में अभी बात हो रही थी ना कि रास्ते में कोई मेल फीमेल वॉशरूम नहीं है। तो बाहर से जो लोग आते हैं, ट्रैवल 2 घंटे का वो ट्रैवल करके जाना है बाई बस, तो रास्ते में कहीं नहीं है। मतलब इस तरह की फैसिलिटीज अगर नहीं होंगी जो चाहिए हमें, तो हम कहें कि हम चांद पे पहुंच गए, तो कहने को कह सकते हैं, उसमें क्या बुराई क्या है। हम भी कहते हैं, हम शायर लोग तो रोज ही चांद पे गए होते हैं। हम तो रोज कहते हैं कि हम तो चांद घूम के आ गए, भाई सूरज जाना बाकी है, थोड़ा तपश ज्यादा थी इसलिए जा नहीं पाए, लेकिन हम तो वहां भी चले जाते। तो ये कहेंगे कि आपको वाइंड अप करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। Okay, a hearty thank you to the eminent panelist here. We have the provision of 2 questions to be entertained from the audience. Only 2 questions. Hi, everyone. In human psyche, we generally say id, ego, and superego. So, what is the definition of all these 3 in Buddhism, Sufism, or Tasawwuf? Mainly this question to Shahbaz sir, and Shaivism. Thank you so much. You want me to repeat? Yes. Yeah. So,
Human It's psyche has ego three and super- components: it, ego, and ego. Ego and super ego. Yeah. What is the definition of how Sufism, or I can say Tasawwuf, is defining all these three? तसव्वुफ के हवाले से अगर हम इनको देखें, इन तीनों चीज़ों को, ईगो एंड सुपर ईगो और जो आपका एग्जिस्टेंस है, दरअसल इन तीनों चीज़ों को वो नेगेट करती है. नेगेटिंग योर सेल्फ come from second person, third person, singular, plural, be inclined in first person, singular, first person, singular, उस वक्त तक जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे. जब आप पहचानते हैं ना, तब वही जो इन साहब ने कहा कि आई के बाद वी बनो, हम, तो हर एक को इंक्लूड कर लो. ये तसव्वुफ की दूसरी मंजिल है. पहले अपने आप के अंदर जाओ, अपने आप को जानो कि मैं कहाँ और क्या हूँ. इसके बाद जब आप जानते हैं ना, तब आप वी को करेंगे. आई एंड वी के बाद, ये ईगो के बाद है. और सुपर ईगो दरअसल एक नेगेटिव थिंग नहीं है. दैट इज पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ तसव्वुफ. ईगो इज नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ तसव्वुफ. सुपर ईगो इज नॉट नेगेटिव. इट इज समथिंग द मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू इन अरबिक. सो वो he or she is able to understand the self and the existence and the creator. Created one must be able to know and to go to creator one. This is my perception. Can be incomplete or can be wrong. Thank you so much, sir. With this, we'll end this can I raise a session. Can I raise a question? Yes, yes. Yeah. With regard to the two verses Shahbaz Sahib used, particularly by Shamas Fakir. Shamas Fakir kehna tse, kehna lava khand har tse, kehna lava yitcha kama yit Yes. The kind of a impression that you try to give about nothingness, Yes. fundamentally in Kashmiri Tasawwuf, it's a failure of comprehension. It's a failure of your mental rationality. Mental rationality cannot reach it. So you need a different realm. It's a different realm. You need a different medium to access it. Because, human knowledges have a certain limitation, particularly which come through cognitive side. Yes, sir. So that nothingness is not a quantitative term. In the mathematical sense, Yes. it's a more a philosophical question, which Buddhism was trying to say in the stage of nirvana also, and particularly with regard to Lala's verse, "Ami pan sadras navichas lama kati boys dai meti di tar, Yes. Amen point yes taken points and shaman." That's the delicacy of being a human, so helpless, right? So the question is, it's fundamentally highlights the human predicament, and then conversation with the divine. And it's in the conversation with the divine one has to elevate oneself to the level of a divine. Yes, sir. Only then a conversation between a divine and a divine is possible within the human. That's the transformation. That's why illallah stage occurs. Yes. Right? So the kind of an approach which is regard with the nothingness is more a deeper a philosophical problem rather than a mathematical one. To some extent, I agree with you, sir. Thank you, sir. I'd like to end with this session with a famous quote of Laleshwari. Well, I'm not that well versed with Kashmiri script. Shahbaz sahab, please correct me if I'm wrong. Shiv chui thale thale rauzan, mauzan hyunte musalman. Truk hai chukt pan par zanao, soy chhi sahibas zanizan. And the meaning is, शिव तो हर जगह मौजूद है, सूरज की तरह सबके लिए रोशन. फिर भला हिंदू और मुसलमान में क्या इम्तियाज? गर्दोजी होश हैं तो अपने वजूद को पहचान ले, वही तो रास्ता है खुदा को पहचानने का. थैंक यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. अब मैं श्री गंगा कुमार जी से गुजारिश करता हूं कि वो मेहमानों को गुलदस्ते से और शॉल ओढ़ाकर उनका खैर मकदम करें.
गंगा कुमार जी ने बोला कि इनॉग्रल सेशन में मेरा सम्मान हो गया है, इसलिए इस वाले सेशन में वो मेरा सम्मान नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा कि कम से कम फोटो के लिए ही मुझे शॉल दे दिया होता, फिर वापस में मुझसे ले लिया होता। Professor Siddharth sir, सम्मान मैंने आपका किया. I make you to speak a lot. Your insightful knowledge is unlimited, I must say. A big round of applause for him. नमस्कार, आदाब। अकील जी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बहुत सारा हौसला अफजाई और हेडेक कम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मुझे भी अथर चांस मिला है तो मैं भी थोड़ा सा बोल लूँ। अभी के बाद का समय काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। 3 to 4 PM पे हैं अभी 4 इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज हैं। श्री नीतीश्वर कुमार हैं, 96 IAS ऑफिसर्स है, वॉज अर्लियर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल गवर्नर जम्मू कश्मीर। हमारे मित्र हैं मेरे छोटे भाई अनुज आथर साहब। फिर हमारे चितरंजन त्रिपाठी जी हैं, डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली। और उसके साथ में पैनल पे गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर अकील अहमद साहब। मैं थोड़ा चारों लोगों के बारे में ब्रीफ कर दूँ। इसके बाद में जो 3 से 4 के बाद में सेशन होगा 4 to 4:15 में हमने टी ब्रेक रखा है। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन हिंदी आल्सो जी। 4:30 to 5:30 में डॉक्टर शशि थरूर, फैज साहब और डी आलिया जी 1 घंटे का टॉक करेंगे टूरिज्म इन कश्मीर पे। मैं एग्जैक्ट सेशन का वो भी बता देता हूँ। 4:30 to 5:30 पे होगा टूरिज्म एज ए ब्रिज, री इमेजिनिंग पीस एंड गवर्नेंस इन कश्मीर। Dr. Tharoor will talk on this matter. 5:30 to 7 हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क्स होगा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हमारा ऐसे होता है कि जो डायलॉग में डिक्लेरेशंस होता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं उसका आंसर्स, फिर आउटकम। ये आउटकम जैसे आपने देखा होगा दिल्ली नालंदा डायलॉग का रिपोर्ट हम लोगों ने वी हैड सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल गवर्नर। ये हर एक से अगले सेशन में गवर्नर या चीफ मिनिस्टर्स को भी प्रेजेंट। एंड at the flag of the India, the entire report we compile it and place before the honorable president of the country. और सारे ये रहता है। तो these are the our structure of the presentations. Valedictory sessions में होंगे हमारे पैट्रन हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, पद्म विभूषण डॉक्टर करण सिंह, वो आएंगे। डॉक्टर शशि थरूर होंगे, नीतीश्वर कुमार जी होंगी, हमारी इंस्टीट्यूशनल पार्टनर और हमारी मित्र सखा प्रोफेसर नीलोफर खान होंगी, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी। आलिया जी होंगे, डॉक्टर के महेश होंगे, सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, बट आई नो हिम मोर एज ए माई ब्रदर एंड एज ए राइटर ऑल्सो। एंड विक जेफनी होंगे, इंटरनेशनल एडवाइजर नालंदा लीड फेस्ट। ही विल मेक द होल डे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बिफोर यू एंड डॉक्टर के महेश विल सम अप विद दिस 2 persons, दे विल सम अप, राइट। और उसके बाद में फिर डॉक्टर थरूर एंड डॉक्टर करण सिंह विल टॉक। 7 बजे से 8 बजे तक क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। कल्चरल प्रोग्राम है, जिनको देखना हो वो देखेंगे, अच्छा लगेगा। जिनको ना देखना हो वो हमें बुरा लगेगा। तो आप क्या चाहते हैं दोनों आप सोच लेंगे, क्या रजिस्ट्रार साहब? ठीक है, इसी तरह का है। तो मैं सबसे पहले नीतीश्वर जी ज्वाइन करेंगे, तो वी विल स्टार्ट इट। या So first we will request Professor Akil Ahmad Sahab is a good friend of mine. He is the academic committee member of the Nalanda Lead Fest who identify the writers below 50 years across the country.
ही इज़ द वन ऑफ द की कमिटी मेंबर्स। अकील अहमद साहब, आप तशरीफ़ रखें। मैं इसके अलावा मैं बुलाना चाहूँगा हमारे त्रिपाठी साहब, आपका मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। चितरंजन त्रिपाठी जी इंडिया के बहुत सारे ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है, 100 से ज़्यादा फिल्मों में। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग, ही इज़ द नेशनल डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, न्यू दिल्ली। So thank you, और he is our institute partner also. So thank you for coming here, चितरंजन जी। हमारी आगे भी यात्रा इसी तरह से जारी रहेगी। तीसरा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड माई ओन ब्रदर अतर आमिर खान, आप सब जानते होंगे, प्यारा हिंदुस्तान का राज दुलारा। थैंक यू। प्लीज कम। नीतीश्वर कुमार जी will join within time. We don't want to get late, so I will request Dr. Akil Ahmad Saab to start, and then the Mr. Nitishwar Kumar will follow it up. You. Thank you. Now, Dash is yours. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया गंगा कुमार जी। ख़वातीनो हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, असातिज़ा, तलबा, अहले इल्म और अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको श्रीनगर नालंदा डायलॉग 2026 में खुश आमदेद कहना मेरे लिए बाइस मसर्रत और एज़ाज़ है। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल का मकसद सिर्फ अदबी तकरीबात का इनेकाद नहीं। नीतीश्वर सर आ गए हैं। वी वेलकम यू सर। As I told you, Lightram Alto, he is the 1990, and most important, he is not the typical bureaucrat. वो आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड के हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, और हमारे तो खैर बड़े भाई हैं, तो मैं आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर यू। तो सर, आपका यहाँ स्वागत है। आपने पहले भी आए, अब स्टार्ट करें आप। पहले नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल करना है उसके। हाँ, पहले आप ही को बुलाएंगे। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल का मकसद सिर्फ अदबी तकरीबात का इनेकाद नहीं, बल्कि अदब, सकाफ़त, ज़बान, तालीम, वर्से, सियाहत और असर हाजिर के समाजी मसाइल पर बामानी और संजीदा गुफ्तगू को फ़रोग़ देना भी है। आज का यह इजलास इसी फ़िक्री और इल्मी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। आज हमारे दरमियान नीतेश्वर कुमार जी IAS मौजूद हैं। आपने इनका तारुफ गंगा कुमार जी से आप सुन चुके हैं। मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए सबसे पहले हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं नीतेश्वर कुमार जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा सर। अच्छा ठीक है सर, मैं यहाँ से बोलता हूँ। आज जो हमारा मौजू है आज का, यूथ इनोवेशन शेपिंग द फ्यूचर थ्रू डायलॉग। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो तेज़ी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बदलते हुए समाजी हालात नौजवानों के लिए नए मौके भी पैदा कर रहे हैं और नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात में जिद्दत सिर्फ साइंसी इजादात का नाम नहीं, बल्कि नए ख़यालात पैदा करने, मसाइल के तख्लीकी हल तलाश करने और सोच के ज़रिए नए ज़ाविये इख्तियार करने का भी नाम है। इस तरह मकालमा महज गुफ्तगू नहीं,
बल्कि एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ ख़यालात तजर्बात आपस में मिलते हैं, नए नुक्ते नज़र जन्म लेते हैं और मुआशरे तरक्की के राह पर आगे बढ़ते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे दरमियान सकाफ़त, पॉलिसी साजी, इंतज़ामिया और अदब से वाबस्ता मुमताज़ शख्सियात मौजूद हैं। यकीनन इनके ख़यालात और तजर्बात हमारे नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई और हौसला अफजाई का ज़रिया बनेंगे। मैं आज गुफ्तगू का आगाज़ तमाम मुअज़्ज़ज़ मुकर्ररीन से एक मुश्तरका सवाल से करना चाहूँगा। मैं इस वक्त सबसे पहले मैं शाहिद चौधरी साहब से अतहर आमिर साहब, हमारे दरमियान अतहर आमिर साहब हैं। मैं उनसे सबसे पहले सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने सिविल सर्विसेज इम्तहान 2015 में दूसरी पोजीशन हासिल की और अपनी मेहनत आज़म शानदार कामयाबी के बाइस मुल्क भर के नौजवानों के लिए एक मिसाली शख्सियत बनकर उभरे। अतहर साहब, आपने इंतज़ामिया में कई नए और मौसर इक़दाम किए हैं और हमेशा नौजवानों से करीबी रब्ता रखा है। मेरा सवाल ये है कि क्या सरकारी निज़ाम और अवामी इंतज़ामिया के अंदर भी जिद्दत और इख्तरा को फ़रोग़ दिया जा सकता है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर नालंदा डायलॉग में यहाँ बुलाने के लिए। और मैं सीधे आपके सवाल पे ही आ जाता हूँ कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट देखते हैं, इसमें यूथ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट इसमें the conversation cannot be secondary. Youth are central to this entire conversation. जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन 2047 है विकसित भारत का, उसमें भी यूथ आर नॉट द पार्ट ऑफ इट, they are the center, they are the engines of this development process. इनफैक्ट उन्होंने एक अच्छा टर्मिनोलॉजी और बड़ा एक अच्छा इसमें उनका एक विजन है that it's not about youth development, it is youth led development. So ये चीज़ हमारे हर किसी जो जिस तरीके की पॉलिसीज़ इस समय इम्प्लीमेंट हो रही हैं, चाहे वो यूटी स्तर पे हैं, चाहे वो नेशनल स्तर पे हैं, हर किसी एस्पेक्ट में एक यूथ को सेंट्रल रखा गया है। हमारे देश में फॉर्चुनेटली वी हैव अ ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस ए यंग नेशन, और ये एक यूथ मुझे लगता है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कंट्री के लिए एक सबसे बड़ा पावर है। तो इसको किस तरीके से हार्नेस किया जा सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, दैट इज समथिंग which is the most integral and important part of this whole conversation. हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, I was just looking at today's program also. पिछले 10 साल में लगभग 2.3 lakh registered startups have been built in our country. उसमें से लगभग 50% के आसपास ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें which are coming from tier 2, tier 3 cities, smaller cities, not only from metropolitan cities. Almost 48% of these startups, they are those where either a founder or a director is, at least one of them is a woman. So जिस तरह के देश में और जिस तरह के दौर में हम लोग रह रहे हैं, जहां चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर दिन लगभग 30 किलोमीटर का नेशनल हाईवे हमारे यहाँ पे डेवलप होता है. It's every day almost 30 kilometers of national highways is developed in our country. इस साल का हमारा इकलौता नेशनल हाईवेज का जो बजट है, NHAI का बजट is 1,76,000 crores. That's the kind of infrastructure development that is happening. हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स में कितनी डेवलपमेंट होती है. इसी तरीके से हर किसी फील्ड में, चाहे हम आजकल AI के दौर में है, किस तरीके से AI में our youngsters are doing so wonderful in AI and every other field. So ऐसे दौर में मुझे लगता है हमारे युवा का और हम सब का एक बहुत अहम रोल है जिसको समझने की ज़रूरत है, और जहाँ पे हमें बस we have to
give a little bit of platform. We have to provide that little bit of initial momentum to our youth. And I'm very sure and very confident with their energy, with their vigor, our nation is going to be among the most strong and one of the biggest powerhouses from across the globe. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। अब हमारे दरमियान श्री चितरंजन त्रिपाठी जी हैं। अब हमारे दरमियान श्री चितरंजन त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी हिंदुस्तान के मुमताज़ थिएटर डायरेक्टर, मुसन्निफ, अदाकार, गीत निगार और मौसीकार हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साबिक तालिबे इल्म त्रिपाठी जी ने अक्टूबर 2023 में NSD के डायरेक्टर का ओहदा संभाला। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे पर मुहित अपने फ़नी सफ़र में वो 50 से ज़्यादा थिएटर डायरेक्ट की, तहरीर व हिदायत और 500 से ज़ायद गीतों की तख्लीक कर चुके हैं। उन्होंने ताजमहल का टेंडर, समंदर मंथन और लौह पुरुष जैसी कामयाब पेशकशों के अलावा तलवार, छपाक, विश्वी और बहुत सारी फिल्मों और वेब सीरीज़ में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। त्रिपाठी जी, आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये कि कैन आर्ट एंड कल्चर सर्व एज इफेक्टिव मीडियम ऑफ डायलॉग एंड हारमोनी अमॉन्ग यूथ पीपल belonging to different languages and religions and regions. सबको नमस्कार। नीतीश्वर सर से मेरी वर्चुअली मुलाकात एक बार हुई थी, आज मैं आपको साक्षात मिल रहा हूँ। सर ने अभी बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो देश में अभी घट रही है, और आपका जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है, वो गंगा से गोदावरी तक लंबा सवाल है, उसमें सब कुछ आपने डाल रखा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे आलोकपात कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये तो सबको पता है कि कल्चर जो है वो एक बाइंडिंग फोर्स है, तो इसमें कोई भाषण देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और ये सबको पता है कि जब भी हम कोई नाटक करते हैं या कोई डांस ड्रामा करते हैं, केवल पेंटिंग और राइटिंग को छोड़ के बाकी सब जो है उसमें आपको एक ग्रुप चाहिए, उसमें एक टीम वर्क चाहिए, उसमें एक कोलैबोरेशन चाहिए। सो क्योंकि मैं रंग कर्म करता हूँ, नाटक करता हूँ, तो हमारे लिए जो टीम वर्क है दैट इज़ दी ओनली वे आउट। उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। देश निर्माण में, समाज निर्माण में भी टीम वर्क की आवश्यकता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे समाज निर्माण हो, देश निर्माण हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो, विकसित भारत हो, ये सारा का सारा, जैसे अगर आप में से किसी को नाटक के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, डिफरेंट एक्ट्स आर देयर इन अ प्ले, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3. So similarly, every play has a beginning and end, but that end doesn't end there. उसके बाद भी उसकी कंटिन्यूटी का एहसास लेके आप जाते हो। तो ये जो देश निर्माण है, ये जो समाज निर्माण है, वैसे ही है। आज जहां हम बात करें वो हमारे लिए बिगिनिंग हो सकता है, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। और जिसको हम मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री जी 47 तक हमें विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि डेवलप्ड नेशन बनेंगे हम 47 में, पर वो एक्चुअल जर्नी फिर एज अ डेवलप्ड नेशन वो शुरू हो जाएगा। इस देश में इतने सारे भाषा, इतने सारे फॉर्म्स, म्यूजिकल थिएटर फॉर्म्स, इतने सारे प्लेज, प्ले राइट्स, नॉवेल्स, इतने सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स, ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके ह्यूमैनिटी की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, सर्वाइवल की बात करता है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करता है। अभी बहुत सारे यंग लोग हैं यहाँ जो अपने कान में खुसुर फुसुर कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो अभी इनके सामने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ आके खड़ी हो गई है, तो उसके बारे में सोच के कई लोग आतंकित हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि कल जो है, कल की जो सुबह है बहुत कमाल की सुबह होगी बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थिएटर में हमें कहा जाता है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो आप लोग क्या करेंगे।
तो एक रंगकर्मी होने के नाते, एक थिएटर प्रैक्टिशनर होने के नाते मुझे लगता है कि ये जो एआई अभी आपके सामने आया है ये तो अभी की खोज है, लेकिन जब से ये सिविलाइजेशनल फॉर्मेशन हुआ है और जिस तरह से हम सरवाइव करते आ रहे हैं, हम सबके पास एआई का एक बड़ा फॉर्म हम सबके पास है, उसका नाम है आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। जब तक आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस ह्यूमंस के अंदर होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अल्ट्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नॉट सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेरी डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे आएंगे जाएंगे। सो हम लोग ऐसे ही सरवाइव करते जाएंगे। बेसिकली न्यू डिस्कवरीज होंगी, न्यू वे ऑफ एक्सप्रेशन होगा, बट द कोर वैल्यू रिमेन्स द सेम। थैंक यू। अब आज के हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रिर जनाब नितेश्वर कुमार जी, जो कि IAS एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत ख़वातीन व अतफ़ाल हुकूमत हिंद हैं। नितेश्वर जी से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने मन से जो चाहें इस मौजू पे या किसी भी मौजू पे, वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वो अपने तरीके से आप जो उनको अच्छा लगे इस मौजू से रिलेटेड या किसी भी मौजू से रिलेटेड वो गुफ्तगू करें और अपनी बातों से हम सबको महसूस करें। थोड़ी इसकी आवाज़ बढ़ा दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए। अच्छा अच्छा, आप लोग को आवाज़ आ रही है? अच्छा, फिर ठीक है। मंच पे मेरे कॉलीग अथर आमिर बैठे हैं, चितरंजन जी बैठे हैं, जो ड्रामा के बहुत बड़े जानकार हैं, करने वाले भी हैं, रंगकर्मी भी हैं। सबसे पहले मैं जो श्रीनगर नालंदा डायलॉग के जो आयोजन करता है, those who are organizing the event, I must compliment them because ये श्रीनगर जो है, इसमें बड़े सारे इज़म यहाँ जुड़े हुए हैं। सूफीज़म भी है, मोहब्बत भी है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। और ये ज़मीन मेरे लिए मतलब मैं यहाँ थोड़े दिन मुझे काम करने का मौका मिला है, तो मैं जब भी यहाँ उतरता हूँ तो मेरे अंदर क्रिएटिविटी जो है वो अपने आप चालू हो जाती है। मतलब पता नहीं, हाँ, मैं अभी भी रास्ते में कुछ लिख रहा था, समथिंग इज़ देयर इन दिस लैंड। और इतने लोगों ने यहाँ अपने तपस्या की है, इतने लोगों ने यहाँ नई नई चीज़ें लिखी हैं कि और मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। शायद आपको पहली बार यहाँ की चीज़ जो हमने लिखी थी उस दौर में मैं भी अभी आपको सुनाऊंगा, तो आपको समझ में आया कि इस लैंड में कितनी एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है। एक चीज़ मैंने लिखी थी, वो आपको सुनाता हूँ, शायद अभी मैंने कहीं सुनाया नहीं है उसको। उससे पहले एक अमीर खुसरो साहब के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं इधर आऊँगा। अमीर खुसरो को आप लोग जानते होंगे, मुझे जोर से आप बोलेंगे तो मुझे भी थोड़ा हौसला अफजाई महसूस होगा। जी हाँ, तो बोलिए, अगर आप जिंदा हैं तो बोलिए। जी हाँ, तो खुसरो साहब, एक दौर था जब खुसरो साहब लिखते हैं कि जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल दुराए नायना बनाए बतिया, और इसी मिजाज को फिर आगे बहुत सारे लोगों ने लिखा, गाया, और फिर वो मंजर आगे बढ़ा। और उस दौर में जो चीज़ें लिखी गई वो ऐसी चीज़ फिर बाद में कई लोगों ने कोशिश की लिखने की, और वो फिर उस तरह की चीज़ बहुत करीब भी आई। अब जैसे फिल्म उसकी एक आई थी गुलामी, जिसमें गुलजार साहब कहते हैं कि जिहाल मिस्किन मकुन बरंजिस बेहाल हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन। जी हाँ, जी हाँ। तो
खुसरो साहब इतने बड़े आदमी थे कि उनके सामने हम लोग क्या कह सकते हैं, बट उससे इंस्पिरेशन लेते हुए उनकी सिर्फ एक लाइन हमने इस्तेमाल की है, जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल, और बाकी बातें मैं अपनी कहता हूँ। और मंजर ऐसे शुरू होता है कि न जाओ दिल को हवाएं देकर, न जाओ दिल को हवाएं देकर, घटाएं सावन बरस रही हैं। न जाओ दिल को हवाएं देकर, घटाएं सावन बरस रही हैं, जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल बराए नैना सुना रही है। बहुत शुक्रिया। अब मुझे लगता है कि थोड़ी एनर्जी और मिल गई, तो मैं और हौसला अफजाई मेरी हो गई है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं, कहते हैं कि सुनाई देती हैं तेरी यादें। जी हाँ, सुनाई देती हैं तेरी यादें। वो पीछे लगता है किसी को यादें बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रही है, तो कहते हैं कि सुनाई देती हैं तेरी यादें मेरे मोहब्बत के शहर में। सुनाई देती हैं तेरी यादें मेरे मोहब्बत के शहर में, हमारे घर तुम। सुनाई देती हैं तेरी यादें मेरे मोहब्बत के शहर में, तेरे बिना मैं हूं अधूरा, मेरे बिना तू बिलख रही है। न जाओ दिल को हवाएं देकर, घटाएं सावन बरस रही हैं, जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल बराए नैना सुना रही है। और आगे इसमें कहते हैं कि बुलंदियों पे है नाम तेरा। देखिए सूफीज्म कैसे है कि बुलंदियों पे है नाम तेरा, तू ही है साहिब तू ही सजन है। जो यूनिटी है, जो यूनिजन है, एकात्म है, जो वही है कि बुलंदियों पे है नाम तेरा, तू ही है साहिब तू ही सजन है। तेरे बिना मैं हूं अधूरा, मेरे बिना तू बिलख रही है। न जाओ दिल को हवाएं देकर, घटाएं सावन बरस रही हैं, जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल बराए नैना सुना रही है। कुछ और आप पोएट्री सुनना चाहेंगे या मैं तकरीर करूं? अच्छा ठीक है। जो ये तो बहुत पहले मैंने लिखा था। अब इस मिट्टी की बात करते हैं जहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है, ये मैं आपको सुना रहा हूँ। और जनरली रोमांस में अग्रेशन कम होता है। हाँ, मैं अग्रेशन में रोमांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कहते हैं कि ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, शायद ये इब्तिदा है, बिगनिंग। ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, शायद ये इब्तिदा है, आधे अधूरे से दिल में कुछ खाली सा भरा है। आधे अधूरे से दिल में कुछ खाली सा भरा है। और आगे मौज बढ़ती है और कहते हैं, तू है धूप मेरे घर में, तू है धूप मेरे घर में, एक गुनगुनी सी गर्माहट। तू है धूप मेरे घर में, एक गुनगुनी सी गर्माहट, एक झोंका सनसनीसा ना कुछ है फिर भी आहट। तू है धूप मेरे घर में। ताली बजाइए अगर आप महसूस कर रहे हैं, मैं आपके फ्लो को ब्रेक नहीं करना चाहता हूं। तू है धूप मेरे घर में, एक गुनगुनी सी गर्माहट, एक झोंका सनसनीसा ना कुछ है फिर भी आहट। जो है बीतता मुझी पे हर वक्त रूबरू तू, जो है बीतता मुझी पे हर वक्त रूबरू तू, ना जीऊं जो तेरे संग तो कुछ कमा कमा सा है। ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, शायद ये इब्तिदा है। और आगे देखिए कैसे कैसे कंप्लीटनेस होती है। देखिए ये सूफिज्म है। मैं जल रहा हूं तुम में, मैं जल रहा हूं तुम में, तू रोशनी मेरे घर की। मैं जल रहा हूं तुम में, तू रोशनी मेरे घर की, यूं करीब होके लगती क्यों चांद कल सुबह की। जी हाँ, मैं जल रहा हूं तुम में, तू रोशनी मेरे घर की, यूं करीब होके लगती क्यों चांद कल सुबह की। तुझे देखूं या ना देखूं, तुझे देखूं या ना देखूं, पलकों पे जो नमी है, ये बयां हो रहा है बस तेरी ही कमी है। ये जो तोड़ फोड़ चाहत है, शायद ये इब्तिदा है, आधे अधूरे से दिल में कुछ खाली सा भरा है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने माहौल को बिल्कुल बदल दिया।
अब तक हम लोग बड़े सीरियस माहौल में थे, अब आपने बेहद खुशगवार माहौल पैदा कर दिया। अब मेरा अगला सवाल अतहर साहब से है। अतहर साहब, नौजवान सनती तरक्की में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और क्या आप समझते हैं कि इंतज़ामिया और नौजवानों के दरमियान ज़्यादा गहरा मकालमा ज़रूरी है? मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब दूं कि ये बिल्कुल सही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे युवा में उनके बीच में डायलॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जब डायलॉग होगा, जब बहुत ज़्यादा, तब जाके जितनी भी पॉलिसीज़ या इम्प्लीमेंटेशन है वो यूथ सेंट्रिक होगा। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि इस समय दिस इज़ हाउ थिंग्स आर डन। एक वो टॉप डाउन अप्रोच नहीं, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू ही चीज़ें होती हैं। जहाँ तक मुझे लगता है पहले तो थोड़ा सा इट्स वेरी आई वुड से अनडिजायरेबल प्रॉब्ली, इतनी अच्छी शायरी के बाद हम वापस कहाँ पहुँचे हैं, बट सीरियस माहौल पे आए। But to in the respect of the question itself, मुझे लगता है युवाओं का बहुत अहम रोल है किसी भी जगह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वो वाकई में वो इंजन होते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में हम बात करें, चाहे वो बिजनेसेस के फील्ड में हो, तो ये हमारे युवा ही हैं who are going to become the big entrepreneurs of tomorrow. They are going to become the CEOs of tomorrow. सो उनका बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर की बात करें, अभी तक हम इसके बाद टूरिज्म का सेशन है। अगेन दैट टूरिज्म, इट्स टू बी ड्रिवन, इट विल बी ड्रिवन बाय दोज लोकल यंगस्टर्स। सो ये अब इस रोल को कितना हम लोग उस पर कितनी ज़्यादा रोशनी डालें, इट्स इट डिपेंड्स ऑन द टाइम दैट वी हैव। बट हर किसी एस्पेक्ट में, हर किसी फील्ड में, अभी जैसे चित्रंजन जी बात कर रहे थे एआई के बारे में। अगेन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, वी आर गोइंग थ्रू दिस रेवोल्यूशन ऑफ एआई। इसमें भी आगे बढ़ के आने की जो द पीपल हु आर गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड द वंस आर यंगस्टर्स, वो आगे बढ़ के इससे बिजनेसेस बिल्ड करेंगे, इससे हमारे यहाँ की सोशल डेवलपमेंट या हमारे यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें इम्पैक्ट लाएंगे। सो दिस ऑल एवरीथिंग हैज़ टू बी ड्रिवन बाय यंगस्टर्स। बट मुझे दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम जो लगती हैं, थोड़ा सा जो हमारे एक एजुकेशन सिस्टम है उसमें जिस तरीके की अपडेशन, जिस तरीके का स्किलिंग में जितना फोकस रहना चाहिए, दैट ऑल इज हैपनिंग इस समय। नाउ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल द डिफरेंट टायर्स। अगेन द फोकस इज हाउ डू वी इक्विप, हाउ डू वी मेक श्योर कैपेसिटी बिल्डिंग और हमारे युवाओं की इस तरीके से हो कि वो आगे बढ़ सकें। सेम मैं अपनी यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। जब हम यहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हवाले से मुझे लगता है बहुत अहम है। हम जब 2008-9 में हम लोग 12th क्लास में थे, आई रिमेंबर व्हेन वी वर इन क्लास 12th, ऑलमोस्ट मुझे लगता है आधा साल हमारे यहाँ कभी स्कूल हम लोग जा नहीं पाए, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोगों ने 2008 का आपको पता होगा, वॉज एजिटेशंस, देवर हड़ताल्स और ऐसा माहौल था कि आई हैव इन माई 12th क्लास आई हैव हार्डली अटेंडेड 30% ऑफ डेज इन स्कूल। बट इस समय इतना बदलाव आ चुका है कि every child, every kid is going to school. There is 100% days of schooling, 100% days of colleging is provided to our every youngster. This is the kind of change that we are talking about. This is the kind of things that have happened. सो मुझे लगता है ये इसमें चाहे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर में मिशन युवा की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, अभी प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना की बात करते हैं, हेल्थ, वुमेन जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जनरल पॉवर्टी एलिविएशन की बात करते हैं। मुझे लगता है इन पास्ट डिकेड अलोन अराउंड 273 million people in our country have been taken out of poverty. So yes, this all points towards just one fact, that our country is doing really good. We are at a wonderful phase. और इस stage में this is probably the best time to be a youngster in our country. हमारे देश में मुझे लगता है सबसे अगर बेहतरीन टाइम एक युवा
होने का है, वो शायद वो यही वक्त है. So this is the time when we all our youngsters have to pull up their socks, and we all have to work together in taking our country forward. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया अतहर आमिर खान साहब. अतहर साहब को कहीं ज़रूरी काम से जाना है. त्रिपाठी जी, अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं. कश्मीर जैसे इलाके में जहां नौजवानों के सामने बेशुमार इम्कानात और चैलेंजेस मौजूद हैं, आप मकालमे यानी डायलॉग, थिएटर और कल्चरल सरगर्मियों को फ्यूचर की तामीर में किस तरह देखते हैं? डायलॉग जो है, डायलॉग हर घर में होना चाहिए. डायलॉग हर पेरेंट और बच्चों के बीच में होना चाहिए. डायलॉग जो है समाज और यूथ के बीच में होना चाहिए. ये इसलिए बोल रहा हूँ, खाली कश्मीर के लिए नहीं, मैं हर इलाके के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इस देश में जब ये नाट्यशास्त्र लिखा गया था, पंचम वेद का दर्जा दिया गया था, तब हर एक मंदिर में नाट्य मंडप होता था. यानी कि समाज जो है आर्टिस्ट्री एंड आर्ट प्रैक्टिस को एक पेडेस्टल पर रखा था. उसके बाद अंग्रेज़ों के आने के बाद लगा कि अंग्रेज़ी सीखेंगे और ऑफिस के काम करेंगे. उस चक्कर में धीरे धीरे ये जो आर्ट और आर्टिस्ट्री ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया. आई डोंट थिंक एनीवन इज इंटरेस्टेड, सो आई रेस्ट माय केस. कोई सुन नहीं रहा है. इस तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं है. सब बिजी हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या करना है. मैं गाना गा लेता हूँ, जैसे साहब ने कुछ सुना, मैं गाना गाता हूँ. गाना सुनिए आप. फिल्मी गाऊं कि इल्मी गाऊं? अच्छा, नहीं, बहुत पीछे इतना शोर है, ऐसा लगता है कि नहीं बोलना ही बेहतर है. हाँ, यूथ की बात हो रही है और यूथ ही कानाफूसी कर रही है, तो मैं क्यों बात करूं, मुझे क्या लेना देना. सो घर घर में बात होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीम था इस देश में, आज हम सूफीज़म के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, शैविज़म के बारे में बात करते हैं, संगीत के लिए बात करते हैं, पेंटिंग के लिए बात करते हैं. इस देश में ये सब कुछ मेन स्ट्रीम था. धीरे धीरे क्योंकि नौकरी की तलाश और एक सिस्टम का हिस्सा होकर काम करने की जो आस, उस चक्कर में धीरे धीरे हम कहीं और चले गए, और जो मेन स्ट्रीम था वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया. सो आई एम एन एक्स्ट्रा ऑफ दिस सोसाइटी, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड कुछ बोल रहा हूं. ये डायलॉग जब होगा समाज में, और हर एक स्कूल में सिस्टम देखिए ना, स्कूल में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक चिंटू होता है, एक पिंटू होता है. पिंटू मैथमेटिक्स में 95 लाता है, 98 लाता है, ही इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ ऑल द टीचर्स. और जो चिंटू है वो गिटार बजाता है, 85 लाता है, तो उसको टीचर कहते थोड़ा तू साइड में बैठ, तू गिटार ही बजा. ऐसे करके टॉन्ट भी करते हैं हम बच्चों को. या स्कूल में जो म्यूजिक टीचर होता है या पेंटिंग टीचर होता है, उसको उतना भाव नहीं मिलता जितना एक मैथ्स टीचर को मिलता है, क्योंकि उसी तरह से 300 साल से हम लोग बने हुए हैं. तो उस केस में क्या होता है, कोई गणमान्य व्यक्ति जब आते हैं स्कूल में, कोई फंक्शन होता है, अचानक टीचर्स को लगता है कि चिंटू काम में आएगा. सो चिंटू घर आने के 4-5 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और अचानक चिंटू को लगता है समोसा भी मिलने लगा. तो जो टीचर कहते रहे तो ऐसे खड़े रहे, तो वो बुला रहे हैं. और फिर जब मीटिंग होती है या कोई फंक्शन होता है, जो गणमान्य व्यक्ति आए उनके लिए गाना गाना तो जरूरी है. तो 4 चिंटू खड़े होकर गाना गाते हैं. गणमान्य व्यक्ति आते हैं, फूल का माला पहनाया जाता है. चिंटू को लगता है मेरे को कोई इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत मिल गया है. लेकिन जैसे ही गाना खत्म होता है, चिंटू को कहते हैं भाई तुम हटो. सो ये जितने सारे चिंटू हैं,
उन चिंटुओं का उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम सेमिनार्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट कुछ होगा नहीं एक्चुअली। क्योंकि नाट्यशास्त्र भी जब लिखा गया था इन्हीं सब विसंगतियों को देखते हुए लिखा गया था। क्योंकि अथर्ववेद के समय तक आते आते एस्ट्रोनॉमी तक हम लोग पहुंच गए थे, चरक सुश्रुत आ गए थे, आपके पास सर्जरी के बारे में नॉलेज, आपके पास मेडिसिन का नॉलेज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लोगों को उस समय देखकर हमारे जो चिंतन करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि संस्कार संस्कृति से थोड़ा अलग, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ा घमंड कि हम तो स्वयंभू हैं, सब जानते हैं करके हम कहीं और जा रहे हैं। इसलिए ये सब लिखा गया था। इसलिए कहा गया दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो थिएटर है उसको रिफ्लेक्शन कह दिया गया। और वो एक ऐसा अम्ब्रेला है कि उसके अंदर सारे, मतलब आपको गाने भी मिलेंगे, आपको नृत्य भी मिलेंगे, आपको ललित कला भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। इस तरह से सब हुआ था। तो अगर देश को आगे लेके अभी जाना है तो समाज का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। समाज यानी कि मैं अभी अगर मैं अपने बच्चे को बड़ा कर रहा हूँ तो मेरा एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि बच्चा किस दिशा में, उसकी रुचि क्या है। ज़रूरी नहीं कि सारे लोग जो है वो डॉक्टर्स बनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो डॉक्टर्स बनेंगे या ऑफिसर्स बनेंगे या प्रोफेसर्स बनेंगे वही समाज के पहले रो में बैठने वाले लोग होंगे। ये परसेप्शन जब थोड़ा चेंज होगा तो ये जो आर्टिस्ट्री है, जिसके चलते आर्टिस्ट्री क्या है, आर्टिस्ट्री इज एक क्यूरियोसिटी है आपके मन में कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने का। उसी आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस का फल है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो क्यूरियोसिटी को और जगा के रखने के लिए माँ बाप, पड़ोस, आस पड़ोस के लोग, टीचर्स, ये सब इस तरह का अगर व्यवस्था बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे परे संबंध लोगों के बीच में बेहतर हो, चाहे कोई प्रांत में कोई भी रहता हो। जैसे हम आजकल बहुत बढ़ गया है, आप कहीं जाओ तो वहाँ के लोग कहते हैं आप यहाँ क्यों आए हो, कहीं और जाओ वो कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, कोई भाषा बोलो कोई कहता है कि ये क्यों बोल रहे हो। तो ये होते होते हम क्या धीरे 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 छोटे होते जाएंगे, हम अपने अपने कंपार्टमेंट में बंद रहेंगे। इसलिए ये जो एक भारत के संस्कृति का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक्सेप्टेंस और कंपैशन, ये बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। तो इसलिए एक कबीर के 4 लाइन का दोहा मैं गा लेता हूँ। तो उसमें इन्हीं तमाम बातों के बारे में कबीर लिखते हैं। अकथ कहानी प्रेम की कछु कही ना जाई, गूंगे केरी सरकरा बैठे बैठे मुस्काई। कि प्रेम जो है उसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। वो ऐसा एहसास है कि जैसे कोई गूंगा व्यक्ति बैठ के अगर वो गुड़ खा रहा है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसका एहसास, उसकी मिठास का एहसास उसको मिल रहा है। प्रेम ऐसा ही है, भाईचारा ऐसा ही है, एक्सेप्टेंस ऐसा ही है, ह्यूमैनिटी ऐसा ही है। ओ अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, कछु कही न जाई। गूंगे केरी सरकरा, गूंगे केरी सरकरा बैठे बैठे मुस्काई। अकथ कहानी प्रेम की, जब मैं था तब हरी 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 नाही 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 नाही। जब मैं था तब हरी 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 नाही 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 नाही। अब हरी है मैं नाही 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 नाही। अब हरी है मैं नाही नाही नाही। कबीरा 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 कबीरा, कहे कबीर सकती कछु नाही। कहे कबीर सकती कछु नाही। गुरु भया सहाई, गुरु भया सहाई। आवन जानी मिट गई, आवन जानी मिट गई। मन मन ही समाई। अकथ कहानी प्रेम की,
खुश रहना सीखना हम सबको चाहिए। खुश रहना एक्चुअली एक आर्ट है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, आपने भी महफिल को खुशगवार बना दिया। नहीं, मैंने सोचा सर ने जो रंग रूप इस सेशन का रखा और फिर मैंने देखा कि जब मैं बोल रहा हूँ तो सब कानाफूसी कर रहे हैं, या तो मुझे पहचान रहे हैं या तो कह रहे हैं पहचान इसको, पहचान कौन। तो मैंने सोचा मैं कुछ गाना वाना गा दूं, थोड़ी नींद वींद टूट जाएगी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा, तो इसलिए मैंने गा लिया। तो बेहद खुशी की बात है कि आपने गाना सुनाया, नितेश्वर जी ने अपनी कविताएं सुनाई। तो अब मैं लिटरेचर से ही रिलेटेड मेरा सवाल है नितेश्वर जी से कि गवर्नेंस एंड लिटरेचर के दरमियान क्या रिश्ता है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो गवर्नेंस है, मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ आपको। 2-3 लाइन बताऊंगा, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। मेरी इच्छा थी कि मैं फिल्मों में जाऊं बम्बई, बट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होने के चलते छोटे शहरों में, मैं जिस दौर में पैदा हुआ उस दौर में संगीत, डांस, ड्रामा ये सब कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती थी। तो मेरी जो तालीम हुई उस तरफ नहीं हुई। मैंने गाना सीखना चाहा, बहुत कुछ चाहा, और हमारे पेरेंट्स ने सिखाया नहीं। तो फिर पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नौकरी करनी थी, तो इस नौकरी में आ गया। बट वो जो पैशन है वो जिंदा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे ब्रेन में, मैं बहुत देर इस पर बोल सकता हूँ बट उस पर जाऊँगा नहीं, बिकॉज ये लिटरेचर का मसला है, इसलिए मैं लिटरेचर की यहाँ बात करूँगा। लेफ्ट और राइट साइड होते हैं हमारे ब्रेन में। तो एक साइड जो होता है आपको पेट की बात करता है, एक साइड आपको रोजी रोटी की बात करता है, दूसरा साइड जो होता है वो सौंदर्य, आपके क्रिएटिविटी, डांस, ड्रामा, इसकी बात करता है। अपने ज़िंदगी में कोशिश हमेशा करनी चाहिए। आप पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरा साइड है ब्रेन का, उसको भी डेवलप करिए। डांस, ड्रामा, जो भी आप इंटरेस्ट की चीज़ है, पेंटिंग, वो ज़रूर उसको आगे रखिए, बिकॉज वो बैलेंस रखता है और आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाता है। अभी हमारे पास कितना टाइम है? अच्छा, काफ़ी टाइम है। अच्छा, ये जरा इको, साउंड में इको दे दीजिए जी। तो 1-2 चीज़ें आपको सुनाऊंगा, गा के सुनाऊंगा। एक गीत हमने लिखा था, तो वो कहते हैं कि तू जहां कहे चलेंगे, तेरी सांस से बंधेंगे। तू जहां कहे चलेंगे, तेरी सांस से बंधेंगे, तेरी सांस से बंधेंगे। और अब देखिए कहाँ कैसे निकाह होता है। नजरों से तू निकाह कर, नजरों से तू निकाह कर, काजी ये दिल कलमा पढ़े। आगे बढ़ाऊं? जो नजर तू आज फेर दे, सांसों से अपनी घेर दे। जो नजर तू आज फेर दे, सांसों से अपनी घेर दे, सांसों से अपनी घेर दे। मैं घरों का साथ छोड़ दूं, मैं घरों का साथ छोड़ दूं, बस्ती मुझे बेघर कहे। नजरों से तू निकाह कर, काजी ये दिल कलमा पढ़े।
जितने दिन मैं कश्मीर में था ये सब काम हमने मैं उस समय नौकरी कर रहा था। ये इसकी आवाज चली गई। हेलो हेलो, ये भी लगता है तकरीर सुनना नहीं चाहता। जी, नजरों से तू निकाह कर, इको आपने गायब कर दिया। काजी ये दिल कलमा पढ़े। और देखिए हर आदमी के लिए जो उसकी महबूबा होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो कैसे वो बात अपनी कहता है, ये जो सूरतें तमाम है तू ही खास है बाकी आम है। ये जो सूरतें तमाम है तू ही खास है बाकी आम है। तू ही खास है बाकी आम है। तुझे रंग भरूं रिश्ता करूं, तुझे रंग भरूं रिश्ता करूं। इब आशिकी में ये काम है। नजरों से तू निकाह कर, काजी ये दिल कलमा पढ़े। मौज आगे बढ़ती है और आगे कहते हैं, वो खलिश कहाँ चली गई तेरे आने से उठी जो थी। वो खलिश कहाँ चली गई तेरे आने से उठी जो थी। तेरे आने से उठी जो थी। ढूंढूं कहाँ उसको शहर, ढूंढूं कहाँ उसको शहर। दिल को अकेला छोड़कर नजरों से तू निकाह कर। काजी ये दिल कलमा पढ़े। और आखिरी जो बातें हैं वो इसमें मैं कहता हूं, नई मंजिलें तामीर दूं, क्रिएट कर दूं। नई मंजिलें तामीर दूं, पतवार तेरी फेंक दूं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि अब इतनी मोहब्बत के बाद अगर फेंकनी पड़े पतवार, तो देखिए कैसे बात आगे बढ़ती है। नई मंजिलें तामीर दूं, पतवार तेरी फेंक दूं, पतवार तेरी फेंक दूं। यादों का बोझ तेरे लिए, यादों का बोझ तेरे लिए। घायल ये दिल कल से चले, यादों का बोझ तेरे लिए। घायल ये दिल कैसे चले। नजरों से तू निकाह कर, काजी ये दिल कलमा पढ़े। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑडियंस में जो बैठे हुए हैं हजरात हैं, बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, वो अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हमारे मुकर्रिरीन से तो आप पूछ सकते हैं। जी मैडम, आप बताइए। माइक मैं चेक। गुड आफ्टरनून सर। मेरा
मेरा क्वेश्चन चित्रंजन जी से है। सर, जैसे आपने कहा कि आर्ट एंड आर्टिस्ट्री मेन स्ट्रीम था पहले, so as you mentioned that art was the mainstream and now it has been sidelined. तो सर इसी के रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी हिंदी फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा इसको दिखाया जाता है कि अल्फा मेल मेंटालिटी, wherein it is being said that there was an alpha male who used to hunt and provide for the family and he was the mainstream man and there was other man जो नहीं ये सब कर सकता था, तो he invented poetry and artistry. और मुझे लगता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ सोशल मीडिया अ लॉट ऑफ यूथ स्पेशली मैन आर गोइंग थ्रू विद दैट मेंटालिटी ऑफ द अल्फा मेल. व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? ताली किस लिए था मुझे समझ में नहीं आया. जवाब देने से पहले ताली बज गई तो इसका मतलब सवाल में ही जवाब है. एक कोई समाज कभी भी किसी भी समय पर हिस्टोरिकली देखें, क्या खाली लोग बैठ के पोएट्री करते थे सारे या खाली शिकार करते थे? और जो शिकार करते थे, हिस्ट्री ऑफ थिएटर कहता है, जो शिकारगाह में जाते थे और शिकार करके जब आते थे तो आपस में बात करते हुए वो एक्सप्लेन करता था कि मैंने हिरण को कैसे मारा और हिरण कैसे भाग रही थी, तो वो सारा इनैक्टमेंट करके बता रहा था. तो उसको मैं कैसे कैटेगराइज करूं? सो आर्ट आर्टिस्ट्री जो है जब से ये कायनात बना है तब से है. चिड़िया का चहचहाना भी आर्टिस्ट्री है. हवा का चलने की जो हवा का जो एक ध्वनि उसमें से मिलती है वो भी आर्टिस्ट्री है. हमने नेचर से सीखा, नेचर को लेके हमने अपनी तरीके से, जैसे हिंदुस्तान में जो म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में अगर सोचोगे आप तो मूलतः ये कीबोर्ड ओरिएंटेड म्यूजिक नहीं है. कीबोर्ड वेस्टर्न वर्ल्ड में आया, उसके बाद हमारे पास आया. हारमोनियम आज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक, बट हारमोनियम इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप सबको पता है. तो सा पा सा तीन जो तंबूरे में बजता है, उसी को सुन के कैसे लोगों को लगा कि सा रे के बीच में एक कोई सुर छूटा हुआ है, रे गा के बीच में एक कोई स्वर छूटा हुआ है, और माँ और पा के बीच में एक स्वर छूटा हुआ है, पा और धा के. जब सा और रे के बीच में पता लगा बीच में कुछ है तो रे से पीछे आया तो उसको कोमल रे बोल दिया. रे और गा के बीच में जब सोचा तो कोमल गा बोल दिया. माँ और पा के बीच में देखा तो उसको तीव्र मध्यम बोल दिया. उसके बाद 7 स्वर का 12 प्रकार निकाल दिया. उसके बाद राग, सैकड़ों राग निकले, खाली मेजर माइनर तक जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में है वहां तक सीमित नहीं रहा. हर एक राग की जात निकाली, हर एक राग के गाने का समय निकाला, हर एक राग का वादी संवादी विवादी स्वर निकाला, हर एक राग का पकड़ स्वर निकाला, 10 ठाट निकाला, सैकड़ों राग रागिणी निकाली. ये कौन लोग थे? और जब आपके पास कीबोर्ड नहीं था, आपको कैसे पता लगा कि सा और रे के बीच में कुछ छूटा है? बिकॉज एवरी पिच, एवरी नोट इज एक्चुअली अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. So you are actually trying to understand different and explain various frequencies. So frequency has to do with physics. So ये कह देना जनरली कि जो शिकारगाह में गया वही ठीक है, जो बैठ के कान खुजा रहा था उसने सोचा कि कान खुजाते हुए कितना मजा आ रहा है, दिन होते हुए भी मुझे रात जैसी महसूस हो रहा है, कविता बना दिया. तो क्या जो कान खुजाते थे उन्हीं की वजह से आर्ट है? आई डोंट एग्री विद इट. एंड सेकेंडली, कबीर जो बैठ के लिख रहे थे, वो कबीर आज भी क्यों रेलिवेंट हैं? शिकारगाह में जो हैं वो उसी समय तक रेलिवेंट रहे होंगे. कबीर आज तक इसलिए रेलिवेंट है बिकॉज ही वॉज नॉट राइटिंग टू प्लीज एनी वन, ही वॉज नॉट प्लेइंग टू द गैलरी. इसलिए रामायण लिखते समय उनको ये नहीं था कि ये वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड एक दिन कहेगा कि ये वर्ल्ड का पहला पोएट्री है, मुझे ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा इसलिए मैं रामायण लिख रहा हूं. हो गया तो बंद कर देते हैं. मैंने बंद. हाँ सर, आप कुछ बोलना चाहते? हाँ जी, हाँ, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है. मैं उस पर बहुत लंबा बोल सकता हूँ, 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, बट उतनी देर बोलूँगा नहीं. कुछ चीज़ें मैं सिर्फ एक एक लाइन बोलते जाऊँगा.
जो हमारी अपने देश की जो माइथोलॉजी है, जो हमारा पीछे का जो पूरा इतिहास है, आपने एक बात कही, वो मैं आपके इसी मिट्टी से, हब्बा खातून यही थी, उनसे बड़ी पोएटेस यहाँ कोई नहीं हुई, ये कश्मीर मानता है, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर में जो विमेन है वो एक्चुअली विमेन लेड डेवलपमेंट है कश्मीर में, और कहीं मुझे नहीं पता है, बट इस मिट्टी में कश्मीर, जम्मू कश्मीर में विमेन लेड डेवलपमेंट है। मैं यहाँ काम किया हूँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ। और मैंने देखा है कि अस्पतालों में कोविड के टाइम में 1-1 बजे रात में जब हम लोग जाते थे तो वहाँ जो उस हॉस्पिटल की जो CMS होती थी विमेन, वो वहाँ हमें मौजूद मिलती थी। कभी उसको ये महसूस नहीं करने दिया कि हम विमेन हैं तो हम काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो, और तीसरी चीज़, ये जो अभी चितरंजन जी कह रहे थे सारेगामा, तो ये यहीं पे एक पहाड़ी है जिस पे वो शंकराचार्य का टेम्पल है। वो इस श्रीनगर का नाम, श्रीयंत्र की स्थापना दक्षिण भारत से उत्तर भारत जब शंकराचार्य जी आए थे तो यहाँ जब स्थापित हुआ तो श्रीयंत्र स्थापित किया। श्रीयंत्र माइथोलॉजी में बहुत ही गुप्त चीज़ है, उस पर बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं बोलूँगा, बट इट इज़ ऑल चक्रास। जो आपके शरीर में जितने चक्र हैं उसमें से जहाँ जहाँ अलग अलग चक्रों से जो अलग अलग ध्वनि निकलती है वही सारेगामा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब हमारे शरीर के अंदर है, नेचर में है, वहीं से हमने लिया है। एक इंस्ट्रूमेंट बना के उसको रास्ता दे दिया कि हाँ यहाँ हारमोनियम से ये निकलेगा, गिटार से ऐसा निकलेगा। लेकिन सर वो मैं और एक बार अंडरलाइन करना चाहूँगा कि जो सारेगामा है उसमें सा और रे के बीच में कोई सुर छूटा है, ये केवल यहीं पर इसी भूखंड में ही डिस्कवर हुआ है। सो यू हैव टू गिव दैट क्रेडिट टू आवर एंसेस्टर्स। एंड सेकेंडली, शिकार गा रोज है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फोक सिंगर्स। मेरे फोरफादर्स फोक करते थे, पाला गायन करके एक फोक फॉर्म है उड़ीसा का, लेकिन घर भी चला पाते थे, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। सो Thank you very much for all dignitaries. मैं कुछ एक बड़ी अच्छी बात हुई है जो कश्मीर में कि रेल पहुंची है। आप जोर से ताली बजाइए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, और ये मेरे ख्याल से पिछले अभी 2-3 महीने पहले ही हुआ है, 2-4 महीने पहले हुआ है। तो मैं अपनी बात, एक फिल्म थी जिसमें एक बड़ा फेमस गाना था, दोस्त 1974 की, उसमें एक बड़ा फेमस गाना था, रेल पे गाड़ी बुला रही है। तो उसको लिखा तो जिसने भी लिरिसिस्ट हैं, मैंने उसके शब्द बदल दिए। सिर्फ आपको एक स्टांजा सुनाऊंगा, उसमें अपने शब्द हैं, अपनी बात है, धुन उन्हीं की है जो दोस्त के लिए लिखे थे। कहते हैं, मीठे हो बोल दिल को रे खोल, मीठे हो बोल दिल को रे खोल, सब कुछ जिगर से निकले। मीठे हो बोल दिल को रे खोल, सब कुछ जिगर से निकले। चलती है रेल फास्ट या मेल, सबको लिए संभाले। रुक रुक के जा रही है, जीवन दिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। थैंक यू। सर थैंक यू आने के लिए। आज लेट साइड हो गया इसे इसको रख, उनका हो चुका है। आओ इधर, हमारे मित्र
थैंक यू वेरी मच। आप सभी से दरख्वास्त है कि बाहर में चाय आप लोग पी के और 10 मिनट में 4:30 में हम लोग 4:30 वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन ऑन टूरिज्म बीइंग चेयर्ड बाय डॉक्टर शशि थरूर। या थैंक यू।
आप सभी से स्वागत है कि डॉक्टर शशि थरूर सर का आप सभी खड़े होकर स्वागत करें उनका। मैं आलिया जी, श्री मिस्टर फैज अहमद साहब से रिक्वेस्ट है कि आप आएं। चलिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काइंडली बैठ जाएं। थैंक यू। वी आर रियली वेरी हैप्पी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी यहाँ हैं, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग कंक्लूडिंग सेशन के पहले लास्ट सेशन जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, जिसका हमने ऑलरेडी आपके सामने जिक्र किया है, टूरिज्म एज ए ब्रिज री इमेजिनिंग पीस एंड गवर्नेंस इन कश्मीर। सर, आज हम लोग के लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि सर आप कश्मीर में हैं, भारत की सौंदर्य नगरी, स्वर्ग, आप वहाँ हैं सर, और आपको सुनने का सौभाग्य मिलेगा हमें। वी ऑल नो डॉक्टर शशि थरूर सर, ए मतलब ग्रेट मैन, फिलासफर, राइटर, लॉन्गेस्ट सर्विंग इवन ऑफिसर्स, इवन अंडर सेक्रेटरी ऑफ जनरल सर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम तिरुवनंतपुरम सर हैं। सर ने 23 बुक्स लिखा है। आपको कभी सर को सुनने का मौका मिला है तो आज आप सुने और ज्ञान ले, और सर से अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना भी है, कुछ एक आध दो, तो यू कैन ऑल्सो आस्क ऑन देम सर। तो मैं सर मिस्टर फैज साहब हैं सर। फैज साहब इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के हैं सर। सांग्रीला ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक भी हैं सर, और ही हैज़ डन फैंटास्टिक वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कश्मीर टूरिज्म सर। सो वी हैड रिक्वेस्टेड हिम, थैंक यू वेरी मच। नहीं, यहीं से रुकें आप। एंड शरीके हयात मेरी फेस्टिवल चेयरपर्सन मैडम आलिया जी हमारे साथ हैं, और आलिया जी वैसे तो बिहार की हैं लेकिन लगती कश्मीरी हैं, तो मेरे लिए सर सौभाग्य की बात है सर। सर अगर कुछ गलती हो तो गुस्ताफी माफ हो सर। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा शाम का समय हम लोग इंटरेक्टिव करें, तो मैं सबसे पहले सर का सबसे लास्ट में सुनूंगा, क्योंकि सर के सुनने के बाद में मुझे नहीं लगता है सर हिंदुस्तान का कोई आदमी किसी और को सुनना चाहेगा सर। आपको सुनने के लिए सर अनुराग भदौरिया जी हैं, सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, महेश साहब हैं, प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह है वाइस चांसलर से, इदरीस जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी संस्कृत में लिखा है, रजिस्ट्रार साहब हैं यहाँ, हमारे आसिफ अली बांका साहब हैं, तमाम आपके सर एक पुराने विक जेफनी भी है सर, इंटरनेशनल एडवाइजर नालंदा लिट फेस्ट, तो तमाम लोग हमारे साथ हैं। तो सर एक डोगरी के पद्मश्री डॉक्टर मोहन सिंह साहब भी हैं, इन्होंने डोगरी पे बहुत अच्छी महाकाव्य लिखा है, तो ही हैज़ डन फैंटास्टिक वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर कल्चर, एंड आई होप यू ऑल हैव गुड टाइम एंड वी विल एंजॉय आवर लाइफ विद द टूरिज्म एंड स्पेशली द मोस्ट फोकस्ड एंड मोस्ट literate bachelor of the country, Dr. Shashi Tharoor sir. Thank you sir. तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, मैं मैडम आलिया जी से कहूंगा कि टूरिज्म और कश्मीर पे आप बोलें, उसके बाद में फैज साहब से, और लास्ट में मैं ऑडियंस में बैठ के अपने गुरु जी को डॉक्टर शशि थरूर को सुनना चाहूंगा। थैंक यू आलिया जी। गुड आफ्टरनून, अभी तो नून ही है ना। तो वेलकम। पहले मैं सबसे डॉक्टर शशि थरूर सर को, मैं इनके साथ बैठी हूँ यही मेरी खुश नसीबी है, और सर बहुत माइंड ब्लोइंग एक ऑथर हैं, राइटर हैं, नेता हैं, लीजेंडरी और बहुत अच्छे इंसान हैं जो हमें हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। और फैज़ अहमद सर को मैं उनको भी वेलकम करना चाहूँगी और थैंक यू बोलना चाहूँगी, हमारे साथ हैं। और हमारे गंगा जी जो फेस्टिवल डायरेक्टर हैं,
ये तो दिन रात विथ पैशनेट आप लोग के साथ कश्मीर, नालंदा और इंडिया को एक बनाने जा रहे हैं आप यूथ के साथ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये बहुत ख़ास टॉपिक है और इसमें बहुत डिटेल में सर बोलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बस, क्योंकि मैं भी आज बोलूँ तो मैं तीसरी बार कश्मीर आई हूँ और मैं ख़ुद टूरिस्ट हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको बस अपना ही एक नज़रिया ही बताऊँगी कि जो इंसान है, कोई एक छोटी सी कहानी से बताती हूँ। दो पड़ोसी हैं और दोनों इस बहुत झगड़ते हैं, उनके पास एक बहुत खूबसूरत सा बाग है और वो इस बात पे झगड़ा करते हैं कि इस बाग का रास्ता मेरे साइड हो, वो बोलते हैं मेरे साइड हो। और ये जो दोनों साइड में बोलते हैं और उन्हें झगड़े में उनका कुछ भी इनकम नहीं होता है। उन्हें आकर एक बताता है बाहर से कोई इंसान कि देखो तुम्हारे पास इतना खूबसूरत बाग है कि अगर तुम दोनों मिल जाओ और इसको अच्छे से टूरिस्ट के लिए लगाओ और ये इतना अच्छा तुमको फल देगा, तुम्हारी चीज़ें इतनी अच्छी बढ़ेगी। तो उसको ये समझ आता है और वो ऐसा ही करता है। और ये जो खूबसूरत बाग है वो हमारा कश्मीर है। ये बेहद ही खूबसूरत है और मैं इसको तो बिल्कुल जन्नत से ही कंपेयर करती हूँ। और मैं अमीर खुसरो की एक शेर मैंने बचपन में पढ़ा था और स्टिल मुझे वो याद है और मैं उसको बोलना चाहूँगी, आप लोग की इजाज़त हो तो। और वो शेर ये है कि गर फिरदौस बर रोए ज़मीन अस्त, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। अगर जन्नत कहीं है ज़मीन पर, फिरदौस, जन्नत फिरदौस में सबसे जो बड़ा जन्नत होता है आला दर्जा का, वो अगर ज़मीन पे कहीं है तो यही है, यही है, यही है, मीन्स कश्मीर में है। और इतना खूबसूरत इस कश्मीर के लिए बस इसको बहुत ज़्यादा बचपन से मैंने जैसे सुना था कि इतना खूबसूरत, जब मैं आई तो मैं ये फील की। और इसको बेहद और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमें सब मिलके वर्क करना पड़ेगा। यहाँ के जो जनता है और गवर्नमेंट्स हैं, इन दोनों को मिलके एक ऐसा ब्रिज बनाना होगा टूरिज़्म का जो इसको बहुत आगे लेकर जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कश्मीर के आगे स्विट्ज़रलैंड भी फेल है। बस वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ चीज़ें हैं, मैं बस छोटी छोटी कुछ लाइन बताना चाहूँगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जैसे गुलमार्ग गए और वहाँ पे गए तो रास्ते में थोड़ा पहाड़ की घाटी जो है साइड में, वहाँ पे 4 आदमी का जस्ट एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वहाँ पे बैरिकेड सही से नहीं लगाया हुआ। तो गवर्नमेंट्स को इस पर सख्त कदम उठानी होगी और उसको बनाकर उसको बहुत अच्छा बनाना होगा ताकि पब्लिक टूरिस्ट इजी कन्वीनियंट फील करे। गवर्नमेंट को इजी एक्सेस करनी पड़ेगी ताकि जो भी पब्लिक है उसको हर चीज़ इजी से, उसे टिकट मिले, इजी से लोग चीज़ें करें। और पब्लिक जो है उसको कन्वीनियंट उसको देना पड़ेगा और भी प्यार और भी अच्छी शिद्दत से चीज़ें। वो कभी भी चीज़ों को थोड़ी सी लालच में किसी के आगे नहीं बिके। क्योंकि मैं देखी कि मैं जब हम लोग बेता वैली जा रहे थे तो जो रास्ते में रोकते हैं, बैरिकेड लगाते हैं, उसने वो 500 रुपये गवर्नमेंट का फीस लगता है, वो 100 रुपये में बस ये हो रहा था कि 100 रुपये दे दीजिए आपको जाने देंगे। तो उससे हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म होती है। तो गवर्नमेंट को इस पॉलिसी में थोड़े पैसे कम लगा दे, चार्जेस गवर्नमेंट के जो रेट होते हैं, ताकि जा तो ऐसे भी नहीं रहा गवर्नमेंट के पास, और वो अगर कम चार्जेस लगाएंगे तो पब्लिक टूरिस्ट को इजी जाना होगा। और वो इससे जो गैर कानूनी इंसान है, जो वो नेक्स्ट स्लाइड, ये सर कोई कुछ पहुंच नहीं पाएंगे, वहाँ पे जा नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट और आप लोग दोनों मिलके खूबसूरत कश्मीर को और ज़्यादा अच्छा बनाएं। और हमारा नालंदा लिटरेचर, जो हमारा कश्मीर डायलॉग है, इसका हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम एक ऐसा ब्रिज बना पाएँ जो नालंदा की हमारी संस्कृति को, टूरिज़्म को कश्मीर तक लेकर आए, कश्मीर को नालंदा लेकर जाए और पूरी दुनिया में कश्मीर और नालंदा की चीज़ें, ये टूरिज़्म, इसका सभ्यता, संस्कृति, इसकी चीज़ें पहुँचे। क्योंकि ये हमारा 13 सिटीज़ में है और 2 इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। तो ये सारे कल्चर, सारे ऑथर, राइटर सब एक दूसरे के स्टेट में, सिटीज़ में जाएंगे और उनका थॉट एक्सचेंज होगा, उनका कल्चर एक्सचेंज होगा। और थैंक यू सो मच, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और अब मैं गंगा जी को माइक देना चाहती हूँ। थैंक यू, आप लोग का सपोर्ट चाहिए और सेशन को बड़ा प्यार से बनाए रखें। आप लोग सुने हमारे लीजेंडरी को। थैंक यू आलिया जी।
जैसा कि टॉपिक है टूरिज्म एज ए ब्रिज, फैज साहब आप तो टूरिज्म से जुड़े हैं, तो आपको नहीं लगता है कि गवर्नेंस और टूरिज्म का कहीं ना कहीं अमन एवं संस्कृति से, अमन चैन से उतना ही घरेलू रिश्ता है? और टूरिज्म और पीस मैथमेटिकली अगर हम कहें, बहुत सारे कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमारा ये मानना है कि टूरिज्म और पीस मैथमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो मैं चाहूँगा कि हाँ, आप वहाँ से फिर आप अपने तरफ से आपके जो भी विचार हों आप वो रखें। और थैंक यू। strengthen respect for local culture and support and
profound philosophical and cultural traditions that makes our balance between human life and nature. The verses offer saints who speak to us across centuries as Nanda beautifully expressed. Anand Shui Popu Mans Kriya. The infinite truth is found in the human consciousness and living reality. And Nundesh reminds us, unfortunately, we will survive only as long as we protect our growth. These are not just poetic lines, they are governance principles, environmental ethics, and development philosophy. As we think about Srinagar's future within global frameworks like UNESCO, creative cities, and world-class cities, we must ensure that our development model remains rooted in three principles: culture, sustainability, and equity. Sir, we were in 1988, we still set about 7 lakh or 8 lakh tourists. Out of it, 92,000 by foreigners. That was a huge number at that point. But then we saw zero because we lost peace. Because we are speaking about tourism in relation to peace, what we lost and where we are. So then in 2024, our tourism tax is a big number. But no, we had 145 hotels and guest houses in 1988, but today we have got 690 units with 34,990 beds. We have got 862 units with 22,842 beds. We also homestay. That's a new concept. Homestay units, 8,601 rooms, 17,236 beds. Houseboats also there. To grow and reflect that if we want to have culture, we need this homestay because they stay in the house in the family. So they come to know about our culture, we know about and their cultural integrity also. So in the end, I would just say that we will need your assistance in getting the government right, which is internationally recognized and by yourself also, it gets recognition as a person product and national development. थैंक यू, धन्यवाद। कभी कभी शांत भी रहना अच्छी बात है। सर, यस सर। सर, मैं सर के बारे में अंततः कुछ बोलना चाहूँगा, 2-3 लाइन, तारीफ में नहीं, रियलिटी में। सर, आपका नालंदा लीड फेस्ट के लिए आई स्टिल रिमेंबर 2025 में व्हेन आई हैड गॉन टू योर हाउस सर, इन द मंथ ऑफ आई थिंक अप्रैल 25। कोई नया चीज़ होता है तो एक नॉर्मल आदमी दे फील एप्रीहेंसिव टू सपोर्ट, और जब हम इतना बड़ा कोई विजन लेके चलते हैं कि नॉट ओनली हाउ टू कनेक्ट नालंदा विद नॉट ओनली विद द बिहार एंड यूपी एंड झारखंड, बट वी हैव टू कनेक्ट द एंसेस्ट्रल हेरिटेज ऑफ नालंदा विद द श्रीनगर लॉन्ग बैक 2000 ईयर्स बैक। तो आप सोचें कि कश्मीर और श्रीलंका नालंदा का कितना अच्छा रिश्ता रहा, नॉट ओनली विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। सर, पहली बार सर ने हमें सुना और बोला यस आई विल कम। आप सोच ले, इतनी बड़ी शख्सियत जिनसे मिलने के लिए भी हम जैसे आदमी को काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, उन्होंने, सर ने केवल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही टोल्ड मी, ही ऑल्सो फर्स्ट टाइम ट्वीटेड। तो सर, मैं इसके लिए आपका ताउम्र आपका शुक्रगुजार रहूँगा सर, कि आपने जो उस समय में किया, आपकी कृपा से सर काफ़ी अच्छा चल रहा है सर, और 1600 साल अगले साल होगा। तो जब आपने यू हैड गिवन डायरेक्शन समथिंग टू डू इन द मंथ 2027 सर, वी विल टॉक फॉर द फ्यूचर फोर्स ऑफ एक्शन। फिलहाल सर आपसे अनुरोध है, आप हमें सर भाव विभोर कर दें, मंत्रमुग्ध कर दें सर, टूरिज्म और कश्मीर को कनेक्ट करके सर। थैंक यू सर।
lives and aspirations of those who call it home. It is from this perspective that I'd like to approach the theme for us today. Tourism as a bridge into topic unity, reimagining peace and governance in Kashmir. The real question is not merely what tourism can do for Kashmir's economy, but whether, as Faisal has already said, it can help strengthen connections, confidence, and a sense of shared purpose upon which lasting peace and good governance ultimately depend. Kashmir's relationship with the tourists has been much more than a transaction. I do not think there is another place in India, perhaps another place anywhere, where the arrival of a stranger carries quite so much symbolic weight. When a houseboat owner on Dal Lake welcomes a family from Chennai or a backpacker from Berlin, he's not merely renting a room, he is making a statement. Kashmir is open, that Kashmir is safe, and that Kashmir belongs to the world once again of ordinary human exchange, and not only to the world of tragic headlines. Each tourist who arrives here is, in a quiet way, a vote of confidence. And each tourist who leaves with a good story to tell carries home an image of Kashmir that is more powerful than any brochure, any campaign, any official narrative can ever be. Tourism, in that sense, does not simply generate revenue, it generates familiarity. And familiarity, as history has often shown us, is one of the most effective antidotes to fear, to misunderstanding, and to distance. Let us begin then with the beauty of your state, because it would be absurd in a room full of people who know and love this land to pretend otherwise. Kashmir has been called paradise for so long that the word risks becoming a cliche. But cliches, as someone once said, are simply truths that have been worn smooth by repetition. The Mughals built gardens here because they believed they had found on earth something approaching heaven. Dal Lake at dawn, the meadows of Gulmarg under the snow, the saffron fields of Pampore, the apple orchards of Sopore, the deodar forests of Pahalgam. These are not merely tourist attractions. They are part of the inheritance of Indian civilization and of a heritage that continues to speak to the world. And it's worth recalling, since this session is themed around bridges, that travel to Kashmir is not a modern invention. Since ancient times, travel has served as a means of exploration, of trade, of pilgrimage, of personal enrichment, and of encounter between peoples. The old routes that touched the Kashmir Valley carried not only merchandise, but ideas, faiths, art, and language across Central Asia, the Indian subcontinent, and beyond. Buddhist monks traveled your passes. Sufi saints settled in these valleys and gave Kashmir its syncretic culture of Rishi Sufi spirituality, a culture that to this day infuses Kashmiri identity with a gentleness that often gets lost in the noise of conflict. Tourism, in other words, is not something alien being grafted onto Kashmir. It is in many ways a return to Kashmir's oldest vocation, that of a meeting point, a crossroads, a place where the traveler has always been welcomed, even if he's just passing through. You'll remember, Gaga, when we went to Nalanda and we discovered that Huan Sang had traveled through China to get to Nalanda. So the connection of Kashmir and Nalanda precedes your conference. But anyway, I just want to say that I want to push back gently against a framing that I sometimes encounter, the idea that tourism in Kashmir is a kind of consolation prize, something we offer the valley because we cannot offer it the things that truly matter: security, dignity, political voice. I do not believe that's the right way to see it. Tourism done properly is itself a form of those things. It is an economic settlement that bypasses middlemen and goes directly into the pockets of houseboat owners, poniwalas, shikara operators, handicraft artisans, and homestay families. It is a form of dignity
the dignity of a Pahalgam shawl weaver whose work is sought after by a visitor from Mumbai or Marseille, rather than left to gather dust. And it is in its own modest way a form of governance, because when livelihoods depend on peace, communities acquire a stake in preserving peace that no amount of policing can fully match. That historical legacy matters because it reminds us that this moment reflects a movement that has always been central to Kashmir's story. The traveler, as I said, is not a new figure in your valley. He is part of a long continuum that stretches across centuries. What has changed is not the principle, but the scale and the opportunity. In our own time, tourism offers a modern expression of that same tradition of exchange, bringing people together across regions, across languages, across experiences. It transforms curiosity into understanding, distance into familiarity. That is why tourism deserves to be seen not merely as an industry, but as an instrument of connection. And yet, the challenge recalls a formulation I've used before. India, the beautiful, but India first, the functional. The same principle applies here. If tourism is to serve as a bridge to opportunity, to peace and prosperity, then beauty alone is not enough. A bridge must not only inspire, it must also function. I've often argued that before a destination can fulfill its potential, it must get the fundamentals right. Nowhere is that more true and nowhere does it matter more than here in Kashmir. Because in Kashmir, the gap between the beautiful and the functional is sadly not merely an inconvenience for the tourist. It can determine whether confidence grows or evaporates, whether livelihoods flourish or disappear, whether a fragile recovery survives or falters. We do not need to look back very far for proof of how fragile that recovery can be. Last year, and I say basically the year between roughly March 2024 to March 2025, witnessed 7.8 lakh tourists in 1988 come down because of the violence. 7.8 lakh tourists in 1988 come down because of the violence in the valley. And we had gone up again. By the end of 24, we had gone up to 30 lakhs. So when you think about that, that is not a number that was unachievable. It was a number that was growing. If it had not been for the tragic assault in Pahalgam, you would certainly have gone from 30 to close to 40 in the course of 2025. The setback has been truly calamitous for the people of Kashmir. My heart bleeds for you and for all those who have been looking forward to reliving normalcy from tourism. But it can come. I must say that after decades of turbulence, that onset of normalcy felt like a foothold. Economic opportunity, yes, but also something more precious. A rare chance to see a semblance of normal life, to let your children grow up associating the valley with arrival rather than departure, with cameras rather than convoys. In many ways, tourism was beginning to perform the very role that we have been discussing today in the remarks of Alia and Faiz Sahab. That is, creating connections, restoring confidence, and demonstrating the dividends of peace. And then came Pahalgam. The barbaric terrorist attack there did not just take innocent lives, a crime for which there can be no justification, no equivalence. It was also a tragic reminder of how vulnerable your gains can be. Tourists who had arrived full of curiosity and enthusiasm found themselves instead rushing out of the valley. Bookings were cancelled for months ahead after that. I wrote an article, by the way, in an Indian magazine the week urging people to come back to Kashmir. I did so within 1 month of the tragedy. But just urging would not be enough. Anyone who spent time with the houseboat owners of Srinagar or the hotels of Pahalgam and Gulmarg knows that what cancellation actually means at the level of a single Kashmiri family. A season's income gone,
a loan against the houseboat still due, children's school fees still unpaid. The terrorists who carried out the attack understood this arithmetic perfectly. Their target was not merely the 26 families whose lives were shattered that day, though that horror is and must remain foremost in our minds. Their target was also the economic and human bridge that tourism had begun to build. They sought to blow up that bridge precisely because they understood what it represented for Kashmiris. I want to be honest about something else. Kashmir grieved, but Kashmir also protects in its darkest hours. In the aftermath of Pahalgam, never forget it was ordinary Kashmiris, horsemen and guides, shikara operators, shopkeepers, local residents who sheltered stranded tourists, organized candlelight vigils, and said in effect, this is not who we are. These terrorists do not represent us. That response deserves to be remembered, and it deserves to be amplified as much as the attack itself. If the image of Kashmir that still travels the world is only the image of violence, we have failed twice over. Once as victims of the attack, and also as custodians of our narrative. If tourism is to become a genuine bridge builder between peace and governance, then these are the stories that must be told. They remind us that resilience is not created by institutions alone. It is sustained by ordinary citizens who refuse to let violence define you or shape your future. The events of the past year have demonstrated both the promise of tourism and its vulnerability. They have shown us how quickly confidence can be built, but also how easily confidence can be shaken. It is a task before us to ensure that tourism once again becomes a bridge to peace and prosperity. But for that, we must continue to confront the obstacles that hold it back. In speaking about Indian tourism more broadly, I've often referred to what I call the 3 I's: image, infrastructure, and immigration. It seems to me that this framework remains relevant to Kashmir as well, because each of these 3 elements points in its own way to a governance challenge that must be addressed if tourism is to release and realize its full potential. Let me begin with image. Sadly, for decades, the image of Kashmir that has been projected to the rest of India and to the world has been assembled largely from the vocabulary of conflict, of curfews, of crackdowns, of casualty figures. This is not to deny that those realities existed or that vigilance remains necessary, but an image built only from the worst days of a place is a caricature, it is not a portrait. The true image of Kashmir is also found in the family photograph taken at a shikara at sunset, in the child building a snowman in Gulmarg, in the honeymooning couple feeding pigeons near Hazratbal, in the countless ordinary moments that rarely make the evening news elsewhere. Those images matter because they are not propaganda, they are evidence. They show a Kashmir that is lived rather than merely reported. And they are amongst the most powerful instruments of soft power and reconciliation available to any society, because they cannot be faked at scale, and because they travel via WhatsApp and Instagram faster and further than any official communique could ever do. The task of government is not to manufacture these stories, but to create the conditions of safety, welcome, and dignity in which such stories occur naturally and often. The second I is infrastructure. Here too, governance has a decisive role to play. India's broader tourism ambitions are constrained by a shortfall that by recent estimates runs into the hundreds of thousands of hotel rooms nationally. In Kashmir, that is not true, because you have so many hotel rooms, Faisal just told us, of 3 kinds: hotels, shikaras and houseboats, and homestays. So people can come. There are rooms available. That message must also go through. They can go to other parts of India and not find good hotels because everything is booked up in the winter season.
Here, in your summer season, no one wants to travel elsewhere. They want to come here. Remind them it is affordable, it is available, it's here. And then, the fact is that there is the issue of seasonality. Because at the moment, your facilities are concentrated in a few well-known destinations. And by the fact that roads to many of our hill stations and lesser-known valleys remain inadequate. That's why I liked your argument, Faisal, that tourism cannot be only confined to Gulmarg, Pahalgam, Sonmarg, and Srinagar. You must have tourism in obscure villages, in communities far away. Expand your homestay program, and then have an advertising campaign inviting people to experience the real Kashmir. But that is not easy to do. I insist that you can make an effort. Promote Kupwara, Bandipora, Lolab, Gurez, all the valleys that people from the rest of India have not seen. They're largely unvisited, not because they're not beautiful, they're very beautiful, but for lack of roads, homestays, and basic visitor facilities. I am encouraged by what Faisal said about his efforts to develop new destinations and improve connectivity. But we know we're not there yet, right? That's the truth. And the fact remains, as far as I'm concerned, that there are lessons to be learned from elsewhere, no shame. Look at Bhutan, again, a mountainous place like Kashmir. Look at the valleys and the mountains there. Their high-value, low-impact tourism is a model that's worth considering as well for parts of Kashmir. Spreading visitor footfall across a wider geography, rather than concentrating it in a few honeypots, is not only good for the environment, it broadens the economic benefits of tourism and enhances resilience by reducing the vulnerability that comes from concentrating too much in too few places. The third eye, I would argue, is more sort of the rest of India itself. For the allure of our landscapes and the richness of our heritage, we must also confront the aspects the visitor experience can be undermined by. The sheer scale of India can overwhelm the uninitiated. We want to bring foreign tourists back to India, back to Kashmir in particular, but the truth is that the foreign tourists can be overwhelmed by crowds, noise, service culture that is not always tourist-friendly. Again, those are not so much Kashmir's problems as the rest of India's problems, but I think it's also important to ensure that scammers, touts, beggars are curbed, that the sense of security spreads, that sexual harassment is not permitted, and that nothing should occur that erodes trust or tarnishes memories. If we're going to become a world-class tourism destination again, we cannot simply market Kashmir better. We must serve visitors well. Now, I don't know what the exact figures are for Kashmir. Perhaps Faisal can tell us. But in India as a whole, the hospitality sector faces a 40% shortfall in trained staff. Many graduates prefer the predictability of office jobs to the unpredictability of guest relations. But Kashmir, as he told us, has an unemployment problem amongst young people. Number one in the country for unemployment between those aged between 15 and 29. Let's rope them in. Let's find them opportunities through tourism. We need greater investment in vocational training, multilingual guides, and a professional workforce that sees tourism not as a fallback, but as a calling, as a profession. Only then can our country and this beautiful state not become an obstacle to be overcome, but an experience that we know visitors will carry home with affection and enthusiasm. It would be, of course, hypocritical or churlish not to acknowledge what happened since the difficult months that followed Pahalgam. I believe seriously, from what I have seen, and you can correct me if you disagree, that the signs of recovery are there, they are real, and they matter. Confidence, once shaken, is never easy to restore. But the efforts undertaken by the Jammu and Kashmir administration, even by the Union Tourism Ministry, that I still feel they could do more, demonstrate what purposeful governance can achieve. Outreach to tour operators, engagement with travel associations, direct interaction with stakeholders, and the decision to convene tourism officials from across the country in Srinagar itself have all sent an important message that Kashmir will not be allowed to stand alone. The return of visitors to Pahalgam and Gulmarg may seem like a small thing in the larger scheme of national affairs,
But every taxi once again carrying luggage up a mountain is evidence that confidence can be rebuilt. But let's face it, recovery alone is not enough. The challenge before us is to transform recovery into resilience. This begins with security, because no tourism economy can flourish without safety. Yet security must be intelligent, targeted, and reassuring rather than inclusive. It must create confidence without recreating the atmosphere of anxiety that tourism is meant to overcome. It also requires investment in people. Tourism succeeds not because of the beauty of your landscape alone, but because the men and women of Kashmir who bring these landscapes to life, they matter. Every young Kashmiri trained as a guide, every artisan connected to new markets, every homestay owner supposed and supported in building a sustainable livelihood strengthens the social foundations upon which peace ultimately rests. And as tourism grows, we must guard it against the temptation to measure success by numbers alone. Numbers matter to us, to Faiz Saab, to me, but the future lies not simply in attracting more numbers. We have to attract them more sustainably. Kashmir's mountains, lakes, forests, and fragile ecosystems are amongst your greatest assets. Preserving them is not an obstacle to development, it is a prerequisite for it. The lesson of successful tourism destinations around the world, including Bhutan that I mentioned, is that long-term prosperity depends upon balancing growth with stewardship. Finally, we must continue to tell Kashmir's story with confidence and authenticity. In an age where perceptions travel instantly across social media, every visitor becomes a witness and a reporter. The most persuasive advertisement for Kashmir will never be a government campaign. It will be the photograph shared by a traveler, the recommendations offered to a friend, the memories carried home after a pleasant experience, a meaningful experience. Good governance can create these conditions, but the people of Kashmir must provide the welcome that makes such stories possible. If tourism is to become a lasting bridge between peace and governance, then we must be equally serious about strengthening the bridge itself. Fixing India's tourism deficit, therefore, requires a multi-pronged strategy that addresses both perception and reality. That's particularly true in Kashmir. So a few suggestions before I finish. First, rebrand and relaunch. Let us move beyond the generic campaigns and build targeted narratives. Just as there are many Indias to discover, there are many Kashmirs waiting to be experienced. Invest in digital storytelling, immersive virtual tours, influencer partnerships, and user-generated content that showcases Kashmir's beauty, hospitality, and resilience through authentic lenses. In an age where perceptions travel instantly, every traveler can become a storyteller, and every story can become an invitation. Second, build infrastructure that matches ambition, improve roads, rail, sustainable transport to lesser-known destinations and villages, expand homestays, visitor facilities in villages, last-mile connectivity, so that the benefits of tourism will go beyond the few familiar locations everyone knows in Kashmir. As we've already talked about, spreading footfall across a wider geography is not merely economically sensible, it makes the bridge of tourism broader, stronger, and more resilient. Third, prioritize safety and training. Expand tourist police capabilities, not the guys with guns, but people whose jobs are to help tourists. Recruit more women and train them. Ensure multilingual support. Crack down on scams and harassment. Create trusted platforms for verified guides and transport providers. At the same time, invest in skill development, not only for luxury hotels, but also for homestays, eco-lodges, guides, drivers, artisans. Tourism succeeds, when visitors feel secure, but it endures when local communities also feel empowered. You can help them by training them. Fourth, promote sustainability and authenticity. Today's travel increasingly seeks meaningful experiences and genuine human connections. Kashmir must balance growth with preservation.
regulating footfalls in fragile areas, promoting community-based tourism, and ensuring that development does not come at the cost of environmental or cultural degradation. A bridge that destroys the landscape it's connecting is ultimately self-destructive. Remember that tourism's significance is far beyond economics. Today, it sustains more than 46 million jobs across India, creating opportunities that ripple through entire communities. We don't want to hear again that Kashmir has record levels of unemployment. Let employment come through tourism. Every new hotel, every arriving flight, every visitor supports tourism operators, also weavers, carpenters, farmers, performers, artisans, entrepreneurs. In a country blessed with the world's largest youth population, these opportunities represent more than livelihoods. They offer dignity, confidence, and hope. And that matters for reasons that go beyond economics. Employment is not only a socio-economic issue, it is a national security imperative. Around the world, wherever young people have found themselves unemployed, excluded, or without a stake in the system around them, the consequences can be felt in much more dangerous ways. Tourism instead offers a ladder of opportunity. It creates stakeholders in stability, participants in prosperity, and partners in peace. It creates, as I said, every job that's created through tourism becomes another plank in the bridge that we are trying to build. Kashmir doesn't need to tell the world it's beautiful. Everyone knows that. It's been known for centuries in poetry and painting, long before either Instagram or the government had a tourism department. What Kashmir needs, for all of India needs, but Kashmir perhaps most urgently, is to make that beauty functional, safe enough, connected enough, welcoming enough, and inclusive enough that the beauty can do its quick, persuasive work, visitor by visitor, season by season, smile by smile. As we look ahead to the future, when India will one day mark the century of independence in 2047, our success will not be measured only in growth rates, investment figures, or the number of kilometers of highways we construct. It will also be measured by whether we built a country that welcomes, delights, and inspires. A country where diversity is not merely admired from afar, but experienced firsthand by millions who travel across the country. Tourism is not an ornament of development, it is one of the clearest reflections of who we are. It reveals whether a society is confident enough to open itself to the world, generous enough to welcome strangers, and wise enough to preserve what makes it unique. Let us then resolve to build that bridge, not as a metaphor for a press release or merely as a title for this session, but as a daily act of governance. In the roads we repair, the homestays we register, the young guides we train, the security institutions we make, both effective and humane, the ecosystems we protect, and the political dialogue we do not allow tourism numbers to substitute for. Let us challenge the complacency that says good enough and instead commit ourselves to the hard work of continuous improvement. For a bridge is not built in a day, it is built plank by plank, stone by stone, through patience, trust, and sustained effort. If we do that, I have no doubt that the Kashmir of tomorrow will not merely recover what it had before Pahalgam, it will surpass it once again, becoming once more what it's been for its long history, one of the most cherished centers within our subcontinent. A place where every Indian and increasingly every traveler from around the world will once again think of, not with anxiety, but with longing, the longing to return. And perhaps that is the deepest promise of tourism. Not that it brings visitors to a place, but that it brings people to connect with one another. It'll turn strangers into guests, guests into friends, and distant landscapes into shared memories. In Kashmir, that process carries a significance beyond economics and beyond even hospitality. Every journey made in trust, every conversation held across differences, every visitor who leaves with a deeper understanding of the valley becomes part of a bridge that no act of violence can easily destroy. For in the end, peace is not built only in conference rooms or negotiated across formal tables.
It's also built on the quiet accumulation of human encounter, a shared meal, a conversation on a shikara on Dal Lake, a guide explaining the history of his hometown, a family returning home with stories that challenge old assumptions. Tourism at its best makes those encounters possible. And that is why for Kashmir, tourism is not merely an industry. It is a bridge to peace, a bridge to prosperity, and above all, a bridge to one another. Tourism, after all, is not merely about places, it is about stories. And in that domain, Kashmir possesses a richness that few destinations in the world can rival. Every traveler is, in essence, a reader searching for a narrative, a pilgrimage of the soul, an adventure in the mountains, a tryst with history, or simply a season of rest and renewal. What we call tourism is in reality the meeting of two stories, the story of a traveler, the story that a traveler brings with him, and the story that a place is willing to tell. Greetings to dear Karan Singh Sahab. I've had the honor of seeing him earlier today. It's wonderful that he's here. So, to conclude, Karan Singh Sahab, and you've arrived just in time, our task, therefore, is not merely to attract more visitors to Kashmir. It is to ensure that the story they carry home is one of warmth, dignity, confidence, and connection. For stories travel where governments cannot, linger when advertisements fade, and build bridges long after the journey itself has ended. If there is one thought that I would leave you with, it is that bridges are curious things. We often admire them for their architecture, for their engineering, but their real purpose is not to stand proudly over a river. Their real purpose is to make us forget the river was ever an obstacle. The most successful bridge is the one we cease to notice because crossing it has become natural, effortless, and routine. That perhaps should be our ambition for Kashmir. Not that it should ever be or forever be spoken of as a bridge to peace and prosperity, but that one day peace, prosperity, and connection should become so ordinary that the bridge we're talking about here should be one that disappears from view. Thank you all. Jai Hind. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बुके लेके आओ जरा, मैं सर को एक बार। आई होप कि सर आपने कुछ वैलिडेक्ट्री के लिए रखा है सर। I don't mind. I think the valedictory is about.
ये सब डाल दो ना, हो तो गया, साथ हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट वाला ये हम सब यहाँ से कहाँ गए? डालो फटाफट से। पुष्पा देख लो कैसे है, पहले ये देखो ना। मैं देखी हूँ सर। हाँ ये नया से यहाँ आलिया मैडम। हटा दो, ये हटा दो, हटाओ। इसको हटाओ। मैंने कहा ना पहले उठाओ। वो नया रखो। फोल्डर है, ये रखो, महेश का है। ये हटा दो, पानी चाहिए। ये तूने रखी। हाँ ये ठीक है सही है यहाँ पे। ओफो, एक मिनट ये वाली चीज ना, ये कहाँ गया फोल्डर वाला? ये अरे यार दो ऐसे गड़बड़ हो रहा है, एक एक करके करो। यहाँ रखिए। ये सर का, ये ले जाओ। ये सर का एक और यहाँ फोल्डर चाहिए। दो है करिए ना भाई, एक ही में लगे हुए हैं आप लोग पोस्टर। नीचे ऑर्डर दे रहे हो आप, नहीं आओ। ये हटा दो बेटा, ये सब सब ठीक है सर, ये हटा दो। नाम देखिए। सब जो शशि थरूर का स्पीकर का कार्ड नहीं है। कार्ड है क्यों लोगे गया सब उठा के? अरे इसको और सजा दो ना। वो है ना, और इसको सजा माइक हटा दो। ले जाओ, अंदर ले जाओ, मेरा है। बस और ले जाओ अंदर। मुझे एक दे दो।
बैठ के करेंगे बस। माइक ऑफ कर। क्यों? थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा, अभी तो बैठाएंगे ना। ठीक है ना, वो कर देंगे तो ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, आप शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करें ना। बुलाएंगे ऊपर बुलाओगे या हम लेके? नहीं नहीं, आएंगे तो सर, बोलो अभी अनाउंस करेंगे। जी करिए। जी नमस्कार। हेलो। May I request everyone to please have your seat? क्या आप सभी बैठ सकते? फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अनाउंसमेंट कि आप लोग चिंता न करें, वेट कर लें और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ट्रांसपोर्ट फराहम किया जाएगा जहां भी आपको जाना होगा। वेट। सर हमारे पैट्रन सर अगर आपका आदेश हो तो हम स्टार्ट करें सर। यस सर। कौन? सर तालियों से स्वागत करें हम अपने पैट्रन और प्रेसिडेंट नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 2026 पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान डॉक्टर करण सिंह सर का। मैं डॉक्टर शशि थरूर सर से अनुरोध करूंगा। अरे आप लोग बैठिए ना। मैं डॉक्टर शशि थरूर सर से अनुरोध करूंगा कि आएं और पद, पोजीशन, कुर्सी सर ग्रहण करें। सर प्रोफेसर नीलोफर खान जी, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और हमारे इंस्टीट्यूशनल पार्टनर भी हैं। थैंक यू नीलोफर जी आपका सहयोग के लिए। मिसेस डी आलिया जी, फेस्टिवल चेयरपर्सन नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल, अनुरोध है कि आप आएं। डॉक्टर के महेश, सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, आएं और पद ग्रहण करें। एंड मेरे मित्र
Dr. Vic Jeffrey. He is the International Advisor of Nalanda Lit Fest 2026-27. May I request him to please come here and sit on the stage? Mr. Vic. Yeah. Shri Nitishwar Kumar ji, Additional Secretary and Writer and Poet, Department of Ministry of Women and Child and Development. He will join very shortly with us. So let us start. Setting karo. गिरेगा तो नहीं है. आपसे अनुरोध है कि कृपया बैठ जाएं आप लोग. कागज देने. बैठ के सुनेंगे तब भी कान तक आवाज पहुंच जाती है, उसके लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है. पीछे नहीं है. धन्यवाद. सर, मिस्टर प्रेसिडेंट सर से अनुरोध है कि अगर आप परमिशन दें तो हम कंक्लूडिंग डायलॉग का आज क्या क्या है वो प्लान ऑफ एक्शंस अगर आप कहें तो हम 2 मिनट के लिए आपको आपके समक्ष में रखना चाहते हैं. देन अकॉर्डिंगली वी कैन कैरी फॉरवर्ड. सर, आप ही हमारे सर प्रेसिडेंट हैं. सर, हम लोग सर एक प्रेसिडेंट होता है कोई भी लिटरेचर फेस्टिवल का कि अगर हम कंक्लूडिंग डायलॉग के लिए प्रेसिडेंट से परमिशंस लेते हैं देन अकॉर्डिंगली वी प्लेस एवरीथिंग. व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द टुडे फॉर द होल डे. सर, 5 पहुंच गया था तुम्हारे कहने पे. सर, थैंक यू सर. सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा आलिया जी से कि सभी लोगों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें. पुष्पगुच्छ. नहीं, मेरे पर नजर रखे सब. सोचो. अच्छा. You're used to that. Yeah. Trying to see what the program is. सर को ऐसे. Sir. Thank you. Welcome, sir. Welcome. Thank you. हमारा नालंदा में सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बड़ी खूबसूरत बना है. थैंक यू सर. श्री नीतीश्वर कुमार जी को हम लोगों ने सुन रखा है. He is the 96th batch IAS officer or additional secretary, but the important thing, he is a good writer and poet also. We have also listened him a lot by today and we have also learned several times in the last 1 year also. मैं उनके बाद में अनुरोध करूंगा मैडम आलिया जी से कि प्रोफेसर नीलोफर खान जी का. ये रखी दो वापस. सर को 2 बार मत दो, हम लोग के पास में मेमेंटो की कमी है. थैंक यू नीलोफर जी. मैडम आलिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि विक जेफनी को भी बुके से. I hope you understand a little bit Hindi also because you are staying here for the last 20 years in India also. Australian called Vic Gaffney. इसमें. Thank you आलिया जी. वीडियो प्रेजेंटेशन की तैयारी करके रखें आप प्लीज. He looks as if he's from outer space. सर, थैंक यू सर. आज दिन भर में टोटल 5 सेशन हुआ. टोटल 21 स्पीकर्स थे आज सर. उसमें से 15 स्पीकर्स सर जम्मू कश्मीर के थे, बाद बाकी सब अलग अलग जगहों के. दे वर एक्सपर्ट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड सर. हम लोगों ने टूरिज्म, कल्चर, AI पे मोस्टली फोकस होके वी हैड डिस्कस टुडे. एंड Professor Vic Jeffney, he has also written so many things about what was the outcome of today's dialogue. ये हम एक्चुअल में डायलॉग व्हेन वी फाइनलाइज इट वी पब्लिश बिफोर द नेक्स्ट डायलॉग और अल्टीमेटली वी प्लेस इट बिफोर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर कंसर्न एंड देयर नॉलेज एंड देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नालंदा लीट फेस्ट. सर,
तो उसके पहले में मैं आज दिन भर का जो एक खाका रहा है एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि दिन भर में आज का कार्यक्रम का क्या क्या रूपरेखा और क्या क्या चीजों पे हुआ है। आजमी जी प्लीज अगर तैयार है तो स्टार्ट करें। या स्टार्ट।
So, for example, from Tibet, from China, and so on. And we're looking to have all these translated in due course. And Nalanda Literature Festival will want to provide access to all people, for all research purposes, all this translation and all this knowledge. That's very exciting. I'm looking forward to that. We're seeking to bridge between literature with art, modern science, medicine, and environment. Dr. Shashi Tharoor spoke very eloquently about bridging those gaps. So I'm not going to try and steal his thunder on that one. He spoke very beautifully, and hats off to him. We're looking to establish a permanent centre, established in Nalanda as a hub for the literary and social research. So that's one of our main objectives. We're looking to promote archival and translation initiatives. I touched on that earlier, seeking to translate the old manuscripts. With the help of AI, by the way, it'll save literally thousands or tens of thousands of hours to employ the use of AI for such a purpose. And of course, to the national and global literary exchange, not only are we covering Nalanda literature festivals and these dialogues, our plan is all over the country, but we will also take this overseas to bridge the gap, not only amongst the diaspora, those Indians who live abroad, like in South Africa or in other countries, even in Australia, we have a huge diaspora of Indians. So bridging that gap and encouraging the greater community around the world to appreciate the depth of culture in this country. How are we doing for the slides? Another X second hold, Kuro? We're on. So let's go back to page 1. Oh, we're on page 1. Okay. So the session outcomes, we're basically now going to launch into, session by session, a brief summary of what took place today. So in the first session, gee, I wish I had my specs here today. Okay. Oh, I see. Okay. Yes. आवाज नहीं आ रही, बड़ी लंबा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हेलो, देखिए कितना आवाज तेज आ रही है। टाइम। Yeah. Okay. The prompts that I'm relying on, which are the screens, I have to look this way. Okay. So, in terms of AI, when we look at session 1, we covered the specific points of how we employ AI, how do we utilize the knowledge and the wisdom of the past very nicely by utilizing AI and allowing our students to prosper from this. Now, interestingly, from the angle of the teacher, if much of the learning is shifted across to AI, the research, this will give the teachers much more contact time to develop the soft skills required. So, for example, honesty, propriety, and so on, the human value element in education. And at the moment, our education system is not so highly focused on the human element. So the use of AI intelligently will help us to do that. So this is a big boon for the education industry. AI also allows for the marginalized to access information that they could never do before. And not only that, project their message across using social media and so on, so that their voices can be heard in the community. So it's very important that we look at how we capacity build those people who come from the marginalized communities, and the clever use of AI, the storage of information, making that accessible to the marginalized is extremely important. Then,
Of course, the question of accessibility needs to be addressed on a fast-track basis. So next slide, please. Okay. The session outcomes for session number 2 included the linking of Nalanda and its relationship with Srinagar. And so that linkage is very, very solidly documented. And from around 400 AD onwards, Nalanda University was up and running, but scholars were travelling up and down from Nalanda up to Kashmir, and in reverse. They would engage in debates and so on philosophy. And so the whole development of the understanding of Buddhism swept right across and was focused in Nalanda. Nalanda was a very important part of that whole growth. But we should not forget that it started in Srinagar first. Srinagar was already up and running with monasteries and so on, some 300 years before the Common Era. So there's a gap of some 600-700 years where Srinagar was, if you like, the seat, in many ways, the seat of what we call Buddhism today. And so that has transformed, and that cross-flow between Nalanda and Srinagar is a very fascinating one for those that want to dive into the history. Kashmiri Suryat was also covered very, very eloquently, and also the meaning of zero, or shall we say shunya, and its impact philosophically. That was a very lovely discourse delivered as part of that. And then we have the importance of democracy. We can't deny that, even in today's context. We look back at Nalanda all those years ago. This was a value, a major value, that was honoured in that time. Okay, next please. Okay, the session outcomes for session number 3. Basically, let's put it in a nutshell. Artistry is the essence of life. AI is not going to replace the human touch and the artistry that we have. In fact, it is AI that is created through the wisdom and the artistry and the knowledge of humans. And so AI is only actually now projecting that which we've already discovered, recovered, and invented. In terms of the connect with the youth, it was suggested that poetry is especially romantic poetry is yet another possibility of connecting with the youth to make sure that they can understand the sentiment and the depth of feelings in our poetry, whether it's ancient poetry or modern poetry. Next. And finally, session 4 outcome. I don't really need to repeat myself on the wisdom that was shared by Dr. Shashi Tharoor. So I'm not going to take up everyone's time on that, except to say hats off to him. He's done a brilliant job with his presentation. And I think the final point is that all Kashmiris need to pull together and share a common resolve so that harmony, peace, prosperity, and an excellent future can be developed. And tourism will be one of those keys to do so. So we need to dig in and open up our hearts to the outside world, encourage people to come in and share the beauty of Kashmir. The executive. Thank you so much for paying attention to my speech. Shukriya bahut and namaskar. Like you succeed better than I do, I think. I just kept thinking, no. Perhaps it might have made nights more difficult, so let's see if I can sleep on slide. Vice Chancellor of the
Thank you very much. In fact, pleasure to be here. On the dais, Padma Vibhushan, Dr. Karan Singh ji, one of our first alumnus, and of course, has been our Chancellor of the university. He has also been the Chancellor of Banaras Hindu University for 15 years, has a long history of a statesman, even as a writer, and of course, University of Kashmir has always remembered him as where we have our buildings today is the land donated by Honorable, Padma Vibhushan Dr. Karan Singh ji. Dr. Shashi Tharoor, writer and Member Parliament, needs no introduction. Shri Niteshwar Kumar, writer and civil servant. Alia ji, festival chairperson. Mr. Ganga Kumar, festival director. Dr. K. Mahesh, Secretary Art and Culture, Government of India. Other dignitaries of the dais, my dear own faculty, my students who have been here for a long time now, since morning, and I'm sure they must be tired. So I'll try to be very, brief. In fact, very happy to be here at this valedictory function of Nalanda Dialogue, Srinagar Nalanda Dialogue, where the University of Kashmir has been one of the institutional partners. In fact, this important gathering brings together scholars, intellectuals, administrators, and thought leaders from diverse backgrounds to deliberate upon issues of governance, tourism, and literature through the lens of India's rich civilization, heritage, and contemporary aspirations. We have been listening to it since morning. The significance of this dialogue lies not merely in the exchange of ideas, but in the coming together of two of the most distinguished traditions of learning and intellectual inquiry in the history of India, Nalanda and Kashmir. Very recently, the University of Kashmir hosted a Vichar Goshti on Viksit Bharat and Jammu and Kashmir, relevance of Malviya's vision, thereby maintaining its role in promotion of indigenous knowledge, cultural diversity, and social transformation. When we speak of Nalanda, we recall one of the greatest centers of learning in the ancient world, a university that attracted scholars from Asia and became synonymous with intellectual excellence, philosophical inquiry, and the pursuit of knowledge without boundaries. Nalanda symbolized openness, dialogue, and the universal quest for wisdom. Kashmir, too, occupies a unique and distinguished place in the intellectual history of our civilization. For centuries, this region served as a vibrant center of scholarship, philosophy, literature, spirituality, and artistic creativity. Its contributions extended far beyond its geographical boundaries and enriched intellectual traditions across the Indian subcontinent and beyond. Indeed, history records that the Fourth Buddhist Council, convened under the patronage of Emperor Kanishka, was held in Kashmir. The deliberations that emerged from this historic gathering contributed significantly to the development and dissemination of Buddhist thought across Asia. In many ways, both Kashmir and Nalanda became important centers in a wider network of knowledge, exchange that connected scholars, ideas, and civilizations through dialogue and learning. Ladies and gentlemen, the intellectual legacy of Kashmir is reflected in the works of great philosophers, historians, poets, and spiritual thinkers who shaped some of the most profound traditions of Indian thought
the philosophical brilliance of Abhinava Gupta, the historical scholarship of Kalhana, the spiritual wisdom of Lal Ded, and the humanistic teaching of Sheikhul Alam continue to inspire scholars across disciplines and generations. These traditions remind us that knowledge flourishes where there is openness to ideas, respect for diversity, and a commitment to dialogue. These are the very values that ancient Nalanda represented, which this dialogue seeks to reaffirm in the contemporary world. At a time when societies across the globe are grappling with complex challenges relating to governance, sustainability, cultural preservation, technological transformation, and social harmony, there is much to learn from traditions that placed wisdom, dialogue, and human values at the center of public life. The theme of this dialogue, governance, tourism, and literature, is therefore both timely and very relevant. Governance today is no longer viewed merely as administration. It encompasses participation, accountability, transparency, inclusiveness, and responsiveness to the needs of society. Institutions of higher learning have a crucial and critical role to play in promoting knowledge-based governance through research, policy engagement, and informed public discourse. Universities must continue to serve as spaces where ideas are debated, innovations are nurtured, and future leaders are prepared to address societal challenges with wisdom and responsibility. Tourism represents another important dimension of contemporary development. Jammu and Kashmir is blessed with extraordinary natural beauty, cultural diversity, historical heritage, and artistic traditions. Tourism has the potential not only to contribute to economic growth and employment generation, but also to serve as a powerful instrument of cultural understanding, social harmony, and peace building. The challenge before us is to ensure that tourism development remains sustainable, responsible, and inclusive, while preserving the heritage and ecological wealth that makes this region unique. Literature, meanwhile, remains one of humanity's most enduring